राउंड 5 ऑफ द प्राग मास्टर्स। आज है सैटरडे, सब लोग घर पे चिल कर रहे हैं, कल संडे है, इसका मतलब है कि आज आप लोग रात तक हमारे साथ बैठेंगे। हमारे सामने आज पेयरिंग्स काफी इंटरेस्टिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव प्रग अगेंस्ट विदित। ये क्रेजी मैच है बिकॉज ऑफ ऑब्वियस रीजंस, दो इंडियंस खेल रहे हैं एंड इवन मोर इंपॉर्टेंटली कि मतलब ये मैच कैंडिडेट से दोबारा होना है एंड ये राइवलरी बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है और इंडियन टॉप प्लेयर्स की लिस्ट में ये सबसे बड़ी राइवलरी आई वुड से हैज बीन देयर। एंड ये आज का गेम बहुत इंपॉर्टेंट। सेकंड गेम जो हमारा है वो है गुकेश अगेंस्ट नवारा एंड देन वी आल्सो हैव वैशाली अगेंस्ट एल्विन लैमी। हम चारों गेम देखेंगे बट फिलहाल के लिए स्टार गेम क्लियरली इट्स प्रग अगेंस्ट वीडी। प्रग भाई स्टार्टिंग से ही वीडी को पीने में कंपटीशन देने की कोशिश करते हुए, वीडी थोड़ा सा चक्कर करते हुए कि हा मेरे से ज्यादा कोई नहीं पीता पानी। देखते हैं क्या होगा चैट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट चैट अपडेट, खास देते बेस्ट गेम पता नहीं किसको मिला। कैन वी हैव द बोर्ड एंड यू नो माय फेस एंड द कैमरा ऑफ प्रग वर्सेस वीडी नाउ। Chat, Erigasi Arjun today defeated Anish Giri. And with that, he is the new India number 2. वन नहीं बन पाया बेचारा, विशी से पॉइंट कुछ 0.6 पीछे है, but Erigasi Arjun defeated Anish Giri in a crushing way today. मतलब क्या फाइनल पोजीशन है तुम खुद देखो। एंड द स्टार मूव ऑफ दिस वेरिएशन वाज जहां पे उन्होंने एक टैक्टिक खेली जब तक गेम स्टार्ट होती है, रुक C1 चेक, क्वीन चेक, रुक C1 और रुक G7 पे किंग F8 वाज द स्टार मूव एंड उसके बाद अनीश गिरी लॉस्ट। विद दैट we already have 2 players above the rating of 2750 and VD का मेडिटेशन स्टार्ट। प्रग भाई फुल फोकस से घूरते हुए, इस बार वो प्रग चल भी नहीं रहे भाई। प्रग इज नॉट इवन मूविंग, इज लाइक भाई पहले तू मेडिटेट कर लो उसके बाद ही मैं चलूंगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। एंड चैट, तुम में से कितने लोगों को पता है कि कल फिडे ने क्या पोस्ट किया? निरंजन भाई, आर यू अवेयर ऑफ इट? भाई निरंजन भाई मतलब कमाल हो गया यार। मतलब फिडे ने कहा कि अभी हमारा कैंडिडेट थोड़ा कंफर्म नहीं है कि भाई कनाडा में होना है कि नहीं, और अगर होगा भी तो अभी कुछ पता नहीं है क्योंकि वीजा ही नहीं मिल रहे लोगों को। तो वीजा की कमी के कारण अभी कैंडिडेट्स की डेट्स, लोकेशन कुछ भी कंफर्म नहीं है। और अगर एक हफ्ते में वीजा नहीं मिले तो टूर्नामेंट स्पेन शिफ्ट हो सकता है। सो ये बहुत बहुत इंटरेस्टिंग, बिकॉज बाय चांस अगर स्पेन में शिफ्ट होता है तो रात का 1 बजे का समय सीधा शाम का 6 बजे का समय हो जाएगा और हम लोग भाई फिर रात को सो पाएंगे निरंजन भाई। मतलब अलग अलग मतलब हम लोग आराम से सो पाएंगे, चैन की नींद कर पाएंगे, पूरी रात नहीं जागना पड़ेगा। सो निरंजन भाई, अगर आपको चॉइस दिया गया, आप शिफ्ट करेंगे लोकेशन और टाइम? तो वही उम्मीद है। ऑफ कोर्स वी डोंट वांट देयर टू बी प्रॉब्लम्स। सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि टूर्नामेंट हो, बट अगर चॉइस हो, विद ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, वी वुड लव टू हैव इट इन स्पेन, ताकि हम लोग चैन की नींद कर पाए और सारे इंडियंस देख पाए टूर्नामेंट। यार 6 बजे क्या परफेक्ट टाइमिंग है, 6 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। आहा, क्या हाइप बनेगी यार, बाप रे, बहुत सही। चैट, क्या हालचाल है? राघव जी, अमृनल, कल्चर ऑफ हिमाचल, अनुज, सुखवीर, अमेया, डैश, स्टडी हब, श्रिंजॉय, गॉड बेलुआ, कैसे हैं सबके सब? बाय द वे, वी हैव द इंग्लिश शॉपिंग ऑफ द बोर्ड एंड विदित खेलते हैं E5। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग रंजन भाई। मे बी आई एम रॉन्ग ऑन दिस, बट C4 और E5 दोनों चॉइसेस आर नॉट वेरी कॉमन यार। मतलब इतना नहीं खेलते ये लोग। तो कुछ ना कुछ तो प्रेप करके आए हैं प्रग भाई यहाँ पे, या फिर कैंडिडेट्स की प्रेप छुपाने के लिए C4 खेल रहे हैं। सो C4 E5 नाइट C3 एक तरीके से उल्टा सिसिलियन है। मतलब इट्स वेरी सिमिलर टू E4 C5 एंड देन ब्लैक नाइट C6 खेलता है मान लो नाइट F3 पे। दिस इज वेरी वेरी सिमिलर टू व्हाट वी हैव। इट्स एग्जैक्टली ऑपोजिट अगर ब्लैक नाइट F6 खेलता है। गुकेश नॉवल्टी, भाई ऐसी कौन सी नॉवल्टी आ गई भाई तीसरे मूव पे? ओ, गुकेश ने भी 1C4 खेला भाई। ये क्या निरंजन भाई, प्लानिंग चल रही है क्या? कैन वी हैव द बोर्ड एंड द कैमरा नाउ? भाई ये क्या चल रहा है यार? दोनों C4 खेले, गुकेश भी और प्रग भी। कोई 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 साजिश लग रही है मुझे, कोई प्लानिंग लग रही है भाई। अल्फाबेट C फॉर इंग्लिश ओपनिंग, C फॉर कनाडा। अच्छा, वो कल वो जो चल रहा था ना चैट में, वो सी गैंग समथिंग समथिंग उसकी वजह से शायद खेल रहे होंगे। आई डोंट नो व्हाट इट वाज, बट या एको का ध्यान रखना भाई। चैट, वी आर ऑल सेट नाउ। चैट, बहुत इंपॉर्टेंट,
किसने फिडे का ट्वीट कल का देखा है? मैं दोबारा बता रहा हूं भाई, ये स्ट्रीम में 5 बार मैं बताऊंगा कम से कम। किसने फिडे का ट्वीट देखा कल का भाई? क्या हुआ है अपडेट? एंड एग्जैक्टली ऑपोजिट सिचुएशन, नाइट F3, यहाँ पे E4 खेल सकते हैं, नाइट C6 खेल सकते हैं, देखते हैं D5 खेल सकते हैं, क्या क्या खेलेंगे? सॉरी, व्हाइट टू प्ले, माय बैड, हाँ ब्लैक टू प्ले, सॉरी माय बैड, क्या कर रहा हूं मैं, हेलुसिनेट कर रहा हूं मैं। Anish Giri is one of the reserves if players aren't able to make it. By the way, there will be no reserves. Clearly, I think that's not the strategy here. होगा क्या basically कि they will try to either change the location or something else. कुछ ना कुछ करके they will make it work. And अगर एक हफ्ते के अंदर, ये कनाडा के ऑर्गेनाइजर ने कहा है चैट कि there are some problems in the players getting the visas. And अगर ऐसा होता है और एक हफ्ते में सबके वीजा नहीं आते, the tournament might शिफ्ट टू स्पेन। एंड वो इंडियन ऑडियंस के लिए ड्रीम के बराबर है, बिकॉज 2:30 स्टार्ट होना स्पेन में, मतलब यहाँ का 6 बजे हुआ। ओहो हो भाई, क्या फील आएगी। हमारा पूरा कैंडिडेट्स का प्लान चेंज हो गया। निरंजन भाई, वो डॉक उठा के फेंक दूं क्या मैं, जिसमें मैंने हफ्ता लगाया भाई? मेरे हफ्ते की मेहनत पानी में, लेकिन चलेगी भाई, चलेगी चलेगी भाई, चलेगी। टेक्सास के साइड बॉर्डर क्रॉस करना पड़ेगा। अच्छा, मैंने कहा ऑर्डर क्या कर रहे हो भाई, साइड ऑर्डर? मेरे को गार्लिक ब्रेड दिमाग में आई भाई। स्पेन में होगा भाई, आई वुड लव इट कि भाई स्पेन में हो, बट ऑफ कोर्स टूर्नामेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि भाई प्लेयर्स को कोई अनकंफर्टेबल चीज हो, बिकॉज स्पेन का वीजा मिलना बड़ा आसान है यार, मतलब यू विल गेट इट इन विद इन डेज। आज अप्लाई अगर करोगे, यू विल गेट इन 1 वीक। सो आई थिंक कि, एंड दैट्स विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट। सो आई थिंक स्पेन का विल बी इजी। एंड यूएस के प्लेयर्स के लिए दे ऑलरेडी डोंट रिक्वायर अ वीजा टू ट्रैवल टू स्पेन, एंड कुछ प्लेयर तो यूरोप में ऑलरेडी है। सो आई थिंक दैट विल बी मच इजियर। बाकी किस्मत के ऊपर है सारा खेल। Your prediction, भाई पोल में Pragg 40, oh look at this, 39% Pragg wins, 39% Vidit wins और 20% draw। भाई डॉट इक्वल चल रहा है चैट में। चैट इज कंफ्यूज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस टूर्नामेंट कि कौन जीतेगा आज। इट्स इजी टू क्रॉस द यू भाई यार। भाई चेसकॉम यूएसए कंपनी है भाई, उनको तो रोस्ट नहीं करो यार उनकी चैट में, कुछ तो मर्यादा रखें। So no candidates tub stream. I don't think so यार। स्पेन में I think स्पेन में it's not looked स्पेन में अलाउड नहीं होगा भाई। मकसूद ने C4 खेला भाई। आज क्या चक्कर, सारी प्लानिंग करके आया क्या? सब C4 खेल रहे हैं आज, क्या चक्कर है यार? कुछ तो चक्कर है भाई, दाल में कुछ तो काला है दया। By the way, G3 played by Pragg now. We'll see what happens. I think D5 is the logical move here. Bishop B4 भी बहुत बार खेला जाता है, very very typical to get some imbalance here. Then white sometimes plays knight D5 and so on. We'll see क्या होगा। आज कौन है इंडिया नंबर 1? चैट, अर्जुन ने अनीश गिरी को हरा दिया है आज सुबह ब्लैक पीसेस से। क्रशिंग विक्ट्री फॉर पॉन डबल एक्सक्लेमेशन मार्क देखो। एंड उसके साथ ही हैज क्रॉस 2750, बट ही इज इंडिया नंबर 2। दो प्लेयर्स है, दो प्लेयर्स इंडिया के 2 से नहीं 3 प्लेयर है ऑलरेडी 2750 प्लस। अगेन क्रेजी क्रेजी क्रेजी। स्पेन टाइमिंग्स के हिसाब से अच्छी लोकेशन है। आई एब्सोल्युटली अग्री। अगर मेरे ऊपर होता, ऑल थिंग्स बीइंग इक्वल, आई वुड लव कि वो स्पेन में टूर्नामेंट हो, बट ऐसा ना हो कि कोई प्रॉब्लम हो, बिकॉज कई चीजें इन्वेस्ट करी होंगी फिडे ने। वी डोंट वांट देन टूर्नामेंट टू लूज मनी और व्हाटएवर, बट या अगर वीजा ही नहीं मिल रहा है प्लेयर्स को तो करेंगे क्या? Gukesh wins +4, absolutely भाई। कोई भी आज जीतेगा तो they are going to go to world number top 10, especially if the top 3 win. Let's see. मुंबई में कर दो भाई। नहीं, मुंबई में तो नहीं होगा। आई थिंक या तो मैक्स स्पेन है, आई थिंक ऑलरेडी फिडे बोल चुकी है, या तो स्पेन में होगा या फिर कनाडा में होगा। चैट स्ट्रीम लाइक करते चलो। बाय द वे चैट अगेन 369 लाइक्स, जल्दी से भाई लाइक करते चलो भाई। वीडी भाई थोड़ा ऑरेंज जूस पिए आज। एंड नाउ ही इज अगेन थिंकिंग प्रग भाई जल्दी से उठते हुए बोर्ड से। एंड अगेन टाइम प्रेशर चैट, हमने देखा कैसे इंडियन प्लेयर्स सफर कर रहे हैं उससे, प्रग खुद। सो वी डोंट वांट एनी इंडियन प्लेयर टू फॉल अंडर टाइम प्रेशर। Oh, by the way, Vaishali already has a decent position out of the opening. Going to the game of Gukesh against Navara. उन्होंने भी C4 खेला है, knight F6, knight C3, E5, E3, knight C6 and queen B3. Wow. So Nesbhai, I am not I'm not one C4 player usually. मैं नहीं खेलता हूँ। Queen B3 का क्या आइडिया है भाई? What is this move? डेलीफाई को रोकने का भाई। That's the only logic बस क्या?
हाँ भाई, D5 रोकने के लिए। और अपोनेंट को थोड़ा सोच में डालने के लिए। Wow. So क्या ही opening prep, queen to b3 usually looks like a ridiculous move. ये queen can be harassed later with pawn moves, with knight moves, with bishop moves, but सिर्फ d5 रोकने के लिए खेला है. And now black plays b6. We'll see how it turns out. Going to the game, the star game, Vidit versus Pragg. We have d5 on the board from Vidit. Plays in the center, pawn takes, knight takes, and now bishop g2. एक हल्की सी दिशा उस घोड़े की तरफ. यहाँ पे आई थिंक नाइट टू b6 इज वन ऑफ द मूव्स, मोस्ट लॉजिकल मूव्स. एंड या बिशप p6 आल्सो लुक्स वेरी लॉजिकल. लेट्स सी क्या करते हैं. बट आई थिंक जहां तक मुझे याद है मैंने थ्योरी लाइन से देखी थी एक विद द ग्रैंड मास्टर, एंड नाइट b6 इज द लाइन आई थिंक. चेसकॉम का रिपोर्ट. ये क्या है भाई, क्या बात कर रहे हो रियली? भाई ऐसा है क्या निरंजन भाई? कैन यू चेक दैट कमेंट एंड लेट पीपल नो इफ दैट इज द केस. ऐसा ना हो कि वो स्पंदन देव का कमेंट देख लो भाई, पता लगे कोई कंट्रोवर्सी हो जाए. भाई प्लीज वेरीफाई दैट इंफॉर्मेशन. स्पंदन का कमेंट पढ़ो ना चैट में. जो आर्टिकल है उसमें उन्होंने मेंशन किया है ना, कहीं गलत नाम तो नहीं मेंशन किया उसमें आर्टिकल में जो आपने शेयर किया था भाई स्लैक पे. उसमें मेंशन्ड है कि भाई ये टेररिस्ट के कुछ हुआ था तो समथिंग समथिंग यू नो, वो चेक कर लो. तो इंडिया कनाडा रिलेशन थोड़े खराब है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए प्लीज चेक हिज कमेंट एंड प्लीज वेरीफाई इट ऑन स्लैक की सब ठीक है ना उस आर्टिकल में. By the way, bishop g2 played, and now the bishop comes out to c5. So, you know, Vidit is focusing all his time on piece development. That's usually a good strategy. एक भाई प्रग या वीडी कौन जीतना चाहिए आपके हिसाब से? नो बायस यार. पता है देखो, आई वुड लव कि एक प्लेयर ऐसा गेम जीते कि उसका कॉन्फिडेंस हाई हो. अब वो कौन है दैट इज फ्लेक्सिबल, ठीक है. सो व्हाट आई डोंट वांट इज कि दोनों प्लेयर टाइम प्रेशर में आए, फिर एक बंदा कोई ब्लंडर कर दे, दूसरा तुक्के से जीत जाए. आई वांट अ हाई क्वालिटी गेम बिकॉज एट द एंड दोनों इंडियंस हैं एंड जीते कोई भी. व्हाट आई वांट हियर इज अ हाई क्वालिटी गेम. मतलब फाइट होनी चाहिए नेक टू नेक. ऐसा मजा आना चाहिए इस गेम में. शार्प गेम, एक्साइटिंग गेम, दैट्स व्हाट आई वांट. रिजल्ट में दोनों में हम लोग खुश हैं. Prediction today, Vidit win, Gukesh win. Let's see Raghav if you're correct. Just draw man. नहीं भाई, draw नहीं होगा यहाँ पे, बिल्कुल भी नहीं होगा. जो आपने स्लैक में मुझे आर्टिकल भेजा, जो लिखा गया चेस्कॉम के द्वारा, उसमें उन्होंने लिखा है कि इंडिया कनाडा रिलेशन थोड़े खराब हो गए बिकॉज ऑफ समथिंग समथिंग. तो वो समथिंग समथिंग का नाम शायद गलत तो नहीं है, कोई चैट में कोई कह रहा है शायद गलत नाम है, तो चेक कर लो भाई, पता लगे. पता लगे इंडियन गवर्नमेंट देख ले और भाई कुछ कांड हो जाए. सारे द बोर्ड अपडेटेड बाय कंप्यूटर सिस्टम और डन, इट्स डन ऑटोमेटिकली भाई. लाइफ में सब कुछ ऑटोमेटिक है हमारे. यो एस एस भाई, यो मिस्टर प्लेस, हाउ आर यू प्लेइंग टुडे? शो गुकी गेम, विल गो टू गुकी गेम एज वेल. पर व्हाइट जीतेगा भाई ऐसा जरूरी नहीं है. आई थिंक यहाँ पे कोई व्हाइट ब्लैक इतना फर्क नहीं पड़ता है, बट एट द एंड क्या है कि प्रेशर इतना है कि भाई कोई भी हार सकता है, कोई भी जीत सकता है. भाई मॉड बना दो, अपना लोगो देखो तुम भाई, किस मुंह से तुम आए हो भाई मॉड मांगने के लिए अपने लोगों के साथ. Hans even said if you lose 2 games in a draw, take the draw. I kind of agree with that, yeah. In fact, even if you lose one, next game में, unless you are Magnus Carlsen, you should not try to force and get a win. Just take the draw. I agree with that statement in general. Can white pawn d3? Of course you can play pawn d3, yeah. And I think if you mean in the Vidit Pragg game, he has played, by the way, he has played the pawn to d3. So opens up the bishop, prevents e4 ideas. And now, of course, next you will have castles. Yeah, दोनों castle करने वाले हैं बहुत जल्दी. Let's see how it happens. Show Richard game once. Is there something special in the Richard game? Let me have a look. कुछ है क्या ऐसा? Richard is playing Maghsoodloo. Richard हर जगह c4 है. Loves these weird openings. He's always known for this. So I wouldn't be too shocked. ये कुछ भी खेल सकते हैं. ये bishop f6 भी खेल देंगे यहाँ पे without any doubt. So I'm not really shocked by that. He plays these weird openings. He's known for it, man. He's known for it. So going to the game of Pragg again back. Chad, by the way, मुझे तुमसे एक सवाल पूछना है, ठीक है? मैंने देखा कि अंबानी वालों ने सारे बॉलीवुड वालों को बुलाया. मैंने कहा मतलब शादी हो रही होगी अंबानी के बेटे की. बाद में गूगल किया तो देखा कि असली शादी तो जुलाई में है. This is pre-wedding festivities. Imagine having so much money
कि पूरा बॉलीवुड, पूरा क्रिकेट तुमने बुला लिया फॉर प्री वेडिंग फेस्टिविटीज। भाई साहब, मतलब दिस इज नेक्स्ट लेवल ऑफ मनी। अरे अरे दीपेश भाई, पहले ही स्टार्ट हो गए, अभी चैलेंज हुआ नहीं है। यो डीजे पटेल भाई, आज कौन सा गाना बजाओगे चैट में भाई? बढ़िया हो मैं, आप कैसे हो भाई? लाइव 169 हो गए भाई, 169 यार, 369 लाइक्स चाहिए हमें। बाय द वे, वीडी कैसल्स, एंड नाउ वील सी व्हाट हैपेंस। भाई ये क्या चल रहा है भाई? एक कुकड़ू को कौन लिख रहा है भाई चैट में? आई एम फ्रॉम जामनगर। अरे भाई तो जैम करो ना फिर जामनगर में भाई। मेरे को भी आज ही पता प्री वेडिंग है, और रिहाना नाच रही है भाई। सो रिहाना गॉट पेड लाइक क्या 74 करोड़ फॉर डांसिंग एट अ प्री वेडिंग फेस्टिविटी। भाई क्या ही क्रेजी है। और लिटरली आई डोंट निजमा इफ यू सॉ दैट, लाइक सारे बॉलीवुड एक्टर्स को एक ही बस में चढ़ाया जा रहा था, जैसे मतलब हम लोग जाते हैं ना फील्ड ट्रिप पे स्कूल में। वैसे ही आई वाज लाइक ओनली अंबानी कैन पुल दिस ऑफ, नोबडी इन द वर्ल्ड कैन। मॉड बना दो, मॉड बना दो। ये आगे हमारे रैपर भाई, ये देखो भाई आयुष्मान भाई को। लोगो अच्छा है बट अभी बहुत टाइम लगेगा भाई, रेगुलर होना पड़ेगा तुम्हें बहुत ज्यादा। रिहाना पंजाब भी जाएगी। पंजाब में क्या हो रहा है भाई? मतलब ताजमहल देखने जाएगी। बाय द वे, बिशप D2 played by Pragg, so defends the knight. If you now take, of course I can take with the bishop now, put pressure on E5, and as of now it's a very very solid position for white. Black के पास space ज्यादा है, so usually it's okay. But what white wants is धीरे धीरे, rook C1, castles, इस pawn पे pressure, A3 B4 कल को, and just use this bishop long term. आपको भी अंबानी ने बुलाया होगा ना, आप तो करण जौहर हो यार। बुलाया था भाई, बट हमारा स्ट्रीम इंपॉर्टेंट है। हम निरंजन भाई का साथ नहीं छोड़ सकते यार। अंबानी की वेडिंग बाद में, पहले हमारा स्ट्रीम। मैंने बहुत बोला यार, प्री वेडिंग फेस्टिविटी शिफ्ट कर लो यार, प्राग मास्टर्स के बाद कर लो यार। कहते नहीं यार, रिहाना से डेट बुक कर ली है, तो फिर वो शिफ्ट नहीं कर पाए चैट अनफॉर्चुनेटली। सो आई रियली अपोलोजाइज, वरना मैं फोटो तो भेजता वहां से, ब्लॉक करता भाई फिर। हे हाउ आर यू तपस्नु चेस भाई? शादी के दिन पब्लिक हॉलिडे डिक्लेयर हो जाए भाई। देख लो, तुम हो भी सकता है। आपको समोसे के लिए कल डीएम करा था, पर आपने देखा ही नहीं। कहाँ डीएम किया भाई? कल मैंने मैसेज चेक करे थे इंस्टाग्राम पे, सो मेरे को आया नहीं। बाय द वे, कम ऑन वीडी भाई, टेकिंग टू मच टाइम अगेन। मैं थक चुका बोल बोल के, समय कम लेना है हमें। Okay, by the way, one look किसी के कुछ हुआ है क्या? So Gukesh, after queen b3 b6 we have knight to f3 on the board. Maybe black can play e4 and kick the knight away, and then you will have knight g5. How do you save this? Queen e7, and usually यहाँ पे कई बार white also plays f3 in these structures to open the rook quickly. So देखेंगे क्या होगा. Maybe just d4 also possible very much. If takes, then bishop takes, and then you castle quickly. The queen will come back at some point, and then you might play b3, bishop b2, put it on the long diagonal. Seems decent for white here. David Navara especially, very good at opening theory. I don't know chat कितने लोगों को पता है, एक ओपनिंग में उन्होंने किंग मार्च करी थी, यहां से उठा के मिडिल गेम में G8 H8 पहुंच गए थे किंग से. So he is known for being very good at opening theory. तो उनको कंफ्यूज करना इतना आसान काम तो नहीं होगा. So going to the game of Vidit again against Pragg. Let's see. कल टूर्नामेंट खेला रहा, बढ़िया यार, नाइस नाइस. हे करण जौहर, हाउ? आई एम फाइन मैन, आई एम लॉन्चिंग माय न्यू मूवी, वुड यू लाइक टू बी एन एक्टर मानिक भाई? अंबानी वेडिंग स्ट्रीम पे चेस प्लस समोसा गिव अवे, एब्सोल्युटली. यो मिस्टर कनुंगो भाई, क्या हाल चाल? अंबानी कांट अफोर्ड साहिल टिको. ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है यार, दिल हमारा बड़ा है, हम भी एडजस्ट कर लेते हैं यार. ऐसा नहीं है, उनकी उनकी खुशी के लिए हम जाएंगे नहीं क्या? मगर वी कांट सैक्रिफाइस द स्ट्रीम चैट, वी कांट डू दिस. हमारा प्लेयर्स सपोर्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई. वैसे भी क्या है, यहाँ पे भी 200 लोग तो आ चुके हैं चैट में, वहां पे कितने लोग होंगे? वहां पे भी इतने होंगे, 200-300 ही होने. सो क्या फर्क पड़ता है भाई? अनिल कपूर का कॉल आया था, भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एनिमल में आपको हमारा दूसरा खोया हुआ बेटा बना देंगे. मैंने कहा नहीं यार, मैं खुश हूँ भाई, लाइफ से नहीं चाहिए यार रोल. तुम एज वैज बनाने पड़ेंगे यार, मैं मीठा मीठा नहीं खा पाऊंगा 6 महीने. वी कांट डू दिस स्टफ. अब हम थोड़े 31 साल के हो गए यार, अब थोड़ा मुश्किल है ऐसा करना. हाउ टू क्रैक IIT in 2 minutes? I would
हाउ टू क्रैक आईआईटी। भाई जाओ उसकी दीवार पे पत्थर मारो भाई, क्रैक तो हो ही जाएगा भाई, वॉल 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 शॉल में कोई ना कोई। प्राइवेट जेट से आया हूँ। नाइस। बाय द वे रंजन भाई, व्हाट्स हैपेंड टू वीडी भाई, इतना क्या सोच रहा है भाई ओपनिंग में ही? ये इतनी थोड़ी तो मुझे ही पता थी। कम ऑन वीडी फास्टर। ओ ये बंदा क्या कह रहे हो भाई? रंजन भाई आप गाना गा रहे हो जो स्ट्रीम पे जा रहा है कि खाली मुझे सुनाई दे रहा है? भाई निरंजन भाई क्या क्या करके आए हो भाई आप आज? मेरे को समझ नहीं आ रहा है भाई, तो थोड़े से एक्साइटेड लग रहे हो मुझे ज्यादा भाई। निरंजन भाई आज कुछ ज्यादा ही इंजॉय करके आए हैं स्ट्रीम से पहले, मुझे लग रहा है चैट। आज में खोया हुआ बेटा तो गुंडा बनना पड़ता, आपसे ना हो पाएगा। भाई एनिमल बैकग्राउंड म्यूजिक चालू करो, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई गुंडा बनने की शक्ति मेरी भाई। भाई ये था क्या बैकग्राउंड म्यूजिक? बेकार है भाई म्यूजिक, फिर तो छोड़ो रहने दो। भाई ये ईमान गाजी क्या कर रहा है भाई स्ट्रीम में? भाई भाई, वो यूट्यूब शॉर्ट्स में बंदा है ना वो ईमान समथिंग, मेरे को लगा वो कैसे वहां पहुंच गया भाई। वाई इज ही इन द टूर्नामेंट हॉल? मैं अगर अंबानी होता तो मैग्नस को बुलाता और सारे गेम जीतता। क्या करें रंजन भाई? आप खुद बताओ ना। हाँ बोलो। बाय द वे विदित एंड प्रग ड्रू ड्यूरिंग टाटा स्टील टूर्नामेंट, उस टाइम पे वीडी के वाइट थे, इस टाइम प्रग के वाइट है। तो देखना होगा क्या चलता है इस बार। Real style is there in Jamnagar today. Karan Johar is anchoring. Absolutely, भाई. We might have that, body switch happening. रंज भाई मूड में है, आप भी सुरूर बना लो। अरे भाई आपका सुरूर बनाते बनाते तो भाई क्या क्या निकल गया भाई। चैट मुझे मॉड बना दे। भाई वो पूरा गाना गाना पड़ेगा तुम्हें, मुझको भी तो मॉड बना दे। भाई पूरा गाना गाना पड़ेगा। यो तरुण भाई क्या हाल चाल? वांट वीडी टू विन बट डोंट वांट प्रग टू लूज आल्सो। तो भाई फिर ड्रॉ कर ले क्या? एडजस्ट कर ले फिर ड्रॉ, हाँ भाई। निरंजन भाई मुझे लगा है बहुत खुश हो जाएंगे अगर ड्रॉ जल्दी हो गया तो। आज मूड में लग रहा है निरंजन भाई। कम ऑन कम ऑन, आज आई होप इतनी लंबी गेम चले कि निरंजन भाई खुद थक जाए भाई, पूरा मूड थक जाऊंगा। कम ऑन वीडी भाई, प्रग भाई, लेट्स गो। हैव अ शार्प गेम, लॉन्ग गेम। हाँ वेलकम, नमस्ते, वणकम, नमस्कार। चैट ऐसा है कि ये जो मूव है बिशप D2, ये हाँ। सिर्फ 10 बार खेला गया है अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डेटाबेसेस। लेकिन अच्छा। बिशप D2 के बदले में कैसलिंग अगर खेले होते तो बहुत सारे गेम्स हैं, 400 पे ज्यादा, 400 से भी ज्यादा गेम्स हैं। लेकिन बिशप D2 हम्म थोड़ा नया है मार्केट में, तो जब मार्केट में नया मूव आता है तब सोचना तो पड़ता है। हम्म बिल्कुल बिल्कुल, ये स्टैट अप्रूव्ड बाय बी स्टैट्स। सो लेट्स सी क्या होता है। आई थिंक यहाँ पे क्लियरली ब्लैक को चूज करना है कि वो मारेंगे कि नहीं। आई वुड से भाई मार दो भाई, खत्म करो कहानी। इसको 1 मिनट के लिए मॉड बनाकर हटा दो भाई, वो गायब हो जाएगा फिर चैट से, मैं अनमॉड नहीं कर पाऊंगा। गुकेश गेम, ओके। गुकेश गेम में कुछ ऐसा क्या चल रहा है भाई? 2-3 लोग लगातार बोल दिए भाई। बिशप B7 खेला है नवारा जी ने, और बार जी कह रहे हैं कि भाई ये उतनी अच्छी चाल नहीं। अपेरेंटली यहाँ पे D4 एंड व्हाइट इज स्लाइटली बेटर, क्योंकि ब्लैक D5 रखने की क्षमता नहीं रखता। ब्लैक बड़ा मजबूर है। आया था भाई मैं सेंटर लूंगा, लेकिन सेंटर तो भाई हमने रिमूव कर दिया उसका, और अब D5 भी आने वाला है। सो ब्लैक करे तो क्या करे? ये बिशप तो बहुत ही घटिया पीस लग रहा है। तो मुझे फीलिंग आ रही है चैट की गुकेश ने ओपनिंग में थोड़ा कंफ्यूज कर दिया नवारा जी को, और ऑलरेडी देर आर 0 गेम्स इन दिस पोजिशन। सो मुझे लग रहा है कि गुकेश ऑलरेडी थोड़ा जो उनको ओपनिंग से चाहिए था वो उनको मिल चुका है। वो है एक बढ़िया बढ़िया टेस्टी बिरयानी। सो लेट्स गो टू द गेम ऑफ प्रग अगेंस्ट वीडी अगेन। हम वीडी के सोचने का इंतजार कर रहे हैं। आई वुड होप वीडी जल्दी से चले भाई, जल्दी से चले प्लीज। प्लीज वीडी भाई जल्दी चले। आपकी हिंदी अच्छी है, शुक्रिया। शुक्रिया कहना चाहूंगा मैं आपसे मेरी हिंदी की तारीफ करने के लिए। उमदा, उमदा है मेरी हिंदी, मगर हिंदी नहीं है उमदा। पापा आपकी जेई रैंक
भाई मेरे जमाने में ना बेटा जी यही रैंक बताते नहीं थे, आइदर यू क्वालिफाई और यू डोंट क्वालिफाई, रैंक तो बताते नहीं थे भाई। जो क्वालिफाई करते थे उन्हीं की रैंक पता लगती थी। अरे समो जी अंश से करना परे का, ये क्या है गब्बर जी। चेस विद करण, भाई कॉफ भाई, समोसा विद साहिल इज द बेस्ट भाई, दैट वील हैव एज अ शो सून। भाई वीडी चल क्यों नहीं रहा है यार, यार वीडी मुझे ऐसे गुस्सा लाता है भाई, चलना यार भाई प्लीज। शुक्रिया उर्दू वर्ड है, क्या बात कर रहे हो, हिंदी नहीं है। सेंट्रल कंट्रोल में बीजे, अबे यार। भाई नो पॉलिटिक्स नो रिलीजन भाई, ओनली शतरंज। यार एक पिटिशन स्टार्ट करना चाहिए भाई स्पेन में कैंडिडेट्स करने के लिए, मैं तो कह रहा हूँ। बाय द वे निंजा भाई, दे आर प्लेइंग इन प्राग राइट नाउ, सो डू यू थिंक कि प्लेयर्स के दिमाग पे थोड़ा असर पड़ रहा है कि यार टूर्नामेंट होना का है भाई, मुझे वीजा लेना है कि नहीं लेना है एक और। हाँ। क्या कर रहा हूं मैं भाई, यार क्या होगा यार, वीजा यार वीजा अप्रूव नहीं हो रहा है मेरा यार, यार प्रग का तो हो गया, मैं क्या करूं यार, ये टू डू। छोड़ो यहाँ पे छोड़ो। एक मैं कल ही पढ़ रहा था भाई, एक आर्टिकल था, हाँ उस आर्टिकल में लिखा था कि एक्सचेंजेस के बारे में था वो, और हाँ वहां पे लिखा था कि अगर आपके पास बेस एडवांटेज हो हाँ तो आपको पीसेस को एक्सचेंज नहीं करना है। हाँ तो ब्लैक के पास बेस एडवांटेज है, हाँ। तो मैं खेलूंगा नाइट D E7। यार ये कौन खेलता है भाई, मैं एक खेलता बार भाई। हमने जो कमिटमेंट कर दी, तो हम तो सलमान खान की भी नहीं सुनते भाई, वापस नहीं जाएंगे भाई हम। नहीं निरंजन भाई, हम वापस कभी नहीं जाएंगे भाई, हम वापस जाएंगे तो किसी और डायरेक्शन में जाएंगे भाई, वापस सेम डायरेक्शन में नहीं जा सकते यार। राजा से मैं बोल के आया हूँ कि लाइफ में कुछ बड़ा करके आऊंगा भाई, अब वापस घर नहीं जा सकता मैं यार बिना कुछ कमाए शमाए। जब तक अब एक्टिंग एक्टर का रोल नहीं मिलेगा वापस नहीं जाएगा भाई ये घोड़ा, देख लो अब। लेता हूँ जूस पीने के बाद सोचता हूँ। भाई ये तो वीडी का भाई वीडी मस्त है भाई, पूरा जूस खत्म भी कर दिया यार। कैन वी हैव फुल स्क्रीन एक बार। भाई डेविड नवारा जी कह रहे यार वीडी भाई थोड़ा जूस मिलेगा क्या। नहीं यार डेविड एक ही गुड़ बचा है यार। हाँ, गंदा वीडी, जूस भी नहीं देता है मुझे भाई, इतना प्यास लगी मैं खड़ा हूं तब से यार, जूस देते मुझे। नहीं नवारा, जूस दे दे, नहीं जूस दे दे, नहीं चल ठीक है मत दे यार, मैं जाता हूँ चलो। भाई क्या क्या ड्रामा है भाई, यार जूस मिलेगा भाई, जूस मिलेगा, नहीं 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 नहीं, छोड़ ये तो देता नहीं, मैं कॉफी ले आता हूँ भाई, छोड़ो यार जूस क्या कर। यार दे दे जूस थोड़ा सा, दे दे, चल छोड़। भाई जूस की डिमांड बहुत है भाई, बहुत डिमांड है जूस की। ओके लेट्स हैव द बोर्ड बैक। भाई मस्त है यार ये लोग यार, मतलब स्टार्टिंग में इतने रिलैक्स होते हैं, बाद में ब्लंडर करते हैं सबके सब, सबके सबका लॉजिक यही चल रहा है। कैन से टाइम कंट्रोल क्या है, इट इज आई थिंक 120 minutes for 40 moves and then 30 minutes for the remaining of the game. Real problem with Sagar, he's gonna lose his flight tickets. That is might be a problem actually, but I don't think he would have booked by now, because जब players का वीजा नहीं आया तो सागर भाई का कहां से आएगा भाई। So I don't think so, visa के बिना he would have booked tickets, so I don't think that's an issue at all. Ronaldo is the best। यार देखो लड़ाई मत चालू करो यार, यहाँ पे भी मतलब पूरा वो हो जाएगा, फायर ऑन द बोर्ड हो जाएगा भाई, देख लो रोनाल्डो मेसी रोनाल्डो मेसी। ब्लंडर इज द न्यू वंडर, वाह। भाई शेक्सपियर तो हमारे चैट में घूम रहे हैं भाई। विश द गोल्ड कार्लसन, निंजा में क्या कह रहे हो आप, कौन सा डायलॉग, पता नहीं भाई कौन सा है। निरंजन भाई देखो मेरे को डाउट तो था ही कि आप ऐसे आयो, आपने बोल क्यों दिया, स्ट्रीम पे नहीं बोलना था यार निरंजन भाई। भाई बोल दिया आपने, यार निरंजन भाई ऐसे नहीं बोलने का था यार, स्ट्रीम पे थोड़ी बताते हैं। निरंजन भाई रिवीलिंग ऑल द सीक्रेट्स,
बाय द वे नाइट F6 वापस चला गया है। सो विदित गुजराती ने कहा हम निरंजन भाई का साथ देंगे और घोड़ा वापस ले लेंगे F6 पे, और एक्सचेंज अवॉइड किया उन्होंने। बहुत ही बढ़िया चाल यहाँ पे। अब प्रग भाई जल्दी से कैसल करेंगे, मेरे को हिंट आ रहा है। तो मुझे वो मीम याद आया, समझे समझे। निरंजन भाई लगता है आप सही कह रहे थे भाई। भाई मिस्टर पीके मुंह के फैन लग रहे हैं आज आप। सब रेटिंग बेस की वजह से अभी चेस में कंपटीशन बढ़ेगी। अरे भाई मेरे को तो कोई रेटिंग नहीं मिला यार, मेरे को क्यों नहीं मिला? 2000 पे रेटिंग देते हर बार। नहीं भाई, isn't this unfair? 2000 वालों को रेटिंग मिलती है, हमें नहीं मिलती। हमें भी फ्री रेटिंग चाहिए यार। 15 पॉइंट की दे दो, आई विल क्रॉस 2200 अगेन। फिर वो मुझे कभी राउंड ऑफ नहीं करना पड़ेगा चैट जिंदगी में। मैं वो रेटिंग का फेयरनेस और अनफेयरनेस का जो सोचने का जो स्टेटस है उससे बियॉन्ड हो गया हूं मैं अभी। ये बात तो है, ये बात तो है। सुनील क्योंकि छेत्री इज पैसा बेस्ट। क्या आता है जाता है, रेटिंग आता है जाता है। अगर अपनी अगली छाल जो खेलने वाले हो अगर वो अच्छा है तो आपका लाइफ बन जाएगी भाई। बाय द वे लाइव बनेगी नहीं बनेगी पता नहीं, पॉन तो A3 पे आ चुका है। और आई वुड से कि लॉजिकल मूव है, बट यूजुअली इतनी प्रायोरिटी नहीं होती A3 की इतनी जल्दी यार। यूजुअली यू वांट टू कैसल रुक C1, बट उन्होंने A3 खेला। Why is he not castling? I think castle could have been a better move, no? What do you think, Ranjan bhai? He's probably provoking A5. Interesting. A5 को टेम्प्ट करने की चाल, बिशप को और स्ट्रॉन्ग करने का साजिश। यहाँ वीडी भाई थोड़ा एक अलग से एंगल पे है। आप प्रेडिक्ट करो विदित का मूव, मेरे को पता है विदित का मूव, आप भी बताओ। प्रेडिक्ट करो ब्लैक क्या खेलेगा। ब्लैक क्या खेलेगा? आई वुड से ब्लैक खेलेगा, 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 खेलेगा। क्या खेलेगा भाई? A6। ओके आपका जो है A6 है, मेरा बताओ। हाँ बताओ। H6। H6। बाप रे, तो आपने मुझे मिरर कॉपी मार दिया। गुकेश गेम कह रहे हैं आदित्य प्रसून जी। पता है मेरे कॉलेज में एक प्रसून नाम का मेरा दोस्त था भाई, शिखर प्रसून था वो, गायब हो गया वो। लेकिन वेलकम आदित्य भाई, गोइंग टू द गेम ऑफ गुकेश। जहां कुछ भी नहीं हुआ है पिछले 30 मिनट से, बहुत बढ़िया। सो गुकेश भाई 15 मिनट पीछे ऑलरेडी है नवारा जी से। लगता है ऑलरेडी ऐसी पोजीशन में आ चुके हैं जहां पे उनको खुद को नहीं पता करना क्या है। आई थिंक सेंटर लेना एक बढ़िया चाल होगी, तो सेंटर ले लेते हैं। गुकेश भाई जल्दी से D4 खेल दो और व्हाइट में फाइट से ऑलरेडी प्लस हो जाओ भाई। गोइंग टू द गेम ऑफ वैशाली फॉर अ सेकंड ऑल्सो, अगर हम एक बार नजर मार पाए उनकी गेम पे, दैट वुड बी ऑसम। गेम रफली इक्वल लग रही है मुझे, थोड़ा प्रेशर C3 पॉन पे है, मगर विद एडिक्वेट डिफेंस इट शुड बी पॉसिबल टू डिफेंड, एंड देन वी कैन ऑल्सो होप फॉर अ गुड डे आफ्टर C4 जब बिस्किट आएंगे। सो फिलहाल के लिए डिसेंट। इस पॉन स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बेवफा। बिकॉज ये पॉन कमजोर है ना, धोखा देगा ना अभी। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, अच्छा है बहुत। So going to the game of Vidit against Pragg, जहां पे फाइट है मेरे और निरंजन भाई की, आई मीन प्रग और विदित के बीच में। क्या वो A6 खेलेंगे मेरी मूव, क्या वो H6 खेलेंगे निरंजन भाई की मूव? कम ऑन चैट, व्हाट डू यू थिंक? कौन जीतेगा? क्या मैं जीतूंगा A6 का, क्या निरंजन भाई जीतेंगे, या फिर तुम कोई अपनी मूव बता चाहते हो? व्हाट डू यू थिंक चैट? निरंजन भाई साउंड्स लाइक चतुर फ्रॉम 3 Idiots। क्या बात कर रहे हो भाई निरंजन भाई? इज दिस ट्रू? क्या आप चतुर हैं निरंजन भाई? निरंजन भाई, हाँ नहीं समझ भाई में, दोबारा निरंजन बताओ। चैट में भी कह रहा है कि निरंजन भाई साउंड्स लाइक चतुर, तो मैं कह रहा हूं क्या आप चतुर हैं? नहीं भाई मैं चतुर नहीं हूँ, लेकिन मैं चतुरंगा खेलता हूँ। भाई चतुर नहीं हो, चतुर नहीं हो आप? मैं चतुर नहीं हूँ लेकिन चतुरंगा खेलता हूँ। अच्छा चतुर नहीं हो मतलब, अच्छा अच्छा ओके ठीक। बिशप F5 कह रहे हैं हमारे लेटेस्ट मॉड कनुंगो जी ने। आई थिंक बिशप G5, उन्होंने व्हाइट की मूव गलती से बता दी। बिशप G4 कह रहे, बिशप G4 के चांसेस बहुत ही कम। भाई मुंह देखो, मैं भाई मुंह देखो। अरे बाप रे, अरे बाप रे, निरंजन भाई की मूव खेल दी उन्होंने। ओ माय गॉड्स, इज निरंजन भाई VD सेकंड नाउ? आई हैव ह्यूज डाउट्स, आई हैव ह्यूज डाउट्स। निरंजन भाई VD को हेल्प तो नहीं कर रहे बैक एंड पे। B6 B4 प्लेट,
Bishop drops back to d6 immediately. Niranjan bhai finding the future. How is it possible, Niranjan bhai? My lips are sealed. आपको अच्छा समझा भाई, समझा मैं, मुझे पता लग गया आपका राज। वो हल्के से डिले का फायदा उठा रहे हो आप। अरे नहीं विद भाई, गेटिंग सच में ट्रेनिंग। ढूंढा भाई, मैं सच में ढूंढा भाई। अच्छा अच्छा अच्छा, विद गेटिंग ट्रेनिंग फ्रॉम निरंजन भाई। भाई बिल्कुल बिल्कुल, निरंजन भाई बहुत स्ट्रांग है भाई, जीएम 9 में उनके पास, ध्यान रखना भाई। तो भाई ऐसा और करते लुक, हैं, प्रज्ञानंदा सोच रहे हैं, तब तक आप मुझे बताओ 3 चीजें जो चेस से रिलेटेड है, जो सही है। 3 चीज में से एक गलत है, लेकिन 2 सही है। मैं जो गलत है उसको ओके। मैं पकड़ूंगा। हम्म, बताओ। अच्छा मैं ही बताऊं 3 चीजें? मैं सैंपल देता हूं, मैं 3 चीजें बोलता हूं, उसमें से एक चीज सही रहेगा, ठीक है? भाई आप बताओ ना 3 चीजें, मैं बताऊंगा कौन सा सही है कौन सा गलत है। ठीक है, तो मैं 3 चीजें बताऊंगा जिसमें से सिर्फ एक गलत होगा, ठीक है? हाँ ठीक है। मैं गेम से 10 मिनट पहले उठा हूं। मैं फर्स्ट मूव नाइट ए3 को फेस किया हूं, हाँ। और मैं ए6 मूव खेला हूं E4 पे ब्लैक से। A6 वाला रॉन्ग है। नहीं भाई, मैं E4 A6 खेल के जीता हूं स्टेट चैंपियनशिप। तो फिर नाइट ए थी गलत है क्या? नहीं भाई। 10 मिनट पहले कभी नहीं उठे? करेक्ट। भाई क्या भाई, ये तो क्या ही था भाई, कुछ भी। तो मैं सैंपल रंजन दिया भाई भाई। फेस। आप भाई कंटेंट यही हीरो, आपको बनाना है कंटेंट, अभी बताओ भाई। मैं भाई मैं सैंपल। कंटेंट बना रहा हूँ भाई, मेरी गोद में बन रहा है कंटेंट भाई, रुको अभी दिखाता हूँ, रुको रुको, पहले फिलहाल के लिए गेम देख लेते हैं भाई। चैट यार रुको, सुनो मेरी बात सुनो यार, तुम मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है भाई? देखो अपना ना प्रग अगेंस्ट वीडी है, ठीक है? पहले तुम ये प्रेडिक्शन बताओ मुझे जल्दी से, चैट स्पैम करो कि वीडी जीतेगा कि प्रग, बिकॉज यहां मुझे दिख रहा है प्रग 40%, वीडी 36%, बट आई एम नॉट एबल टू एसोसिएट पर्सन टू योर वोट। जल्दी से अपने नाम के साथ मुझे दिखाओ कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। इज वीडी गोइंग टू विन और प्रग गोइंग टू विन? पहले तो ये बताओ मुझे। तब तक के जाता हूं भाई जल्दी से गुकेश गेम पे। वहां पे उन्होंने मिस्टेक कर दी है, गुकेश ने खेला है A3, जो बड़ा सा क्वेश्चन मार्क उस पर मंडरा रहा है। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? ओ नो 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 नो, ये नहीं होना चाहिए था भाई। मेरे इमोट्स भी नहीं आ रहे, इतनी खतरनाक मूव है कि इमोट्स भी घबरा रहे हैं। मुझे लग रहा है यहाँ पे E4 माइट बी अ गुड मूव फॉर ब्लैक। ऑलरेडी बार नीचे जाते हुए -0.47। वीडी वीडी ड्रॉ ड्रॉ, वीडी वीडी ड्रॉ ड्रॉ, ये कौन सा गाना चल रहा है भाई? वीडी वीडी ड्रॉ ड्रॉ। ओ भाई वीडी को तो सपोर्ट, प्रग के नो सपोर्टर्स इन द चैट। प्रग स्ट्रेस्ड आउट, प्रग कुर्सी से उठ के चले गए गुस्से में। कैन वी हैव द कैमरा ऑफ वीडी अगेंस्ट प्रग अगेन? यहाँ पे क्लियरली नवारा जी ड्राइवर सीट में अगर E4 खेलते हैं तो ही विल बी बेटर। E4 के बाद नाइट टैक्ट, नाइट को G5 जाना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लैक के पास एक उमदा चाल है, नाइट टू E5 डिफेंडिंग द पॉन, और नाइट D3 चेक आ रहा है, सो एक्सट्रीमली डेंजरस। मकसूदलू भाई वॉक करते हुए, निहाल सनी विल, बढ़िया भाई। प्रग प्रग प्रग। पीवी पीवी क्या है भाई? पीवी सिंधु की बात नहीं हो रही यहाँ पे, बैडमिंटन नहीं है भाई ये। अब प्रग के लगातार वोट आ रहे हैं, मैग्नस जी को भी वोट आ रहा है भाई, बढ़िया भाई। घर बैठे बैठे सोते सोते मैग्नस गेम जीतते हुए प्रग और वीडी के बीच की। हु इज लीडिंग टूर्नामेंट? आई एम। सी गैंग। अबे यार मेरा गिव अवे होगा क्या आज? तुम्हें हम आज किसी के हाथ दे देंगे यार, एक दुल्हन की तरह तुम विदा हो जाओगे समोसा जी आज। सो चैट काफी इंटरेस्टिंग, मुझे फिलहाल लग रहा है कि कहीं ना कहीं गुकेश पे प्रेशर आ रहा है, इतना आसान नहीं होगा। क्या वो हारेंगे आज? देखेंगे, देखी जाएगी भाई बहुत जल्दी टेढ़ी खीर की गेम। फिलहाल के लिए प्रग ने कैसल कर लिया है फाइनली। अब वीडी आई थिंक खेलेंगे रुक टू E8 फॉर डिफेंडिंग द पॉन, और फिर खेलेंगे बिशप F5, और फिर खेलेंगे क्वीन D7, और फिर खेलेंगे बिशप H3। समय भाई इस टोर्नी में अच्छा खेल रहे भाई। टोर्नी क्या है भाई? व्हाट इज टोर्नी?
भाई वीडी कितना पीता है भाई पानी में, कि कितना हाइड्रेट करता है भाई, अलग लेवल का हाइड्रेशन है यार। टिक्की जीतेगा भाई, मैं तो जीतूंगा यार, मैं तो लाइफ में ऑलरेडी जीत चुका हूं, गालियां बहुत सारी। चैट एनीवन ऑफ क्राउड फंड कॉम्बिनेशन फॉर टिक्की भाई एनएच भाई, बिल्कुल भाई, वी आर ऑल सेट। आर यू रेडी भाई? अगर चैट क्राउड फंड करे हम दोनों की कॉमेडी क्लासेस, व्हाट डू यू थिंक? Oh, he plays a6. He also plays my move. भाई वीडी वाला दिल रखने के लिए एसिस तो खेल ही दिया भाई, बढ़िया है भाई, वीडी मस्त है भाई, दिल रखने के लिए एसिस खेल दिया भाई बच्चे ने, देखो बच्चा कह रहा हूँ यार, मतलब बंदे ने। With the equalized right from the opening, I think he's better. Let's see, I'm not so sure. अभी सारे पीस डेवलप भी नहीं है, इक्वलाइजेशन बहुत दूर की बात है। मैंने कैसल बोला था, काफी नॉर्मल मूव है कैसल यार, टिक्कू टू 2200 नहीं लगता, बस यार मैं दिखाता नहीं अपना स्किल सेट यार, वही चक्कर है बस। कभी नीश नाई की स्ट्रीम पे रात को भाई फिर दिखाऊंगा स्किल सेट। टिक्कू भाई समोसा खिला दो भाई, हिमाचल में समोसे मिलते हैं क्या? Are they allowed to have mobile phones in playing hall? No, I don't think so. Usually, even in normal open tournaments, mobile phones are not allowed at all. In fact, मतलब हॉल के अंदर ही अलाउड नहीं है, अगर पकड़े गए तो इमीडिएटली गेम जीरो, यू लूज द गेम। मैंने ऐसा बहुत बार देखा है होते हुए कि फोन बचता है, प्लेयर जीत रहा होता है। एक बार मैंने देखा था प्लेयर क्वीन अप था एंड फोन बच गया और हार गया वो। मैसिव रिस्पेक्ट टू प्रग अंधा फॉर इच स्टेज इवन। अबे ये क्या है यार, ऐसे मत करो यार, दिस इज नॉट गुड। ठीक है भाई, टाटा सफारी गिव अवे कर दो भाई, मेरे पास खुद टाटा सफारी नहीं है यार, ना मैं सफारी पे गया हूँ ना मैं टाटा टाटा गया हूँ भाई कभी। सारी टिक्की तेरी टिक्की समय रहना भाई, तुम्हें कैसे पता भाई, तुम्हें कौन सा उसने डीएम किया था? भाई एमपी में तो मिलते हैं, एमपी में तो मिलते होंगे भाई। व्हाट्स योर पर्सनल ओपिनियन वीडी और प्रग? यार देखो प्रग के वाइट पीसेस है, सो टेक्निकली ही शुड बी अ स्लाइट फेवरेट, बट वीडी हैज प्लेड सॉलिड चेस, 4 ड्रॉ है अब तक, तो हराना इतना आसान नहीं रहेगा। एंड प्रग का हमने देखा है कि ही हैज ब्लंडर्ड इन 2 गेम्स, सो फिलहाल के लिए आई वुड से इट्स कंप्लीटली इवनली बैलेंस्ड। प्रग के पास वाइट पीसेस है, बट विद इट इज इन आई वुड से मोर स्टेबल फॉर्म, सो फिलहाल के लिए डॉट बैलेंस्ड, बहुत इंपॉर्टेंट गेम। Gukesh made a big mistake. We saw that he played the pawn to e3. अगर यहाँ पे e4 खेलते हैं ब्लैक और फिर 95, so गुकेश पे बहुत प्रेशर बन सकता है। योश भाई स्ट्रीम पे बोला था समय ने, भाई तुम्हें कैसे याद है भाई, ये सब चीजें याद रखनी चाहिए यार, लाइफ में आगे चलना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए भाई। 2022 की बातें 2022 में रहने दे। By the way, chat, I still think the queen is kind of misplaced. As I said, इसका point है d5 रोकने का, but now d5 is not even the idea. The idea is e4, and it's not really helping with that. So ये queen b3, I guess, look very interesting, but you can also fall into your own trap. कई बार अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने वाली बात हो जाती है। मेरा क्वेश्चन डॉज कर दिया भाई, कौन सा क्वेश्चन भाई? ड्रॉ होगा टिक्कू भाई, यार ड्रॉ में लेकिन फील नहीं आती है। कल पता है सारी गेम तीनों ड्रॉ हुई और कोई भी कभी जीत नहीं रहा था, तो मजा नहीं आया, मतलब फील नहीं आई अंदर से, वो गूजबम्स नहीं आए। सो आई वांट गूजबम्स, गिव मी गूजबम्स समबडी, कोई जीतना स्टार्ट करो भाई जल्दी। आई एम द विनर ऑफ द टूर्नामेंट, स्पैम समोसा ओपी। अरे बहुत बढ़िया भाई, चटनी कहाँ है लेकिन समोसा जी, चटनी मिसिंग है यार, 1 सेकंड चश्मा निकालो। निकाल दिया भाई। Why is 4 draws than 2 wins, 2 losses? 4 draws means it's more stable. That means you're less likely to lose. And how Pragg lost 2 games means he's more likely to blunder. So, based on that, and considering Pragg has white, I would say evenly balanced. And Pragg की rating, by the way, chat, he's fallen to 2739. So, उसकी rating थोड़ी कम हो गई यार, which is surprising because मैंने पहले दिन ही बोला था, इनफैक्ट दूसरे दिन बोला था मैंने, जस्ट बिफोर प्रग स्टार्टेड लूजिंग, कि भाई प्रग तो मतलब क्या खेल रहा है, वो से ही इज द फेवरेट। बेचारा तब से प्रग का डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, तब से बेचारा हारता ही जा रहा है, सॉरी प्रग भाई। आप कौन से कॉलेज से हो भाई? मैं थापर यूनिवर्सिटी में था भाई। वीडी इज लुकिंग टू गेट, नमिता थापर वहां पे हमारी डीन थी।
मंदर भाई ये कहां से आ गया भाई टॉपिक? इंडिया नंबर 1 अभी विशी आनंद है भाई, आज चेंज हो सकता है वो फिर से। गूजम चाहिए तो मेरी गेम्स देखो, हमेशा कोई जीतता है और वो मैं नहीं हूं भाई। यार देवनेश भाई बहुत बढ़िया भाई, अपना मतलब खुद की बेइज्जती करने का स्किल बहुत कम लोगों के पास है। आपके पास A+ ग्रेड मिलता है उस स्किल में आपको। व्हाई डज व्हाइट मूव फर्स्ट नॉट ब्लैक? ब्लैक चलेंगे तो भाई गेम बदल जाएगी ना यार पूरी। टिक्कू की नजर किसी प्लेयर पर पड़ती है, उसकी रेटिंग को थप्पड़ लग जाते हैं। भाई तो किसकी रेटिंग को नजर लगाए फिर, तुम बताओ ना, एक्सपेरिमेंट करते हैं आज। किसकी रेटिंग को नजर लगाए फिर? गूजबम से अच्छा नहीं भाई, उस तरह से नहीं भाई, नॉर्मल गूजबम से, नॉर्मल जो हम ऑन कैमरा दिखा सकते हैं। अब प्रग का क्या खेलेगा गेस करो भाई, प्रग क्या खेलेगा? आई थिंक प्रग विल प्ले क्वीन C2, दैट्स माय गेस। अदानी टू प्रग, मेरे पैसे वापस दो। नहीं नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। मैं चटनी के साथ अलाउड हूँ प्लेइंग हॉल में? बिल्कुल भाई बिल्कुल, लाल और गीली दोनों। आई मीन नीली, आई मीन ग्रीन। In Gukesh's game, was A3 played to take Navara out of prep? He is not no thinking a lot. Yeah, I think, but Gukesh is also out of prep himself. दोनों ही आउट ऑफ प्रेप हो गए, सो वहां पे ना ब्लंडर होने की चांसेस बहुत है। खुद की रेटिंग को लगाओ और चेस खेलो, देखना खुद ही सारे हारोगे। भाई वो तो मैं बिना नजर लगाए हार रहा हूँ ना यार, उसकी जरूरत ही नहीं है। वैसे तो अपने मैग्नस भाई का भी रेटिंग ठीक ही है। अच्छा भाई, मेरी नजर लगाने की कैपेसिटी भी एक लिमिट तक जाती है भाई, कार्लसन पे अप्लाई नहीं होता। By the way, Bishop C1. Wow. 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 क्या ही मूव है भाई, क्या ही चाल। भाई बिशप heading towards B2 now, putting pressure on the E5 pawn. Not the pawn, bishop move I would make for sure, but it has a lot of logic here. And yeah, I mean, usually would not be my choice, but it has a lot of ideas. Bishop on D2 is not doing much. Kar kya raha hai? It doesn't have any good squares. F4, G5, H6 are all taken. E3 is possible, but again, it's hitting an empty diagonal. So he plays Bishop C1 to put pressure on the E5 pawn, and also kind of keep this queen side, very harmoniously defended. So देखने में मजा आएगा भाई, देखते हैं क्या होता है। बट इसका मतलब ये भी है कि विदित हैज प्रॉब्ली इक्वलाइज्ड, या ऐसा नहीं है कि कोई क्लियर ओपनिंग एडवांटेज प्रग को मिली है। दिस कैन नॉट बी द वे टू ओपनिंग एडवांटेज फॉर श्योर। D2 चलना और वापस आना, नॉट रियली। बाबा टिक्की, ये क्या भाई? साले बाय द वे really drew but didn't lose any game, I know. Navara played E4. Wow. So Navara has found the pawn move to E4. So now where would the knight go? If the knight goes to G1, I mean, this is already borderline, losing after 95. हमारे piece ही develop नहीं है यार. So you cannot go back. Now, if knight to D4, let's say, black will not cooperate and take on D4. He would place the 95, again threatening this check and also putting pressure on C4. And this knight can be kicked away long term, with many moves. So that's also not what you want. Maybe it's possible to play this. And if not knight D4, then knight G5 is usually played. But again, knight E5 and the bishop defends the pawn. So ये knight थोड़ा सा अटका हुआ है, it can be kicked away with H6. And of course, some crazy tactics like queen F7 doesn't work because knight also defends, and that's also not possible. So knight G5 का कोई purpose नहीं है जब E4 pawn भी defended है और F7 भी defended है. So Navara जी already move number 6 पे, similar to how it happened in the 960 games, is already slightly better. Not a good start for Gukesh here. भाई मेरी चैट फिर अटक गई यार, क्या रे यार। हाँ, फोन पे चैट भाई 630 वोट है निरंजन भाई, वी हैव 630 वोट्स ऑलरेडी, लेकिन हमारे लाइक सिर्फ 110 है। चैट ये कैसे नाइंसाफी है चैट, प्लीज लाइक द स्ट्रीम।
क्वीन G5 भाई यार, क्वीन G5 कैसे आएगी भाई यहाँ पे नाइट के ऊपर से उड़ के? If Pragg wins, I will give away 2 samosa in the chat. भाई प्रग जीतने के चांसेस तो हैं, बट विदित को हराने के बाद उतना अच्छा भी लगेगा नहीं, तो इट्स लाइक मतलब खुशी भी होगी दुख भी होगा। तो आप किस तरह बाय के द वीडियो का आंसर टाइम लो होते हुए 60 भाई, मिनट से डाउन जात। आपका स्टैंड रंजन क्या भाई, है? स्टेबल रहना मेरा क्या, है या खुशी भी होना है और सैड भी होना है? आई वुड से कि खुशी सैड सह लेंगे भाई, थोड़ा सैड सह लेंगे भाई, खुशी भी जरूरी है, बहुत जरूरी है खुशी भी। Gukesh might have done this to take Navara out of prep, dude, but I think having a worse position is not a way to take you somebody out of prep. I mean, you can take your opponent out of prep by playing 1f3, but it's not a good move. So I would say कि prep से बाहर लेने का मतलब ये नहीं है कि मतलब थोड़ा सा खराब मूव खेल रहे हैं। Bishop c1 also plays e4. E4 is something I don't want to play necessarily, because once you play e4, let's say black plays rook e8 and you play e4, आपका d3 pawn एक backward pawn है, and ये pawn बहुत कमजोर है, cannot be defended by another pawn, and d4 at some point might be possible, but फिलहाल के लिए I'll play bishop g4 and threatening knight d4 ideas. So ये कहीं ना कहीं पे ये थोड़ा सा उल्टा पड़ गया हमें. I don't want to play e4 here, which also blocks my bishop, by the way, unless there's some concrete idea. So bishop c1 ka idea will be bishop b2, and also to kind of maybe go d4 at some point, but yeah, that's the main idea, I think. What about knight d4? Knight d4 is always a possibility. It's never a bad move, but it's not a great move either. हमारे pieces develop नहीं है अभी, so let's not move the same piece twice. And yeah, VD finds bishop f5. Very, very good move. Developing a piece. Next, we will have queen d7. You know, connecting the rooks. Logical play, chat. Logical play. Opinions are like something has, everybody has one and so many votes, but not as many likes. Gukesh is youngest to qualify for candidates, not Pragg. But is he the youngest ever? Really? I'm not so sure about that. I think पहले लोग कर चुके हैं पहले qualify candidates के लिए at a younger age, I think. Come on. निशांत भाई ने ऐसा क्या लिखा था भाई कि बिलेंडर भाई हंस रहे हैं? मैं देखा ही नहीं, क्या लिखा था भाई ऐसे निशांत भाई ने, मुझे पता भी नहीं है। डू रशियन नीड 6 months फॉर कैनेडियन वीजा? मैंने कहीं ये पढ़ा था कि 6 months लगते हैं। वी डोंट नो। द गुड न्यूज फॉर अस इज कि चैट, बाय द वे, बाय चांस इफ एनीबॉडी इज जॉइनिंग राइट नाउ, कैंडिडेट्स का अभी कनाडा में थोड़ा डाउटफुल आ चुका है। कनाडा हमें गोस्ट कर रहा है कैंडिडेट्स को, बेसिकली वहां पे वीजा के इश्यूज फेस कर रहे हैं प्लेयर्स। सो अगर बाय चांस वीजा नहीं मिलता है प्लेयर्स को एक हफ्ते में, तो ये शायद स्पेन में शिफ्ट हो जाएगा। एंड अगर ऐसा होगा तो बहुत बढ़िया है इंडिया के लिए, बिकॉज टूर्नामेंट फिर शाम को, रात को 1 बजे के बदले शाम को 6 बजे स्टार्ट होगा, तो बहुत उम्दा होगा भाई। वीडी भाई फुल घूमते हुए थे, काफी देर तक बैठे हैं कुर्सी पे। बोथ प्लेयर्स एक्सट्रीमली फोकस्ड, पीछे नोदिरबेक भी दिख रहे हैं हमें फुली फोकस्ड। एंड प्रग ने खेला है बिशप b2, लॉजिकल मूव, जैसा हमने कहा, e5 पे प्रेशर डालने के लिए। कौन सा पिज्जा मंगवा लूं? फार्म हाउस तंदूरी पनीर? भाई फार्म हाउस बेस्ट है भाई, फार्म हाउस नहीं यार, पेपी पनीर इज द बेस्ट। तंदूरी पनीर लेस देन पेपी पनीर। टिकू के सर के ऊपर से निकला, पढ़ के भी समझ नहीं आया भाई, मैंने पढ़ा क्या, मुझे ध्यान ही नहीं है भाई, मेरा ध्यान कहाँ है यार, वेयर इज माई ध्यान? आज बाय द वे मैं आज लैपटॉप रिपेयर करके आया हूँ, सो कुछ टाइम तो निकल जाएगा लैपटॉप का। सो आज कोई इश्यू नहीं मुझे दिख रहा है लैपटॉप पे जब से आया हूँ, टचवुड। There are many ideas with bishop b2, pawn d4. Pawn d4 would be a logical move. Why? Because it would open up the bishop towards the king side. But you have to be careful कि मान लो ऐसे queen d7, d4, black कहीं e4 ना खेल दे. That's one problem. And also black has the luxury to ignore this. मान लो rook d8. अगर आप मारते हो, knight से मारा, bishop से मारा, and the game is well equal, yeah. I mean, ये एक tactic तो है अपने पास, बट यहां भी बहुत पिन है। फॉर एग्जाम्पल इसे क्वीन टेक्स d7, रूक टेक्स, बिशप टेक्स b7, देयर इज रूक टू b8, बिशप ड्रॉप्स बैक टू f3 एंड नाउ रूक टू d2। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं व्हाइट के पीसेस बहुत ही पैसिव है, ब्लैक के पीसेस बहुत ही एक्टिव, सारे पीस एक्टिव।
बिशप हैंगिंग, बिशप कैन नॉट मूव बिकॉज द नाइट वुड बी हैंगिंग। तो ये मुझे पोजीशन पसंद नहीं आ रही। Is Vidit still in prep? I don't think so. By the way, Queen D7 played by Vidit. So harmonious setup here. And now Pragg is thinking, what? Oh no, VD is still thinking, okay, मैंने खेला क्या? Oh, VD has played Queen D7. Okay, he has played. Pragg is not at the board. Interesting. Pragg is far better than Carlsen. Really doubt that, bhai. ठीक है, full time job क्या है? भाई, I'm working for Chesscom, भाई, as a content lead. यो कार्वा भाई, क्या हालचाल? सुना है आप पे काफी सारे कुछ सैंक्शन लगे थे रिसेंटली। 30 मिनट्स डाउन? नहीं, इट्स नॉट 30 मिनट्स भाई, 20 मिनट्स डाउन है भाई। स्ट्रीमिंग ही करते रहोगे क्या? पढ़ाई नहीं करनी क्या? सुजय भाई, हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम? हाउ ओल्ड डू यू थिंक आई एम भाई? Pragg is at the board. Yep, finally at the board. नवारा भाई घूमते हुए आज थोड़े कॉन्फिडेंट लग रहे हैं। गुकेश का बोर्ड एक बार देखे कुछ होगा तब से। Has he played something? Oh, Gukesh plays knight g5 and black does not play knight to e5. So Gukesh somehow survives. Queen comes to e7. Maybe he's preparing queenside castles. Who knows? Queen comes to c2 to put even more pressure and black just castles. So Gukesh somehow survives that knight e5 idea because Navara does not find it. And now technically he can take on e4 here. But chat, यहाँ पे ब्लैक के पास एक क्रेजी मूव है। कैन यू फाइंड दैट मूव चैट? कैन यू फाइंड द बेस्ट मूव फॉर नवारा हियर? कौन निकालेगा? Pragg will not fall for time pressure. आज तो पूरा फोकस होगा। लर्न सिस्टम खेला है क्या किसी ने आज तक भाई? लर्न सिस्टम किसने खेला है भाई? लर्न सिस्टम मैंने ही इन्वेंट किया था यार पिछले जन्म में। टिकू भाई स्वीट 16। I lost some chess school. अच्छा, यो नैतिक भाई क्या हालचाल? नैतिक भाई, क्या आप सागर शाह के रिलेटिव हैं? I think it's a high probability of playing a4 or d4. So यहां पे बेस्ट मूव है भाई knight to d4. क्रेजी आइडिया। अगर आप ये मारते हो तो बिशप खुल चुका है आफ्टर नाइट टेक्स। एंड इफ गलती से नाइट टेक्स मारा, हार गए ना भाई। क्यों? हो गया ना भाई, क्वीन चेक और रुक गया। बाय बाय, फिनिश, ओवर। So that's why after castles, knight takes c4, knight to d4, हम अपना किंग नहीं खोलेंगे। We will play queen to d3, attack the knight. अगर अब वो यहां मारता है तो हम यहां मार लेंगे, और अगर वो बाय चांस knight to b3 खेलता है तो we will take on f6, knight takes a1 and now knight d5. एंड कहीं ना कहीं ये नाइट ट्रैप्ड ही है, कहीं जा नहीं रहा है। सो वी विल गेट दिस नाइट लेटर। ये पता है विलन देखा तुमने, जो हीरो को डायरेक्टली मारता नहीं है, वो उसको पिंजरे में रख के रखता है ताकि वो कभी ना कभी अपना वापस आ पाए। ऐसे बेन ने किया था भाई बैटमैन के साथ। ये नहीं कि उसको मार दे वहीं पे, नहीं, उनको बंद रखेंगे ताकि उनको एस्केप करने का मौका मिले। सो सिमिलर सिचुएशन है नाइट की, ये वापस आ सकता है बट मुश्किल लग रहा है फिलहाल के लिए। So going back to the position, this is the current position. Castle किया है तो knight e4 definitely possible. Let's go to the game of VD against Pragg, जहां VD अभी deep सोच में है। क्या खेलेंगे देखते हैं। Tiku is 28, 29-year-old. Thank you, bhai. I'm 31. इंडिया में बहुत शाह है। अरे वाह भाई, आज किसी गेम में लंदन से, अच्छा आज की बात कर रहे हो? नहीं भाई यार, आज तो सब C4 खेल रहे भाई। आज तो इंग्लिश का दिन है। आप मेरी MLM ज्वाइन करोगे, लेवल निकलवा दूंगा भाई। लेवल निकलवाना का मतलब क्या होता है भाई? MLM की फुल फॉर्म तो बताओ दिवेश भाई। MLM की फुल फॉर्म क्या होती है? तुम्हें तो पता होगा। क्वीन e4, क्वीन e4 भाई, क्वीन मर रही है उसमें तो यार। लेट्स हैव टिक्कू फॉर द वर्ल्ड चैंपियनशिप। भाई हम ही कर ले वर्ल्ड चैंपियनशिप, क्या बोलते हो यार? हम लोग अपना बोर्ड लगाते हैं और अपना ही चैंपियनशिप कर लेते हैं। आई थिंक दैट साउंड्स गुड। बोर्ड लगा देते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप किसका? आप और मैं कर लेते हैं। हाँ मतलब छोड़ो इन सबको, है ना? वी कैन हाँ, डू कर इट लेते यार। हैं। इसी पोजीशन को लेके करते क्या? अभी कर देते हैं। हाँ अभी कर लेते भाई। डन भाई। फिडे भाई हमें कंफर्मेशन दे दो, वी स्टार्ट द वर्ल्ड चैंपियनशिप राइट नाउ। हाँ भाई, तो मल्टी मैं लेवल व्हाइट से क्यों, मार्केटिंग। मैं ब्लैक से क्यों? मैं ब्लैक से खेलूंगा।
चलेगा भाई, ऑल्टरनेट है ना, ऑल्टरनेट कलर है, बात एक ही है। ठीक है भाई, आपका चाल है, कॉइन टॉस, ऑफ टाइम आपके पास कॉइन है टॉस कर लेते हैं भाई। 1 ये आवर मैंने 50 मिनट्स। ये मेरे क्रीम का ढक्कन है भाई। हाँ, सो बताओ भाई, ये वाला साइड आएगा कि ये क्रीम वाला साइड आएगा, बताओ भाई, चूज करो। वो मेरा ब्लू वाला साइड चाहिए मेरे को। ब्लू वाला, भाई देख लो भाई, ब्लू वाला साइड नीचे आया है, सो हाँ, तो आई कौन गेट सा व्हाइट। कलर चाहिए भाई? हाँ, कौन सा कलर चाहिए आपको? मेरे को व्हाइट चाहिए भाई पहले गेम में। ठीक है भाई, मैं ब्लैक हूँ और मैंने क्वीन डी7 खेल लिया हूँ। मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा पानी भी पी रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है भाई। चलो भाई, खेलो। हाँ भाई, रंजन भाई की रेटिंग क्या है भाई, दोनों की 2150 ही हम दोनों की। GMs prefer London system to win. That means, nahi bhai, they are trying to go for a draw today. They don't want any other Indian to lose. That's why. It's Gukesh in the camp. Absolutely. Can we have VD Pragg in the camp, bhai? आप खेलो स्ट्रीम करने के लिए, कोई नहीं बंदा बुलाना भाई। मैं भी ना यार, मेरा गला खराब है यार। I am not in my full form today. मेरा गला नहीं काम कर रहा यार। It's like I am Superman but I can't fly. It's heartbreaking. Why chess players are single? So for every 100 male chess players, there probably are like 3 female chess players or 2 female chess players. So it's just mathematics at this point. By the way, knight a4, wow, not a move I ever thought of. Is the idea to play rook c1 and knight c5? That looks like the idea here, also putting pressure on e5. So now the pieces are tied down to defending this. By the way, bishop h3 is the move you would usually consider. I think this move might be a good move, trying to get rid of this strong bishop on g2. ये bishop बहुत बहुत strong है, b7 तक pressure exert कर रहा है. So bishop h3 might be interesting. Not queen a4, knight horse to e4 भाई, घोड़ा जा रहा है a4 पे. और looks awesome. आपकी सीट के पीछे स्पाइडर है भाई, तो अच्छा है, काटेगा, स्पाइडरमैन बन जाएंगे हम भी यार, फिर उड़ के जाएंगे, बढ़िया है भाई। मूवी बनेगी हमारे ऊपर, हम भी हीरो बन जाएंगे। कमान 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 भाई, थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट थोड़ा फास्ट। वीडियो भाई बहुत सोचते हुए। कैन वी हैव फुल स्क्रीन फॉर अ सेकंड भाई? नवारा जी क्या कर रहे हैं वहां पीछे? ही क्या कर रहे थे भाई पीछे? Isn't Prang trying to too much to win today by playing unusual moves? Um, I don't think he's trying to play unusual moves. So that's strategy ही different है, because one c4 itself is usually a different structure than one d4 and one e4. So opening ही ऐसी थी कि यहाँ पे plans सब कुछ change जाते हैं white की तरफ से black की तरफ से. That's why it feels unusual, not necessarily because कि वो unusual moves खेल रहा है. We see one c4 not that often, and that's why I think they are not playing for draw. Absolutely not. Draw किसी को नहीं चाहिए यहाँ पे. Knight d4 for VD. Knight d4 feels like an extremely risky move. First of all, you are kind of losing a pawn here, because bishop g3 pe there is bishop f6, so you will not really, you will lose a piece. And uske bina bhi knight d4 is kind of, opening up the bishop. Now b7 can be hanging, so I'm not so happy about this move. Rook e1 is okay, but rook e1 का purpose क्या है? I think better is to probably play rook c1 and knight c5 from white. That seems like a better idea. अगर black मारता है, rook से मारेंगे और e5 पे और pressure आएगा. We remove a defender of e5 and still we are attacking with 1, 2, possibly 3 pieces. Why not rook d8? Rook d8 is possible. Absolutely a possible move, putting pressure on this file. Who is Mr. Newt? कुछ तो स्कैम लग रहा है मुझे. नवारा लुक लाइक, अरे क्या भाई, देखो भाई, आप बियर्ड रख लो, एटलीस्ट बच्चे रिस्पेक्ट करेंगे भाई. ये क्या लॉजिक है भाई? बियर्ड रखने से रिस्पेक्ट मिलती है क्या निंज भाई? इज दैट ट्रू? डू यू थिंक इफ यू हैव अ बियर्ड पीपल रिस्पेक्ट यू मोर? पूरा डिबेटेबल है भाई, जैसे कि I mean it depends on the person, depends on the situation. Like this, मार्क ट्वेन का कोट याद आ रहा है मुझे. मार्क ट्वेन सबको पता होगा, अगर नहीं पता तो उनको पढ़ लो. मार्क ट्वेन ने बोला था कि all generalizations are false, including this one. नाइस वन भाई, परफेक्ट टाइमिंग के साथ कोट फेंक दिया निरंजन भाई ने सबके मुंह पे भाई. बिल्कुल सही वाला, बिल्कुल सही फेंका भाई.
गुकेश बोर्ड, गुकेश भाई में कुछ खेला क्या वीडी ने अभी? एक सेकंड मैं चेक करता हूं पहले। नहीं कुछ नहीं खेला है। गुकेश बोर्ड देखते हुए क्या चल रहा है वहां पे, काफी शार्प गेम थी। बाय द वे गुकेश ने अब तक पॉन नहीं मारा, सो इट्स ओनली बिन 8 मूव्स एंड ही हैज ऑलरेडी यूज्ड ऑलमोस्ट हाफ हिज टाइम. So already we are going towards huge time pressure for Gukesh. हमने जैसे देखा 94 is indeed possible. It's a complex variation after 94, knight d4, but it has to be played. और भी कुछ खेल सकते हैं, b4 खेल सकते हैं to start attacking, gaining space on the queen side already. But अभी चूज करना पड़ेगा बहुत जल्दी, समय की कमी. Please talk in Marathi. काय झालो? थैंक यू फॉर किलिंग. ये क्या है भाई? अरे आम्ही बोलू शकतो ना बाय टिकू बाय, मराठी क्या बोलू शकतो. क्या बोल सकते भाई? इतना आता है मुझे, बस 2 रुपए का आता है भाई. विशी डजंट हैव अ बियर्ड. आई एग्री मैन, बियर्ड से कुछ नहीं होता भाई. कोहली की बियर्ड है और मोदी जी की बियर्ड डजंट मीन कि भाई हमारी भी होनी चाहिए. कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन. यू लुक लाइक शिनचैन. भाई शिनचैन होगा तो यार, इवन शिनचैन गेट्स लेडीज भाई. आई डोंट. दैट्स द प्रॉब्लम. Knight h4 for Pragg. Knight h4. It's not a good move because bishop can go back to h7 and also e6 and also h3. So it's kind of forcing black to do something he anyway wants to do. So I would not go for knight h4. We are putting pressure on the e5 pawn. Let's not remove that pressure. Let's keep the pressure there. भाई आप मेरे दोस्त की तरह दिखते हो, शाउटर दे दो उसको. हेलो मिस्टर टेली, कैसे हैं आप? आपके प्रोड्यूसर का स्ट्रीम डेक है भाई? स्ट्रीम डेक है क्या आपके पास? संजय भाई नहीं है ना आपके? स्ट्रीम डेक नहीं है ना? नहीं नहीं भाई, कोई चैट वाला अगर स्पॉन्सर कर रहा था तो बढ़िया है. तो ऐसे ही बोल रहा था. स्ट्रीम डेक की जरूरत नहीं होती यार, मेरे पास भी स्ट्रीम डेक कभी था नहीं जब मैं भी स्ट्रीम करता था. इट्स फालतू की चीज. ऐसा बहुत गरीब स्ट्रीमर बोलते हैं भाई. भाई मेरी भी चैट पढ़ लो. पढ़ ली भाई. निरंजन दादा मराठी, ये क्या है भाई? ब्रो बोर्ड्स है, क्या करूं भाई? फेल हो जाओ यार. ये वीडी चलता क्यों नहीं है? कैन वी हैव फुल स्क्रीन? ये वीडी क्या क्या एंगल में सोच के ऐसे करके बैठा हुआ है भाई? ये क्या चल रहा है? व्हाट इज दिस एंगल? भाई टेबल साफ कर रहा है वीडी यार. भाई भाई मूव, चलो भाई मूव. भाई वीडी ने स्पाइक्स बनाया भाई. बाल तो मस्त है यार, लेकिन साहिल डू यू टीच चेस? दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ भाई. साहिल भाई आप फैंस क्यों नहीं ज्वाइन करते? नहीं भाई, मेरे मेरे फैंस बहुत कम है भाई. 4 फैन है कुल मिला के, 4 कमरों में लगे हुए घर पे. भाई ये प्लेयर कौन है भाई? दिस प्लेयर हुएवर ही इज, ही जस्ट कीप्स मूविंग फॉरएवर. कौन है भाई ये प्लेयर जो पीछे मूव कर रहा था? अरे उबासी आते हुए, अरे बड़ी सी उबासी वीडी की भाई. बटन खुल गए शर्ट के, शायद उबास लेते थे, पता नहीं. अभी भी चल नहीं रहे हैं वीडी, अभी भी सोच रहे हैं. लेट्स गो बैक टू द गेम, लेट्स गो बैक टू द बोर्ड. Yup. Come on, yaar. Come on. We need some game. We need some moves to analyze. Come on, Vidi. Play faster. Faster moves. Come on. So by the way, going to the game of Pragg. Okay, Pragg, sorry. Gukesh, I mean, he has taken on e4. He has taken on e4. The game will be sharpened up now once he plays knight d4. बहुत कुछ खुलने वाला है, बहुत कुछ फटने वाला है बोर्ड पे. क्या होगा, कौन जीतेगा पता लगेगा. चैट, लेट्स गो. Update Arjun game. Arjun won his game 3 against Anish Giri. और क्या खेला अर्जुन ने आज. ब्लैक पीसेस से पेला अनिश गिरी को और वो इंडिया नंबर 2 बन चुके हैं फिर से. ही इज 2750.8. चेसकॉम इंडिया के सब्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं भाई. 209 था, 238 हो चुका. बिल्कुल भाई, हमारी बढ़िया स्ट्रीमिंग के थैंक्स की वजह से हमारे सब्स बिल्कुल नहीं बढ़ रहे हैं भाई, वो शॉर्ट्स की वजह से बढ़ रहे हैं भाई.
कम ऑन विद शो कार्लसन गेम। कार्लसन को बुलाता हूँ अभी, रुको कार्लसन भाई चैट बुला रही है भाई, प्लीज कम एंड प्ले सम गेम्स। मेरे साथ खेल लो, किसी के साथ भी खेल लो, आ जाओ भाई, जल्दी से आ जाओ भाई, मैं समोसे तैयार है आपके लिए गर्मा गर्म। Appreciate the commentary in a way it's bringing us joy and learning chess. Thank you यशवंत भाई, hopefully you're learning something. वीडियो के साइड में लड़की, अबे यार ये भाई मनीष भाई कितने साल की हो भाई आप, जरा अपनी उम्र लिखे चैट में भाई, जल्दी से उम्र लिखे भाई। एस्ट्रो भाई तुमसे कौन बोल रहा है? एस्ट्रो भाई तो अपना प्रमोशन करने हैं भाई, शादी प्रमोट कर रहे हो। बहुत कुछ खुलने वाला है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नो ही विल प्ले नाइट D4 100%। भाई खेल सकते हैं भाई, नवारा भाई को जानते नहीं है, खतरनाक प्लेयर है नवारा जी। ऐसी मूव्स तो उनके छोटी उंगली का कमाल है भाई। कार्लसन को हिंदी आती है भाई, मैंने सिखाई थी यार। हाउ डू यू थिंक आई गॉट माई, ये महंगा कैमरा कैसे खरीदा? मैंने ऐसे खरीदा है, कार्लसन को हिंदी सिखा सिखा के। $12 एन आवर। साहिल भाई निरंजन भाई का फुल नेम क्या है? निरंजन नवलगुंड है उनका पूरा नाम, स्टॉक मत करना प्लीज। हे रेगुलर जी कैसे हैं आप? रेगुलर नहीं है आप लेकिन। रुक E1 और पॉन G5 भाई, ये क्या पोजीशन भाई, क्या भाई क्या, कहां रुक E1? आई थिंक वीडियो गेम में कह रहे हो आप। आपकी पोल भी खुल जाएगी भाई, पोल तो अभी ओपन ही है भाई, ऐसे भी प्रग विंस 45%, वीडी विंस 32%, तो पोल तो ओपन ही है भाई, खुला हुआ है पोल। फिर सीईओ ने बोला है विदित की जगह एसी पेंगो को लेंगे, हमें वीजा का ठेका नहीं लिया है। भाई फिडे के हाथ में ये चीज है ही नहीं, ऐसा होगा तो हम दंगे कर लेंगे भाई, दंगे कर लेंगे हम। निकू भाई ये क्या है? निखिल भाई तुम चैट पर लिखते हो पब्लिक स्पेस है, कोई रिस्पॉन्स कर सकता है, ये क्या है भाई? Will Anish be with second the candidates? I think he already might be. That's my guess. If Arjun wins tomorrow, he will reach top 10 for the first time. I agree. The guy is James Santos Latasa. अच्छा वो है क्या? Interesting. I have visited the town of Navalgund near Hubli. Oh wow. शिवा भाई आपके टाउन में रहते हैं भाई? कह रहे हैं तू पागल है। अरे मैं पागल दीवाना सब हूं भाई, क्या करूं यार, बस वैलेंटाइंस डे गया था रिसेंटली, उसका असर है। What about QGB? भाई QGB क्या है भाई? हिमांशु जी you should see Emil's latest tweet then. रुकी वन पॉन्जी 5। भाई एक सेकंड रुको, पहले चलते हैं वापस गेम में, क्या हुआ है? 9 का कुछ भी नहीं चला है उन्होंने, कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। भाई ये क्या चल रहा है यार? नवारा स्पेंड 30 मिनट्स एंड प्ले रुक E8 टू प्रेशर द सेंटर। भाई रुक E8 क्या चाल है भाई, फिर तो फ्री का पैदा मिल गया ना हमें। अगर नवारा जी यहाँ रुक E8 खेलते हैं तो वी बेसिकली वन अ पॉन फॉर फ्री। नाउ आई कैन प्ले पॉन टू D3 डिफेंड द नाइट एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो फिर तो गुकेश भाई जीतने की कगार पे खड़े हैं। सो आई थिंक ये रुक E8 नहीं खेल सकते वो, ही हैज टू फाइंड समथिंग एल्स। राकेश भाई कहाँ है? दिन से दर्शन नहीं हुए उनके, भाई बुलाएंगे राकेश भाई को, बुलाएंगे यार। राकेश भाई अभी, आई थिंक राकेश भाई अभी जर्मनी में है, तो वो आएंगे इंडिया वापस अभी बहुत जल्दी, एक हफ्ते में, तो फिर वो हमें ज्वाइन कर सकते हैं भाई स्ट्रीम पे। ये विनोद जी कौन है? स्टडी हब जी थोड़े से सेंटी हो गए हैं। टिक्कू वर्सेस सागर वर्ल्ड कमेंट्री चैंपियनशिप। भाई उनकी वॉचिंग हमसे 10x से 5 के बीच में रहती है, तो आई डोंट नो कि ऐसी कौन सी चैंपियनशिप होगी भाई। गलत है भाई, चीटिंग वाली चैंपियनशिप हो जाएगी ये तो। कार्लसन का कोच पीएच ने बोला है इंडियन प्लेयर की वजह से कैंडिडेट शिफ्ट नहीं करो कैंडिडेट्स। कहां लिखा है भाई? वेयर इज दैट ट्वीट? रियली डिड ही से दैट? मतलब ऑफ कोर्स आइडियली दे शुड नॉट शिफ्ट द कैंडिडेट्स, दैट्स नॉट द गो टू ऑप्शन। बट अगर ऑप्शन ही नहीं है कोई, सो ऑफ कोर्स देन दे हैव टू शिफ्ट। लाइक ऐसा नहीं है कि भाई प्लेयर रिप्लेस कर दे, दैट कैन नेवर एवर 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 हैपन। आई होप इन दिस टूर्नामेंट इंडियंस डोंट। फेवरेट ओपनिंग कौन सी है? लंडन सिस्टम है भाई, लंडन सिस्टम इज माय फेवरेट ओपनिंग। भाई कहां लिखा है उन्होंने यार? ऐसा कुछ लिखा ही नहीं उन्होंने। आई कांट फाइंड एनी सच ट्वीट। बाय द वे गोइंग टू द गेम ऑफ Pragg अगेंस्ट वीडी अगेन, कुछ भी नहीं खेला है वीडी ने। व्हाट इज ही डूइंग? भाई चल क्या रहा है यार, इतना स्लो क्यों है? बाय द वे पीटर हाइन ने ट्वीट तो किया है, सो इज द रिजर्व फॉर नेपो, एसिपेंको द रिजर्व फॉर विदित, एरिगेस इज द रिजर्व फॉर एसिपेंको, द रिजर्व फॉर एसिपेंको, देन डोमिंगेस गिरी केमर।
towards visa issues. Yeah, I don't think so. They're going to replace players. That's not happening. I don't think so. I don't think so कि कोई ऐसा कुछ होगा भाई. If the players are not able to make it, they will change it. They will change the location because at the end it was Fidet's responsibility, I think. ऐसा मुझे लगता है. So they will not really have replacements. That's not really how it would work. ऐसा मुझे लगता है. Can you beat Magnus? नहीं भाई. कल के मैच के रिजल्ट्स भाई कल सारे ड्रॉ हुए थे यार. आज का मैच बाय द वे बहुत क्रेजी होगा because Vidit is really taking a lot of time. I don't know what's happening. I mean, there are logical moves. Rook f8. Why not rook f8? What's wrong with rook f8? If knight c5 attacking the queen, we can just chop this off. And agar pawn takes, so this is not really a big problem for VD. Yeah, bishop h3. Let's exchange the bishops. Has he played bishop h3? Also an excellent move. Trying to exchange this. You can see the bishop moving to h3, and he presses the clock. Finally, move played. But he's already 30 minutes behind. This is going to be extremely difficult for Vidit now. दुबई में करो कैंडिडेट्स भाई. दुबई तो मुश्किल है. आई डोंट थिंक दुबई इज अ बिग चेस नेशन जो ऑर्गेनाइज करने के लिए बिड भी करेगा. एंड फिडे ने ऑलरेडी बोला हुआ है आई थिंक कि नेक्स्ट स्टॉप इज स्पेन. आई थिंक अगर बाय चांस ये नहीं होता है तो. come on who's your favorite chess player? Favorite chess player would be Magnus Carlsen. In terms of pure chess play, overall personalities को अनीश गिरी होगा. आप किस जीएम को हरा सकते हो यार? बहुतों को हरा सकते हैं यार. कोई तो ऐसा घिसा पिटा जीएम होगा भाई 2223 रेटिंग वाला. हिकारू ने कहा कि लर्नर सिस्टम इज बैड. भाई हिकारू है भाई. हिकारू की रेटिंग 3400 है chess.com पे. सो उसके लेवल पे जो ओपनिंग काम करेगी वो हमारे लेवल पे शायद ना करे. दे आर थिंकिंग ऑफ चेंजिंग टू स्पेन. प्लेयर्स चेंज नहीं होंगे. मैंने ट्वीट किया था एग्जैक्टली. स्पेन वुड बी ऑसम मैन. आई थिंक स्पेन में चेंज होता है तो ऑसम होगा. फिर शाम को 6 बजे स्ट्रीम करेंगे भाई. क्या मस्त फील आएगी भाई. शाम को 6 बजे परफेक्ट टाइमिंग है. कहां भाई रात को 1 बजे जागना पड़ेगा मुझे वरना. साहिल कैन बीट पाकिस्तानी जीएम. भाई एक ही पाकिस्तानी जीएम है दुनिया में और वो भी बेचारा बहुत पहले. सो आई डोंट थिंक सो दैट्स हाउ इट वर्क्स. विदित ने रहा था मैग्नस को मूव नंबर 4 और 5 में इन द शॉर्टेस्ट मैच. भाई वो ड्रॉ हुआ था. लक्षद्वीप में कराओ कैंडिडेट्स. फरीदाबाद फॉर कैंडिडेट्स वेन्यू. भाई प्रखर ही ना खेल ले फिर. वर्ल्ड चैंपियनशिप में यूजुअली आई थिंक 12 गेम होते हैं यार. 12 गेम्स आई थिंक. 6 white 6 black से. By the way, Pragg now thinking, I think this rook c1 seems like the most logical move. Usually you don't take this because then knight g4 आता है and there are mating ideas. So you just allow black to take and you take with the king and control the h3 square. So rook c1 feels very logical. Black might just take, king takes and then just मतलब rook fe8, rook d8 and काफी solid chess खेलना है black को. And अगर वो बिशप मार भी देता है अब उतनी प्रॉब्लम नहीं है because white के पास बिशप पेयर नहीं है. So it should be okay. बिशप के बदले knight देना will not be a big deal. My favorite chess player would be Magnus Carlsen. Can we have full screen? भाई वीडी भाई को ऐसा लग रहा है कि नींद नहीं करी उन्होंने. What do you think, chat? ऐसा मुझे फीलिंग आ रहा है he is not slept yesterday. पहले भी बहुत उबासियां ले रहे थे और अभी भी आंखें रब कर रहे हैं मेरी तरह. 14 गेम होते हैं इडियट. भाई 14 गेम होंगे भाई फिर यार. चल दोनों ड्रॉ एक्सेप्ट कर लो भाई. ड्रॉ नहीं होगा भाई. दिस इज अ राइवलरी. राइवलरीज में ड्रॉ नहीं होता है चैट. ऑलरेडी एवरीथिंग इज इक्वलाइज्ड भाई. चेस गेम स्टार्टिंग पोजीशन इक्वलाइज्ड ही होती है. आई वुड से कि ये काफी इम्बैलेंस पोजीशन है. इट्स नॉट अ वेरी सिमेट्रिकल पोजीशन. व्हाइट के पास ओपन सी फाइल है. ब्लैक के पास एक सेंट्रल पॉन है. And it's going to be very, very imbalanced and both sides will try to create imbalance to win this game. ये draw होने के chances तो हैं, but ऐसा नहीं है कि मतलब it's a drawish position at all. Who is the best Indian player in the world? भाई विशी आनंद यार. हिकारू looks like ये कौन है मुझे पता नहीं है. वीजा की टेंशन में रात को नींद नहीं हुई होगी शायद. पॉसिबल भी है भाई. बिल्कुल पॉसिबल है कि ऐसा हुआ हो कि दे मस्ट बी अफेक्टेड. अपनी टीम से बात कर रहे होंगे. विदित ने कॉल लगाया होगा अपने मैनेजर को. भाई ये क्या चल रहा है. मेरा वीजा का क्या हुआ. इट्स विदित सो ड्रॉ. यार ड्रॉ वुड नॉट बी बैड विद द ब्लैक पीसेस एक्चुअली. बट देखते क्या होता है. अभी तो शुरुआत ही हुई है. इफ एनीवन wants to start his chess journey, what do you suggest him do? Two things. First, basic opening सीखो. Basic
प्रिंसिपल सीखो कि भाई पीस कैसे डेवलप करते हैं, सेंटर के बारे में. एंड सेकेंड वुड बी सॉल्विंग अ लॉट ऑफ टैक्टिक्स. रिजर्व की बात आएगी ही नहीं. आई कैन गारंटी रिजर्व की बात नहीं आएगी. अगर वीजा का इश्यू है, दैट्स फिडेस प्रॉब्लम, दे विल सॉल्व इट समहाउ. दे विल नॉट स्टार्ट रिप्लेसिंग प्लेयर्स बिकॉज बिकॉज वीजा नहीं मिल रहा है. दैट्स रिडिकुलस. देखो भाई, टूर्नामेंट पैटर्न भाई, 9 राउंड स्विस, 9 games, मैक्सिमम पॉइंट्स वाला विंस. एंड दिस इज द लास्ट टूर्नामेंट द इंडियन प्लेयर्स आर प्लेइंग बिफोर द कैंडिडेट्स. So extremely important. We saw Pragg blunder twice. So that's a clear pattern he has to solve. राहुल के पापा राहुल की, एक कौन राहुल की बात कर रहे हो भाई? No, not enough time for reserves to apply for visa and get it. No, even if there is time, it's not really fair to the players. Players की गलती नहीं है वीजा नहीं मिला तो. आई थिंक जब भी कोई टूर्नामेंट होता है, कंट्री लोकेशन फिडे डिसाइड करती है, तो दे हैव टू टेक इट इनटू अकाउंट कि भाई कंट्री ऐसी हो जो वीजा दे. भाई वीडी भाई को जूस दो, कोई भाई जूस दो, भाई जूस दो भाई, पानी से काम नहीं चल रहा है भाई का. विद को समय की याद आ रही है भाई, अभी कर लेगा स्ट्रीम भाई. टूर्नामेंट जीत गया तो स्ट्रीम करेगा फिर खूब. अगर कैंडिडेट जीता तो वर्ल्ड चैंपियन बनकर स्ट्रीम करेगा यार. When is candidates April 4th से April 21. रंजन भाई, अगर बाय चांस मान लो कैन वी हैव द बोर्ड, मान लो कि कैंडिडेट स्पेन में शिफ्ट हो गया, तो कितना सही होगा ना यार. शाम को 6 बजे स्ट्रीम स्टार्ट करेंगे और 11 से लेके 12 तक स्ट्रीम खत्म हो जाएगी. मतलब क्या ही एपिक टाइमिंग है ना, इंडिया के लिए परफेक्ट है वो टाइमिंग, राइट? अच्छा रंजन भाई है ही नहीं क्या भाई? हाँ तो क्या लगता है भाई, डोंट यू थिंक दैट्स अ ग्रेट टाइमिंग? 6 बजे आएंगे आराम से स्ट्रीम करने, और सारे लोग घर आएंगे और सारे मैच देखेंगे, फिर कितना फील आएगी ना. हाँ भाई, मैं तो सीक्रेटली प्रे कर रहा हूँ. सीक्रेट तो रहा नहीं भाई, आपने स्ट्रीम पे बोल दिया. हाँ, सीक्रेट. हमारी जनता है ना, तो सीक्रेट रखेंगे. हाँ 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 हाँ. लुक एट प्रग बॉटल. भाई प्रग बॉटल में क्या देखना है भाई? बॉटल कहाँ है प्रग की? दिख ही नहीं रही भाई, मेरे को सिर्फ वीडियो का ग्लास दिख रहा है. आप बोटेस को हरा सकते हो क्या? मोस्ट लाइकली यस भाई. विल अर्जुन प्ले कैंडिडेट्स? नो, ही इज नॉट प्लेइंग द कैंडिडेट्स. इंडो कनाडा कॉन्फ्लिक्ट को देखकर नहीं लगता भाई, ऑनेस्टली यार. देखो पता है, आई वांट एवरीथिंग टर्न आउट परफेक्टली, बट अगर स्पेन में होता है आई विल बी वेरी हैप्पी, बिकॉज यार रात को 1 बजे ना कैंडिडेट्स देखने में कितने लोग आएंगे? इट विल नॉट बी दैट हाइप. एंड 3 इंडियंस खेल रहे हैं. इट इज सो सैड कि आज तक आई थिंक कोई ऐसा टूर्नामेंट नहीं हुआ, इतना हाई क्वालिटी टूर्नामेंट की जो रात को 1 बजे हो, और पहली बार हो रहा है और उसी में सारे इंडियन है. सो इट्स काइंड ऑफ अनफेयर. तो इट्स लाइक भगवान सुन रहा है भाई, तो क्या पता कर दे यार, हु नोस. क्रिकेट में फेवरेट कौन है भाई? कोहली भाई, कोहली भाई. इसमें तो वी कांट रियली से, विल यू गो टू स्पेन टू स्ट्रीम? नहीं यार, अगर स्ट्रीमिंग करना है तो फिर देयर इज नो पॉइंट ऑफ गोइंग टू स्पेन. नो, या अगर कमरे में ही बैठना है तो व्हाई वुड वी गो टू स्पेन? मेक्स नो सेंस. बट यू नेवर नो भाई, अगर स्पेन में हो तो कुछ भी पॉसिबल है, बिकॉज पास में है. पास मतलब पास इज द रॉन्ग वर्ड, मतलब रिलेटिवली क्लोज है, मतलब रिलेटिवली क्लोज है. कनाडा तो भाई धरती के अलग कोने में भाई, को ड्रिल करके जाना पड़ेगा. Rook C1 should be incoming. I don't know why is he not playing this actually. Rook C1 is very logical. Queen C2 is another alternative, but I think Rook C1 is a new piece जो डेवलप कर सकते हैं. क्वीन ऑलरेडी यहाँ पे डिफेंड कर रही है इसको, so क्वीन कैन लेटर गो टू B3 also, especially because बिशप एक्सचेंज हो रहे हैं. कनाडा हॉस्टाइल कंट्री मुझे पता नहीं, मुझे इतना पता है कि यार थोड़ा सा कुछ टेंशंस तो थे दोनों कंट्रीज में, सो वीजा के इशू होंगे. एंड नॉट ओनली इंडियंस बट आल्सो रशियंस, बाय द वे, नॉट टू फॉरगेट, वॉर चल रही है अलग सी. सो रशिया और इंडिया दोनों के वीजा मिलना मुश्किल है. एंड 50% ऑफ पीपल कंबाइंड आर फ्रॉम इंडिया एंड रशिया. सो इनके बिना तो टूर्नामेंट हो नहीं सकता. धोनी नहीं है भाई. आई थिंक नंबर 1 विराट है मेरे लिए, और नंबर 2 पे सचिन एंड धोनी टाइड होगा. बट विराट इज 1% अहेड यार, 1% अहेड. The rains in Spain fall mainly in the plains. The rains in Spain fall mainly in the plains. अरे यार सच में टंग ट्विस्टर है. The rains in Spain fall mainly in the plains. The rains in Spain fall mainly in the plains. The rain in Spain falls mainly in the plains. The rain in plains. अरे यार हटो यार, कंफ्यूज कर दिया मुझे. Can Vidit Magnus? He has done it before and he can do it again. Absolutely. ना कनाडा ना स्पेन, अपना फरीदाबाद पलवल ही सही है भाई. इंडिया में मैच नहीं सकते. नहीं यार मुश्किल है. आई थिंक फिडे ने ऑलरेडी कोई स्पेन से बात करनी पीठ पीछे स्टार्ट कर ली होगी ना. बिफोर पुटिंग आउट दिस ट्वीट दे मस्ट बी ऑलरेडी बीन इन टच विद स्पेन कि भाई अगर नहीं हो पाता है
then can we ult in Spain, जो मुझे समझ में आ रहा है. Vidi's one knight is worse than Ding's. ये क्या है भाई? Oh, by the way, something has happened. Rook C1 played by Pragg. So he finally puts the rook on the open file. And yeah, now we'll see knight C5 incoming. And Vidi की move तो बहुत obvious है. He should just chomp the bishop on G2 without thinking much. He's way low on the clock. I don't know, chat. उनको खेलने हैं पूरे 26 moves in 45 minutes. It's not easy because this is not a simple position to play. And I think वो already हाथ उठा रहे हैं. मार देंगे G2 पे अभी की अभी. He's already thought of this. So मार दो भाई, सोचो मत. Can Earth have corners? बिल्कुल भाई, Earth can have corners over localized distances. Oh no, he does not take on G2. He's about to touch his A rook. रुक कंफ्यूज है भाई, हाथ लगा रहे हो कि नहीं लगा रहे हो मुझे अभी बताओ. कंफ्यूज है बेचारा रुक. भाई लगाओ ना हाथ. ये रुक को समझ नहीं आ रहा है भाई, मुझे चलना है कि नहीं चलना है. ये भी मेरी तरह है भाई, कैंडिडेट्स में मुझे स्ट्रीम 6 बजे करना है, 1 बजे करना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है. फाइनली भाई रुक के D8 on the board. Again, extremely logical move. This also sets up E4 sometimes. There can be some tactics on the D file. विदित खेलते ही बोर्ड से उठते हैं, जूस लाने गए हैं शायद, मुझे लग रहा है. आई थिंक ड्रॉ. आई डोंट थिंक सो यार. वीडी का टाइम बहुत कम है. अगर टाइम इतना डिफरेंस है 20 मिनट से ऊपर, सो प्रग विल नॉट अग्री टू अ ड्रॉ. ही विल पुश बिकॉज ही नोज कि टाइम पे बहुत आगे है. ही ऑल्सो हैज द वाइट पीसेस. आज की पेपर में परसों के चेस रिजल्ट प्रिंट थे. क्या बात कर रहे हो भाई? फोटो चेस को मिल गया, कैंडिडेट ब्रैम्पटन में ही होगा भाई. फोटो चेस इज नॉट अ प्लेयर दो. इफ शी गेट्स द वीजा डजंट मीन कि बाकियों को मिलेगा. फोटो चेस इज नॉट फ्रॉम रशिया, शी इज नॉट फ्रॉम इंडिया. वेयर इज शी फ्रॉम? डू यू नो वेयर इज शी फ्रॉम? Russia. Which country? She's from Russia, really? Are you sure about this? Yes. Oh, then maybe it might happen. फिर हमें जागना पड़ेगा. No, I'm not sure what. She probably has changed her federation. I'm not sure which one. Right. Oh, वही ना. तो maybe she has. I should check this, yeah, which federation she is placed for, because that might be important. अगर उनको मिल गया है, so बाकियों के भी मिलने के पूरे पूरे chances हैं. Let me just check her federation quickly. This might be important, chat. This might be extremely important. FIDE. खोल के देखते हैं. She plays for England. Exactly. So she doesn't play for Russia, and that means कि her visa does not count. The problem is for the Russian and Indian players. Juice is the secret of VD's energy. बिल्कुल सही बोला आपने. Orange juice to be specific. यो सार्थक टंडन भाई, क्या हालचाल? टंडन का बंधन कैसा चल रहा है? गूकी गेम हमने काफी टाइम से देखी नहीं, जल्दी से वहां चलते हैं एक बार. सो गूकी गेम हमने 94 देखा था. एंड चैट, मैंने क्या बोला था भाई? मैंने क्या बोला था? हमारे निरंजन नवारा भाई बिल्कुल भी मतलब शांति से नहीं बैठते. आग लगाने विश्वास रखते हैं बोर्ड में और एकता कपूर के सीरियल में. तो उन्होंने खेला 94 एक्सक्लेमेशन मार्क. कहा रानी हेलो कैसन बा? तो रानी ने कहा यार मुझे मत अटैक करो, मैं क्वीन D3 आती हूं. और बिशप टेक्स E4 मार दिया उन्होंने. इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि बिशप से मारा, मुझे लगा घोड़े से मारेंगे. और ऑफ कोर्स यहां पे उन्होंने यहां मारा. अगर वो बाय चांस घोड़ा मारते तो C5 के बाद क्वीन बेचारी ट्रैप्ड है, कोई स्क्वायर नहीं है. सो दैट माइट हैव बीन द आइडिया. नाइट से मारा उन्होंने और यहां पे आता है क्वीन टेक्स C4. और आई थिंक क्वीन टेक्स C4, नाइट टेक्स C4, e takes D4 will be the final position, chat. व्हाइट के पास एक्स्ट्रा पॉन बट ब्लैक फुली डेवलप्ड और व्हाइट का डबल पॉन. सो इंटरेस्टिंग रहेगा देखने के लिए गुकेश कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं. आई वुड से गुकेश शुड हैव अ क्लियर. ओ यू डोंट टेक ऑन E4. इंटरेस्टिंग, वी टेक ऑन D4 एक्चुअली. बिल्कुल सही, बिकॉज द नाइट इज नॉट ऑन E4 नाउ. सो एक्स्ट्रा मूव. रुक E8 चेक पे, बिशप E2. व्हाइट हैज द बिशप पेयर. निरंजन भाई, आई थिंक व्हाइट शुड विन दिस गेम. आई नो डबल पॉन है, बट बिशप पेयर भी है और पॉन अप भी है. हाउ इज दिस जस्ट प्लस 0.3? I think it's 0.3 because the rooks and then the bishop, they're all sleeping.
तो अभी जगा देंगे भाई उनको, अलार्म बजा, ट्रुन ट्रुन उठो भाई। आई थिंक दिस इंजन इवैल्यूएशन इज नॉट मतलब करेक्ट। 4 मूव्स तो लगेंगे भाई उठाने के लिए, वही तो प्रॉब्लम है। हाँ हाँ, there might be some particular move variation, for example knight e4 d3 knight d6 followed by knight f5, I don't know, to try to get to this pawn, and because of that particular variation it might be close to, you know, a plus 0.5, but regardless practically it does seem like Gukesh is pushing. So देखना पड़ेगा, गेम में टाइम थोड़ा कम है उनके पास. Going back to the VD game, what has happened? Nothing yet from Pragg, so he has to play fast if he wants to put pressure on the clock on VD. रूक्स एक्टिव नहीं है बट हो जाएंगे भाई, बहुत जल्दी हो जाएंगे अमंदर भाई. भाई क्या क्या ड्रामा है मुझे बताओ भाई. क्या फिडे ने कहा है कि कनाडा में वीजा नहीं मिल रहे, वीजा नहीं मिल रहे प्लेयर्स को, स्पेशली आई थिंक इंडियन और रशियन प्लेयर्स की ज्यादा प्रॉब्लम है. और अगर ऐसा है तो अगर एक हफ्ते के अंदर सबको वीजा नहीं मिलते तो इमीडिएटली कैंडिडेट शिफ्ट हो जाएगा स्पेन में, और निरंजन भाई और मैं अपने अपने घर में डांस करेंगे. भाई इंडियन एक्सप्रेस ने वीजा इशू पे ऊपर आर्टिकल निकाल दिया टिक्कू भाई, अरे क्रेजी. तो लगता है कहीं सच में वीजा निकल ना जाए निरंजन भाई. जो भी इंटरेस्टिंग है. होगा चैट बाय द अच्छा। वे व्हाट डू यू वांट, चैट से पूछते हैं फिर निरंजन से पूछूंगा. व्हाट डू यू वांट, डू यू वांट इट टू बी हेल्ड इन कनाडा जो अभी है, और डू यू वांट कि स्पेन में हो? अब बताओ निरंजन भाई. स्पेन स्पेन। आप कुछ और करे थे क्या इससे पहले? नहीं, मैं बोल रहा था जो भी होगा अच्छा ही होगा। जो भी होगा अच्छा ही होगा, चलो देखते हैं भाई. स्पेन में होगा तो इंडियंस देख सकते हैं क्या? बिल्कुल भाई, रात को 6 बजे मैच होगा तो बड़ा मजा आएगा. Why did Magnus withdraw from candidates? Because he does not want to be the next world champion. He already gave up the title. ये कनाडा अलग एटीट्यूड दिखा यार. अब क्या बोलूं मैं यार. स्पेन स्पेन बैंकॉक, आई डोंट थिंक सो भाई थाईलैंड में होने वाला है. कहीं भी हो जा तो नहीं सकते बट भाई देख तो सकते हैं ना. अगर स्पेन में होगा तो शाम को 6 बजे मैच होगा, अगर कनाडा में होगा तो रात को 1 बजे होगा भाई. रात को सोने को मिलेगा. एग्जैक्टली exactly. स्पेन मैक्सिमम चैट भी स्पेन के लिए फुल सपोर्ट में है भाई. कनाडा कह रहे हैं गुरसीरत कौर जी आप भी कनाडा जा रहे हैं क्या? Want to watch Canada 2 a.m. It would be new experience. By that's another take on it. Candidates must be in Moscow. No, not in Moscow भाई. मैं तो 5 बजे सोता हूं. तो अथर्व भाई तो एक ही वॉचिंग तो कंफर्म है भाई. अथर्व भाई तो आएंगे भाई. टोरंटो होगा तो सारे ब्रैम्पटन वाले आ जाएंगे प्रोटेस्ट करने. ब्रैम्पटन वाले कौन है भाई? गोवा के बीच पे. आहा भाई श्लोक भाई ने असली निकाला भाई, बीच वेडिंग मतलब असली. मिखाइल ताल भाई खतरनाक प्लेयर है भाई, ऐसा कंफ्यूज करते थे ऑपोनेंट बीमार पड़ जाते थे यार. पेयरिंग्स कैसे डिसाइडेड? बाय ड्राइंग ऑफ कलर्स होगी, बहुत जल्दी आएगी वो भी पेयरिंग्स. नेवर माइंड स्पेन. टाइम सुनते ही अच्छा यस सर गुरसीरत भी कनाडा ही जा रहे हैं. बढ़िया भाई, मजा आ जाएगा. इंडिया में नहीं होगा यार, इंडिया में कोई चांस नहीं है अपेरेंटली. वी डोंट नो फॉर श्योर यार, कुछ भी पॉसिबल है बट इंडिया में कम चांस. बिहार में करना है तुम्हें भाई, बिहार में. लेकिन वो मैंने एक वीडियो देखी थी यार, जहां बोर्ड एग्जाम के टाइम पे लोग खिड़की पे चढ़ चढ़ के उनको आंसर बता रहे थे. तो ऐसा ना हो कि कहीं कैंडिडेट्स में चढ़ चढ़ के मुंह बता रहे हैं. 1 बजे मजे आ जाएंगे यार, मजे नहीं करने यार हमें. 6 बजे वाले मजे कर लेंगे हम. वेन्यू चीज होगा तो ऑर्गेनाइज करना मुश्किल होगा, ये तो है. इट विल बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट बट 1 महीना है, पॉसिबल टू पुल इट ऑफ. टिकू भाई के घर पे करवा लो यार. मेरे घर 3 BHK अपार्टमेंट है, उसमें तीनों बेडरूम है, कोई कोई रहता है यार, तो मुश्किल है भाई, मुश्किल है 8 लोगों का मैच करवाना. आज का चैलेंज भाई, आज का चैलेंज तो भाई 369 लाख पे होगा ना. अभी तो बहुत दूर हो तुम लोग. ये अभिजीत की क्या हाल चाल है भाई? यार कामत है आपका सरनेम है तो मतलब यार आपको तो बैंक बैलेंस बढ़िया होगा यार. कुछ तो होता होगा ना. मान लो एक बंदे का नाम टाटा बिरला है तो दूसरे बंदे का जो बिरला है तो ऑटोमेटिकली वो बंदा अमीर होता होगा, मुझे लगता है. ऐसा मेरा थ्योरी है कि अगर आपका सरनेम बिरला है तो आपको लाइफ में लोग इतना टॉन्ट करेंगे कि आप अपने आप अमीर बन जाओगे भाई. बाय द वे चैट स्टिल थिंकिंग प्रग कह रहे हैं विदित भाई टेंशन मत लो, टाइम बराबर करके रहेंगे हम. नो स्ट्रेस विदित भाई, अपन तुम भाई 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 हैं. बोल्ड प्रिडिक्शन आइदर प्रग और फिरूजा विल विन द कैंडिडेट्स. भाई प्रिडिक्शन बड़ी है, अगर फ्यूचर का नाम अगर वहां से हटा दो हटा दो. मुकेश भाई को तो दिखाओ. चेस बोर्ड विल गो मिसिंग इफ इट हैपेंस इन. अरे यार
ऐसा नहीं है, हम तो जोक कर रहे थे यार, हम तो जोक कर रहे थे यार, जोक्स. By the way, chat. Oh, he took on e4. Interesting choice. Knight takes and now he takes d4. So interesting choice by Gukesh, allowing the extra tempo. So एक pawn up है chat और bishop pair भी है. So white is kind of looking good. अगर जल्दी से डेवलप कर ले तो आई थिंक white ये गेम आराम से जीत सकते हैं. So देखते हैं क्या होगा यहाँ पे. टाइम थोड़ा सा चक्कर तो है. गोइंग बैक टू विदिट्स गेम, एक नजर हम मारेंगे वैशाली की गेम के ऊपर, जो पता नहीं बार बार रिफ्रेश क्यों हो रही है. फिलहाल के लिए रफली बैलेंस्ड. यहाँ पे C5 स्क्वायर बढ़िया बनाया उन्होंने. किंग साइड पे अटैक की तैयारी कर रहे हैं. सो काफी बैलेंस पोजीशन, बोथ साइड विद सम चांसेस. एक्यूरेसी 98.3 दोनों प्लेयर्स की. गोइंग बैक एंड फाइनली क्वीन C2 खेला है प्रग ने. So he gets out of this, tactical themes, and I think knight C5 coming on the board any time now. Bishop से मारेंगे, queen से मारेंगे, and उनको bishop for knight मिल जाएगा. Pragg is super strong, but VD is ghosted. He's all-round beast. The time difference is losing. Vishibai is vice president of FIDE, if I'm correct. Indian प्लेस का वीजा प्रॉब्लम हो गया तो एक्शन लिया जाएगा. अरे वाह भाई, पर गवर्नमेंट पे एक्शन कैसे लोगे कनाडा की? What has more chance? VD winning candidates, RG being PM. VD winning candidates भाई बहुत गुना. That's my guess, based on what I understand about politics. I'm an extremely non-political person भाई. इतना मेरा कोई फैन नहीं हो भाई किसी भी उसका. पाकिस्तान में मत कराओ. पाकिस्तान में कैसे होगा भाई? कोई चांस ही नहीं है. इंडियन प्लेयर्स तो जा ही नहीं पाएंगे. पाकिस्तान तो ओलंपियाड में खेलने भी नहीं आया था. डू यू रिमेंबर निरंजन भाई, जब पाकिस्तान टीम वाज सपोज्ड टू अराइव फॉर द ओलंपियाड एंड दे डिडंट शो अप. यार लास्ट में विड्रॉ कर लिया था उन्होंने. आई रिमेंबर. हाँ भाई मुझे याद है. सो आई डोंट थिंक पाकिस्तान में होगा भाई. विदित क्या कर रहा है? ही इज रोमिंग. अरे भाई, रोमिंग इज फ्री नाउअडेज, सो वी इज अलाउड टू रोम भाई. दैट्स द बेनिफिट. इट्स कंप्लीटली फ्री थैंक्स टू जियो. विदित मैजिक विल वर्क. अरे भाई, कौन सा मैजिक करने वाला है? होपफुली वेग देसाई से मैजिक नहीं सीखा, वो सुहानी से सीखा है. वेरी डिप्लोमेटिक फॉलो अप फॉर अ स्ट्रेट आंसर. लमाओ डिप्लोमेटिक नहीं है यार. मुझे पॉलिटिकल और रिलीजियस क्वेश्चन पसंद नहीं है, बिकॉज आई एम नॉट, आई डोंट, मैं वो डिबेट्स नहीं करता कि भाई डू यू थिंक आरजी और एमडी, डू यू थिंक, ये मैं डिबेट करना मुझे पसंद ही नहीं है भाई, क्योंकि लोग काफी सीरियस होते हैं इन टॉपिक्स के बारे में यार. बहुत सीरियस हो जाते हैं यार बहुत जल्दी. पता ही नहीं लगता भाई, पता नहीं असल में दोनों पार्टियां अरबपति है, हम लोग डिबेट करते हैं भाई फालतू में, पता नहीं क्यों. Who has won the most world championship ever? I think it is Kasparov with 6 world championships. That's my thing. I think my guess. By the way, Vidit plays a logical move, rook f8. And now all his pieces are developed. Why are they red? They need to be yellow. So all his pieces are developed. White ke sare pieces are also developed. Maybe the rook can be pushed to d1. That's the only piece remaining. So yeah, I mean, now they have to reveal their cards. What are your plans, buddy? What are your plans, long-term plans here? Where do you see yourself in 5 moves from now? आपके तो नाम में ही एनएम है. नाम नहीं है भाई, वो एनएम टाइटल है मेरा यार. एनएम साहिल मेरा नाम नहीं है, साहिल नाम है और एनएम टाइटल है भाई. जल्दी एंड गेम में आओ तब मजा आएगा. विद दिस गुड एग्जांपल ऑफ अपना टाइम आएगा. बिल्कुल भाई बिल्कुल, ये बात सही है भाई. क्या कमबैक किया है भाई वीडी ने पूरे क्वालिफाई करने के लिए कैंडिडेट्स के लिए. बाय द वे, इस गेम में आफ्टर 94 रूक e8 वाज प्लेड, थ्रेटनिंग सम स्कैरी चेक्स विद ग्रैप्शन द रूक. सो बिशप e2 unpinning this, and now the king is free to castle. So white again better. So going to the game of Pragg against VD. अरे बाप रे भाई, चलो चलो, दोनों प्लेयर बहुत स्लो खेल रहे हैं. पाकिस्तान चेस करियर इस ये क्या है भाई? आप वोट कैसे देते हो? मैं इंटी पिंटी पॉन्टी करता हूँ भाई, ऐसे आंखें बंद करके भाई, उंगली जहां टच होती है वहां छू देता हूँ भाई. एक बार एक बंदे की नाक पे हाथ लगा दिया था मैंने गलती से. आज स्कूल में रोल नंबर क्या था? आपके स्कूल में रोल नंबर क्या था यार? मुझे याद ही नहीं है एक्चुअली. इंटरेस्टिंग. 31 शायद, पता नहीं. 31, आई डोंट नो. Emmanuel Lasker is the answer, bro. Oh, अच्छा हाँ, right, right. Maybe he's the answer. You're right. डायमंड मेंबरशिप गिफ्ट भाई रोज थोड़ी होगा भाई, और उसके लिए लाइक्स बढ़ाने पड़ते हैं भाई.
We need the likes. I'm likes hungry. Come on, bhai. Jaldi move chalo. And by the way, chat, knight c5 again, I think should be the move. And let's say knight to c5, bishop c5, queen c5. And now the thing is bishop g2, king g2. Something like this will happen. ऐसा मेरा guess लग रहा है, चाहे different move orders से. And white has this great file and some pressure. But जो space है ना, space होता है यार. There's a reason why Elon Musk is so space hungry, because space की बहुत advantages हैं यार. And now you can play queen e6, open up the rook's path. Rook d5 भी next आ सकता है यहाँ पे queen को attack करने के लिए. Or sorry, you can also play e4 to attack this knight and open the d file. So I kind of like Vidi's position. Like Pragg का मुझे कोई भी clear plan नहीं दिख रहा है. So Vidi should be happy. And by the way, rook fd1 played. So logical choice by Pragg here. Let's see what happens. चश्मे का नंबर है 2.5 2.75 आई थिंक, समथिंग लाइक दैट. मैं रोल नंबर 1. अरे बाप रे, सारी पोयम तुम सबसे पहले एक दो में गानी पड़ती होगी ना यार. आपको इरिटेट कैसे होता है ऐसे कमेंट्स पढ़ के यार? लोगों की फीलिंग से कभी इरिटेट नहीं होना चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो. पॉजिटिव भी लो, नेगेटिव भी लो, प्यार भी लो, नफरत भी लो, और खूब सारा सुपर चैट भी लो. भाई ये लाइफ में मैंने सोचा है. Pragg का ऐसे टर्नी में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है, which is acceptable also, and what I think is he must take some break and come back later. भाई ब्रेक की स्पेलिंग थोड़ी सी कुछ गलत लग रही है ईगो जी. लेजिक सर्जरी नहीं करानी. आई लाइक स्पेक्स भाई, कोई चक्कर नहीं है. ठीक भाई, एक्सीलेंट मूव खेल दिया एक, लेकिन मुझे पता नहीं वो ये मूव क्यों खेल रहा है. भाई यार कौन सी एक्सीलेंट मूव है यार? व्हाट्स योर एज, हाउ ओल्ड डू यू थिंक मना भाई? अंबानी की शादी में नहीं गए यार, अभी तो प्री वेडिंग फेस्टिविटीज है. सो हम रियल शादी में जाएंगे, थोड़ा सा क्लैश थोड़ा सा टूर्नामेंट के साथ. सो हमने कहा कि यार शादी वादी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वो तो शादी हो ही जाएगी, यहाँ पे स्ट्रीम कौन करेगा. सो दैट्स व्हाई वी आई रिजेक्टेड द ऑफर. उन्होंने भेजा था, पीजे भेजा था उन्होंने, दे सेंट अ पीजे, बट मैंने कहा कि यार वी डोंट हैव टाइम राइट नाउ. आई थिंक अब लड़कियों, अबे यार गौरव भाई, क्या भाई ये कहाँ से तुमने फैक्ट, ये तुमने जो लॉजिक कहाँ से उठाया भाई, कहाँ से आया ये तुक्का लग रहा है मुझे. ये लगता है तुम सेल्फ प्रोजेक्ट कर रहे हो यार गौरव भाई. Gukesh playing in the tournament. हाँ मैं देखा, they are live streaming on YouTube this tournament. They are not live, मतलब somebody else is streaming for them. 31 exactly. आपकी शादी हो गई नहीं यार? अभी मैं कुआरा हूं भाई. कम ऑन यार. बाय द वे आई थिंक कुछ गूगल ने, कहीं आर्टिकल पढ़ा, गूगल ने कुछ एप्स बैन कर दिया भाई. शादी.com बैन कर दिया, कुकू एफएम बैन कर दिया भाई. दुर्गाठी कितना गुस्सा कर रहा होगा अभी यार. 3 most important tips to increase the rating. Solve a lot of tactics, analyze your games, and follow our streams. That's it. Okay, वीडियो का टाइम अब बहुत कम होते हुए धीरे धीरे 40 मिनट से नीचे जाते हुए, just take on G2 buddy, just take on G2. Why not? केमर की गर्लफ्रेंड है वो टॉप प्लेयर भी. ही इज अ न्यू अनीश गिरी. यार पता है, these guys become successful in life so early. Like जब हम लोग सोचते हैं भाई स्कूल जाएंगे, फिर कॉलेज जाएंगे, फिर नौकरी करेंगे, ये लोग पहले ही करियर बना लेते हैं. सो दैट्स व्हाई आई थिंक उनकी लाइफ थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड चलती है. कम टू मॉस्को प्लीज. नहीं यार, मॉस्को नहीं आना है मुझे. हमने कराके के खिलाफ खूब ट्वीट किए हैं, और कराके नो गवर्नमेंट पे है, सो हम नहीं आएंगे. The way today Arjun has destroyed Niji Blacklist is just epic. Yeah, he crushed him and now he's again 2750 plus. So Arjun कह रहा है भाई अलग खेल रहा है, यहाँ नहीं खेल रहा, बट कह रहा है भाई मुझे मत भूलो. 1745 to 2400 1 year. It is possible, but you will need like 6 to 8 hours of practice per day. प्रखर की लड़ाई हुई, क्या बात कर रहे हो, किसके साथ? ये मुझे पता नहीं है यार. By the way, फिर से आया है भाई नोदिरबेक. यार विदित भाई अब तो जूस दे दे भाई, अब तो जूस दे दे. कब अकेला क्यों पिएगा भाई, हम लोग को पिए दे यार. मार्केट में जूस की डिमांड जीरो हो गई यार, अवेलेबल ही नहीं है. मैं नहीं देता भाई, क्या कर लेगा तू? अरे दे ना यार भाई. प्रग गुस्से में यार, मुझे भी नहीं दिया यार, इंडियन को नहीं, तुझे क्या देगा नोदिरबेक भाई? अरविंद ला भी कह रहा है भाई मैं तो चाय पी लूंगा, मुझे जूस नहीं चाहिए भाई. अच्छा ऐसा करता हूँ, मैं तुझे मुंह बताता हूँ फ्री भाई, ऐसा कर, ये खेल दे, अब तो जूस दे दे. भाई भाई मैं कुछ सोच लूंगा यार, मुझे नहीं चाहिए.
Why did Magnus withdraw from candidates? ये पुराने मैसेज कहां से आ गए भाई? फिर से अटक गया क्या? अरे अरे चैट क्यों अटकती है मेरे फोन पे? देख ले वीडियो भाई, आखिरी ऑफर है भाई, देख ले, मुंह बता दूंगा, तू मुझे जूस दे दे बस, आखिरी ऑफर, लास्ट ऑप्शन। वीडियो इस मूव में क्या सोच रहा है, और कोई मूव है क्या बेटर? आई थिंक कहीं ना कहीं पे ना हमारी क्वीन टाइट डाउन है, इट्स टाइट डाउन टू काइंड ऑफ डिफेंडिंग दिस बिशप, सो फ्लेक्सिबिलिटी कम है। सो कहीं ना कहीं वाइट मारेगा तो है नहीं, सो व्हाई नॉट जस्ट टेक दिस? ये तो मारना है ही हमें, तो व्हाई नॉट जस्ट टेक दिस? बीडी भाई 39 मिनट्स, 38 की तरफ बढ़ते हुए भाई साहब। This position is looking more promising. Can VD win Tata Steel? भाई टाटा स्टील तो उन्होंने जीतने की कोशिश पूरी करी, बट लास्ट दिन वो वे ही ने यार थोड़ा खा लिया हमें। आप बीटेक वाले हो क्या? हाँ भाई, बीई किया था मैंने भाई, बीई इन सिविल इंजीनियरिंग। By the way, one look at Gukesh's game, Bishop E2 के बाद कुछ हुआ नहीं है by David Navara. So Navara ji is trying to calculate how can I win one of these pawns. But clear path कोई है नहीं. Maybe at some point G6, Bishop G7 to grab this pawn might be the only way to get at these pawns. And then you get supported with Knight D6, Knight F5. गौरव शर्मा को महिलाओं से बहुत प्रॉब्लम है। गौरव शर्मा कौन है? Candidates can be played in Antilla as well. भाई मैंने एक वीडियो देखी नीता अंबानी की। उसमें कोई उसको हैंडशेक ऑफर करता है, वो हैंडशेक तक नहीं करती। सो क्लियरली दे आर नॉट यूज्ड टू इंटरेक्टिंग विद नॉर्मल पीपल। कोई अगर मुझे टिप्पणी दे रहा है, कृपा करके मुझे करने दे भाई स्ट्रीम। कार्लसन हैज डिंग सेकंड फॉर वर्ल्ड चैंपियनशिप। नहीं यार, कार्लसन और डिंग की इतनी दोस्ती अच्छी नहीं है, इतने चड़ी बड़ी नहीं है वो। कितने का नंबर है भाई? 2.75 आई थिंक। यू लाइक ऑरेंज? आई लव इट भाई, ऑरेंज इज ऑसम। कैंडिडेट में लास्ट कौन आएगा यार? इफ आई हैड टू टेक अ गेस, आई वुड से अब्बासोव इज द लास्ट गाय। दैट हैज टू बी इट बेस्ड ऑन माय अंडरस्टैंडिंग। चैट स्ट्रीम लाइक करो भाई, लेट्स गेट टू 300 लाइक्स, जल्दी से 300 लाइक करो। इफ यू आर हियर फॉर द फर्स्ट टाइम, डू सब्सक्राइब। गेम अभी शार्पन होने वाली है, वीडी अगेंस्ट प्रग विल बी क्रेजी। सोचते हुए वीडी, बहुत टाइम कम होता हुआ, 37 मिनट्स उनके पास, तो अब क्या करेंगे वो? चलने को राजी ही नहीं है वीडी भाई, चल क्या रहा है? लेट्स गो बैक टू वीडीज कैमरा। नवारा जी तो भाई थोड़े से कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे। बीई कौन करता है भाई, और क्यों? पता नहीं भाई, गलती कर दी मैंने यार। हु इज द फेवरेट चेस प्लेयर? भाई कार्लसन। नॉर्मल पीपल, वो अब नॉर्मल है क्या? कैन नेपो विन कैंडिडेट्स? नहीं यार, वी कांट सी अनदर वन। तीसरी बार नहीं देखता मैं यार। नो 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 नो। हु इज द फेवरेट चेस प्लेयर? आई थिंक मैंने कहा कार्लसन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो वीडी भाई। What is he thinking? Like, what other options are there? I don't even understand. Like, you can't play e4 because bishop takes f6. So, I mean, there are not many options actually. Can we have the camera of VD Niranjan भाई एक बार नजर मार लेते हैं उन पे भाई, क्या चल रहा है उनकी गेम में, एक बार ध्यान से देख लेते हैं उनको। ठीक है भाई, यू कैन ऑल्सो क्वालिफाई वर्ल्ड कप रूट। बिल्कुल भाई, अभी अभी निकल रहा हूँ मैं वर्ल्ड कप के, अभी 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 निकल रहा हूँ बस। ऑल इंडियंस विद अप्रॉक्स 98% एक्यूरेसी। भाई अभी के लिए तो आसान है, बिकॉज 15 मूवी हुए हैं रफली। कोलैब विद बोटे सिस्टर्स। भाई बोटे सिस्टर्स की लाइव वॉचिंग मेरे सब्सक्राइबर काउंट से ज्यादा होती है कई बार। इमेजिन इफ नेपो विंस अगेन। फिर क्या भाई, रोएंगे भाई फिर से कि इंडियन क्वालिफाई नहीं किया। नथिंग अगेंस्ट नेपो यार, इट वाज हार्ट ब्रेकिंग टू सी हिम लूज अगेंस्ट डिंग, बट वी वांट एन इंडियन टू विन नाउ। I once played against Carlson. He is too weak. Wow. Wow. झूठ भी कितना बड़ा बड़ा फेंका है। What's the future of chess now that Neuralink has become a thing? Dude, Neuralink will make it crazy. Apple Vision Pro तो छोड़ो भाई, Neuralink के बाद तो चेस का तो मुश्किल ही हो जाएगा यार। कोई एक बंदा जाके Neuralink लगा लेगा और आके फिर कार्लसन को ब्लाइंडफोल्ड पहनने लगेगा। So I think that's going to change chess for sure. What about knight g4? Knight g4 chat. क्या बढ़िया सवाल है भाई। So knight g4, can black play this chat? What is the problem with this move? कौन बताएगा?
मॉड टिको स्पैमर्स घूम रहे हैं चैट में, सबकी धाकड़ डिक्की कर दूंगा भाई, नहीं करना है धाकड़ डिक्की। You're right, Dhruv bhai. That version sounds very logical. Carlson, your favorite. In terms of chess play, Carlson. In terms of overall personality plus play, Anish. And in terms of Indian chess, then of course you can have multiple. वीडी अभी रेस्ट मोड में है भाई, एक्टिव हो जाओ भाई, डोरमेंट मत रहो भाई। वीडी लग ही नहीं रहा चलने वाला है यार, और गुस्से में क्यों लग रहा है? He looks like he's angry, no? Stares at Pragg for a moment and then looks back, still staring at Pragg. Wow. He doesn't look like he's ready to move. He has to move now. भाई प्रग उठ के तक चला गया यार। कम ऑन वीडियो, यू हैव टू मूव, टाइम नहीं है हमारे पास। ही हैज टू प्ले 24 मूव्स नाउ इन 33 मिनट्स। नोदबेक आज पक्का जीतेगा भाई। नोदबेक किससे खेल रहा है देखना पड़ेगा। Yeah, bishop h3 is the problem, exactly. That is the issue, and you lose the bishop and then the knight is also pinned, so no, you can't play knight g4 immediately. VD is my favorite though, तो फिर अपने फेवरेट को बोलो भाई कि चले, चल नहीं रहा है यार। निरंजन भाई, what is happening? Why is he not moving यार? ये क्या डेली का सीन हो गया? मैं चिल्लाता रहता हूँ यार, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है, चल नहीं रहा है। कभी प्रग, कभी वीडी, कभी गुकेश। What is happening निरंजन भाई? एक मिनट देख रहा हूँ। Dueling be considered unfair means? I think so. So what is happening मतलब evaluation पूछ रहे हो? नहीं मतलब why are they not moving? What other options are there apart from bishop g2? I don't even see a move. What will you play apart from that? तो वो आपको ब्लिंक स्ट्रेटजी के बारे में पता है कि नहीं? The one who नहीं भाई, ये कौन सी this. भाई ब्लिंक्स फर्स्ट तो ठीक है भाई, बट इस तरह से तो भाई ब्लिंक करने का टाइम ही नहीं बचेगा, तो फिर घर पे ब्लिंक करते जाओगे। चलो तो कम से कम 32 मिनट्स नाउ। अभी टेंशन तो मेंटेन हुआ है। Bishop into g2 would be making a statement कि अभी I am releasing tension। तो ये टेंशन रिलीज करना अभी जरूरी है या नहीं, ये बहुत ही बड़ा। तो क्या चलोगे फिर, क्या चलोगे फिर इसके बदले? नाउ ये नहीं खेलना, और क्या ऑप्शन है? मेरे पास क्वीन c8 भी एक ऑप्शन है भाई। क्वीन c8 फिर वही हो गया ना, ये तो हवाबाजी की मूव है मतलब। दिस इज नॉट व्हाट आई एक्चुअली वांट टू प्ले, राइट? मतलब दिस इज नॉट अ मूव व्हिच आई एक्चुअली वांट टू प्ले। ये तो जबरदस्ती वाली मूव है कि भाई यार बिशप को डिफेंड करके रखना है, तो क्वीन c8 खेल देता हूँ। मुझे तो लगता है क्वीन c8 खेल सकते हैं, या g2 किंग g2 मारना है तो h5 h4 काइंड ऑफ आइडियाज करने चाहिए। भाई ऑलरेडी 8-9 मिनट ले चुके हैं इस मूव के लिए, ज्यादा ही। ही इज टेकिंग 8 मिनट्स पर मूव, और यहाँ पे लिटरली हमारे पास मिनट पर मूव भी नहीं है बचा हुआ। कम ऑन वीडी, प्ले इट नाउ डूड, यू विल लूज ऑन द क्लॉक। प्रग वाली गलती कर। क्या क्या भाई? 31 मिनट्स रिमेनिंग फॉर 24 मूव्स। It's already close to like 1.25 minutes. अरे कहां से टाइम है भाई, क्या बात कर रहे हो? ऑलमोस्ट मिनट मूव है यार, कहां से टाइम है भाई? अरे बहुत टाइम है। अरे भाई मीम करना है भाई, क्या भाई, बहुत टाइम है। कौन इसका बदला मैं लेता भाई, टिको भाई। कौन सा मीम है भाई ये? अरे कौन सा मीम मीम है? पता नहीं, अरे बहुत जगह है, नई जगह, अरे बहुत जगह है, अरे नई जगह, बहुत जगह है, ये मीम है भाई। भाई निरंजन भाई, अगर कोई आपके भी स्ट्रीम ज्वाइन करता ना और आपको बोलते हुए सुनता, अरे बहुत जगह है, अरे बहुत है, अरे बहुत जगह, वो बंदा कहता ये बंदा तो कुछ तो करके आया है भाई स्ट्रीम से पहले। ये जनरेशन में वो एक जनरेशन होता था जहाँ पे जीक्यू लेते थे, अभी ये जनरेशन है मीम। मीम का कॉन्टेक्स्ट पता नहीं तो आप अपडेटेड नहीं, ये है जेन जी। भाई देखो, पता है अपडेटेड मैं हूं कि नहीं, बट कम से कम भाई विदित अपडेटेड है कि नहीं मुझे ये बताओ, बिकॉज ही इज नॉट मूविंग। चल भाई 30 मिनट रह गए, व्हाट इज ही डूइंग? व्हाट इज ही डूइंग? देख लो, चैट चैट भी एग्री कर रही है निजो भाई। भाई चल ही नहीं रहा यार। यू रॉक ऑन भाई, क्या हाल चाल, कितना रॉक कर रहे हो आज? आपके पत्थर कैसे हैं? टीम चेस फॉलो कर रहे हो क्या? नहीं, मैं नहीं फॉलो कर रहा। अनीश आउट, मैं आउट। अरे कमॉन 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 भाई, 29 मिनट रह गए फॉर 24 मूव, व्हाट इज ही डूइंग?
रंजन भाई को, कम ऑन भाई, चल ही नहीं रहे यार भाई, वो उपासिया ले रहे, कैन वी हैव फुल स्क्रीन भाई, लिटरली हादी उपासिया ले रहा है भाई, चल, he has to move now, otherwise it's going to get very difficult. अरे यार वीडी, you have to move. He's so relaxed, like मतलब he's relaxed, that's good news, but situation is a problem. मेरे घर वाले मुझे मैसेज कर रहे हैं भाई, टॉक स्लोली। तब तक दूसरे गेम दिखा दो भाई, दूसरे गेम भी अटके हुए हैं, वहां पे भी स्लो चल रहा है सब। गुकेश अगेंस्ट नवारा इज स्टिल स्टक, वहां पे भी कुछ नहीं हो रहा अभी। So going back to the game of VD now, I think only G6 has been played there. एक ही मूव चली है उन्होंने, बस G6 सबसे बस एक ही मूव हुई है। So going back to Vidit against Gukesh, Pragg against VD, and yeah, I'm still confused. Why not pawn to B5? Because A takes B5 by, that's a free pawn. It's a free pawn. Why are you exaggerating? Sangam, basically, there are 90 minutes for the game. Chat, let me explain this, okay? There are 90 minutes for the game plus increment every move, okay? 90 minutes mein you have to play 40 moves, right? Now, VD has played 16 moves so far and has used up 62 minutes out of 90. So 16 moves ke liye 62 minutes. That is 4 minutes per move. Now he has to play what? 24 moves in 28 minutes. That is exactly a minute a move. Yeah, he plays वही मूव खेली जो मैं कह रहा था, और कोई मूव थी ही नहीं भाई बोर्ड पे. So exactly my point now. So he has to play fast, but the idea is Pragg's move is obvious. What next? I think Queen E6 looks very logical to me. Getting out of this, you know, the rook against queen tactic, you never know. You might need that support. So Queen E6 looks like the move I would have played. Let's see what he plays now. My anxiety now, mine as well. भाई गुकेश को भी दिखाओ, भाई गुकेश को भी दिखाएंगे भाई, बिल्कुल बिल्कुल। एक गेम देखते हैं, कुछ नहीं हुआ आफ्टर G6। गुकेश का अलग है भाई, उसको 26 मूव्स खेलने हैं 35 मिनट में। सो बेटर देन वीडी बट स्टिल प्रीटी बैड, बट एटलीस्ट इसकी एंड गेम है। सो यहाँ पे इट माइट बी इजी टू काइंड ऑफ हैंडल दिस, बट वीडी के लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी एज इजी। अभी तो मिडिल गेम ही चल रही है। वीडी एंड प्लग बीएफएफ दे विल ड्रॉ, आई डोंट थिंक सो। जब कैंडिडेट्स आएगा तो वहां पे क्या ड्रॉ करेंगे ये लोग? Somebody winning might mean actually becoming the world champion. By the way, king takes G2 played by Pragg, immediately captured, and VD does play my move, queen to E6. Let's have VD on the camera now. यही चलते घंटे से क्या सोच रहा था भाई, वो तो पता लगेगा टाइम के साथ क्या सोचे थे वो। VD is not past his prime. I disagree. VD is absolutely in his prime right now. I just feel कि he's a bit too relaxed in this game for some reason. Like he has to be, you know, sharp. That cannot waste time in this game. Pragg will not have mercy if he gets a better position. He'll put pressure. Look at the time difference. Almost double है Pragg के पास. Washroom का सकेत है during matches. मतलब सकेत क्या होता है भाई? Gukesh played something apparently. Let's have a look. So he played the move D3 attacking the knight, and the knight plays the best move to D6. Knight coming to F5 chat. Then bishop G7. हमें D5 खेलना पड़ेगा, and then the black knight will sit on D4. So black has some compensation for the pawn because D4. For example, let's say यहाँ पे मैं खेलता हूँ, I don't know, D5 already, bishop G7, and now knight F5, knight D4, and हमारा कहीं ना कहीं ये D4 square is the problem. So black is kind of close to equal here. So इतना आसान नहीं है गुकेश ने जीतना है गेम, कुछ ना कुछ गलती का वेट करना पड़ेगा, प्रेशर डालना पड़ेगा नवारा के ऊपर। गोइंग बैक टू दिस गेम, वन लुक एट वैशालीज गेम, ये रिफ्रेश क्यों हो रही है बार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। एनीवेज, सो फिलहाल के लिए सीम्स टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। शी डज टेक ऑन एन A5। वाओ, सो इंटरेस्टिंग चॉइस देयर, नॉट द नॉर्मल मूव, रफली बैलेंस्ड अभी लग रहा है 98.2 एक्यूरेसी के साथ। गोइंग बैक नाउ, स्टिल थिंकिंग नाउ, प्रग की चांस है सोचने की। वीडी के हवा निकल गया है लगता है। नहीं भाई, वीडी भाई सिर्फ स्लो खेल रहे हैं। ही इज प्लेइंग अमेजिंग चेस, जस्ट ही इज प्लेइंग स्लो, बट हीट बढ़ती हुई चैट, मुझे पंखा ऑन करना पड़ेगा, हीट बढ़ते हुए। ये ड्रॉ कंफर्म कह रहे हैं मनसिज। आई डोंट थिंक सो भाई, तुम खुद सोचो। प्राग के सफेद पीसेस है, ही हैज द व्हाइट पीसेस, ही इज
well, basically has, I would say, almost double the time. Would he take a draw? I don't think so. By the way, Pragg is playing very quickly. Already played the pawn to e4. And किसी ने starting में कहा था e4. Why is it different? First of all, यहाँ पे d4 is possible. It's already under white's control. And more importantly, there is no bishop on g2. So there is no bishop being blocked. And now it also stops e4 from black. So here it is a much better move than what it was earlier. And कहीं ना कहीं ब्लैक का जो अटैक है वो खत्म हो चुका है बिशप एक्सचेंज होने के बाद. Now black has to think what to do. Will he play knight h5 with the idea of playing queen g6 and knight f4 check? That might be a plan. Will he play something normal like, knight h7, knight g5 trying to exchange this knight? ये काफी कॉम्प्लिकेटेड पोजीशन है ब्लैक के लिए एंड टाइम बहुत कम है वीडी के पास. चैट स्ट्रीम लाइक करते चलो जल्दी से. लेट्स गो 400 लाइक पहुंचाने जल्दी से. वीडी प्रग में सिर्फ 18 मूव हुए हैं चैट. 22 मूव्स रिमेनिंग एंड 27 मिनट्स. वीडी को देख के आई हैव लेफ्ट माय फिजिकल लेक्चर. ये यहां वीडी उबासियां ले रहा है. नहीं, he's having a lot of juice. कल नींद नहीं आएगी यार. It happens sometimes chat. You don't have a good night's sleep and game because बहुत stressful होती है. कई बार you get tired after a while तो नींद आने लगती है यार. It happens sometimes. बाबर आजम अब चेस भी खेलेगा. ये क्या है भाई? Come on. VD, you have to think faster. And by the way, why is VD not at the board? He's not even at the board. And Pragg is thinking, Niranjan, my question for you, is this like pure coincidence or does Pragg know कि यार ठीक है मैं एक्टिंग करता हूं सोचने की, दूर से वीडियो देखेगा तो उसको लगेगा मेरी मूव है. ये मैंने कभी ना कभी बचपन में तो किया है यार. मैंने ऐसे एक्टिंग करी है सोचने की यार, मतलब कहा कि यार ओपोनेंट शायद दूर से देखे और बोले अरे वो सोच रहा है तो टाइम निकल जाएगा. But VD is back. Have you done this Ranjbhai ever and do you think कि Pragg ऐसा कर रहे हैं? I don't think so, right? ये जो लेवल है टैक्टिक्स का इसके बाहर है भाई. प्रज्ञानंद ऑलरेडी बियॉन्ड हो गया वो. ये हमारे लेवल पे चलता है भाई. हाँ. Yeah, that's true. Come on. Let's go my friends. Let's crush it. हमारे हाथ में है भाई. पूरी गेम हमारे हाथ में. कौन इन्हें जीतेगा? Let's see. वीडी भाई को थोड़ा एक्टिव रहना पड़ेगा. इन द मोमेंट रहना पड़ेगा. चैट, आई हैव फेस्ड दिस बिफोर पर्सनली. कई बार तुम चेस खेल रहे होते हो ना, दिमाग में कुछ और चलने लगता है, पता भी नहीं लगता. इट्स लाइक ड्राइविंग. या यू ड्राइविंग व्हेन देयर इज नो ट्रैफिक. कई बार भूल जाते हो कि यार तुम ड्राइव कर रहे हो. सो इट हैपेंस समटाइम्स. सो यू हैव टू स्टे फोकस्ड. Which leader, in your opinion, thinks like a chess player? By using the Chahal, clearly he has to be the one. Use it, Chahal, the legend. By the way, now e4 still played with the thinking. One look at Gukesh's game. Kya chal raha hai? So he has he pushed the pawn to d5? Oh, he has played d5. Wow. So this will be interesting. Yeah. How do you counter this d4 square problem? How do you tackle this? That will be a very interesting problem for Gukesh to find a solution to. It's not an easy one also. Going back. Chat, now it is 22 moves in 25 minutes. That's almost a minute a move. I think knight h5 would be my choice. Knight h7 again. So for example, white is going to play knight c5 at some point or knight c3 and he's holding on not to give black a clear answer कि भाई मैं कब खेलूंगा. वो टेंशन मेंटेन करके चल रहे हैं जैसा निंजा भाई ने पहले कहा था. Last few moves. So यहाँ पे position थी काफी solid. All pieces were developed. Finally, VD took on g2. King takes g2. Queen e6 at some point to threaten e4 as immediately Pragg ने खुद e4 खेल दिया. And now no longer e4 is possible. Nodirbek is better. भाई Nodirbek हारता क्यों नहीं है भाई? Nodirbek तो सारी गेम भाई साहब. Nodirbek is better yet again. हर गेम में Nodirbek is winning. We have to agree Nodirbek is in great form. 2024 so far is just been Nodirbek's year, man. We have to just agree, huh? Crazy chess. Going back. Oh, VD plays rook to d7.
So he's trying to double up rooks. Very, very logical try. Let's see what Pragg plays. Yahan pe, for example, one try could be to play h3, prevent any queen g4 ideas. Second try could be to play queen to c4 to trade queens. If queen takes c4, pawn takes c4, kahin na kahin ye structure white ke liye better hai. I have more space. I am still attacking this pawn on e5, and now I can double up rooks, and somehow white is slightly better again, and ye c5 ka threat is a big one. So chat, this is not easy for Vidit. अगर क्वीन c4 खेलते हैं तो क्वीन थ्रेड ऑलमोस्ट फोर्स ही लग रहा है मुझे, या तो वो मार देंगे या उनको मारना पड़ेगा. If Nodirbek wins today, he will overtake both Nepo and Firouzja. That will be crazy. Vidit is not happy with time control of candidates, and he said that Fide has not approached him. Thoughts? I don't know. I have not seen that video. I saw that video, the one you're saying. I have not seen it actually. But I don't think कि time control Vidit के हाथ में. I mean, it's not really in his hands. जो time control पहले से रहा है वही रहेगा. It's up to the player to adapt. Pragg ने पानी पी लिया, and we all know what that means. We know Pragg piling on the pressure. Vidit also looking very focused and calm and composed. That's a good sign. Future section क्या है भाई? Future नहीं यार, हम time travel नहीं करते यार स्क्रीन पे. I don't like time traveling यार, सर में दर्द होता है, फिर उसके बाद फ्यूचर में नहीं जाना यार. Vidit का आज मन नहीं है क्या? Now Pragg will push him to blunder. भाई, I would say, I think the position is such that it's possible to play these 21 moves in 24 minutes. It's not impossible, especially a queen trade हो जाए तो. So it should not be the end of the world, but yeah, it's not going to be easy. Yo Oracle भाई, long time, क्या हाल चाल भाई? हम यही स्ट्रीम करेंगे रेगुलर, तो वो चैनल अब बंद है भाई, यहीं पे आ जाना रोज. कैंडिडेट्स अप्रैल में भाई, बहुत इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट. मैं नीट एब्सोल्यूट हूं और यहाँ वीडी को देख रही हूँ, और वीडी का नहीं क्या कर रहा है. आई एम सो नॉइड. नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ भी नहीं है. आई थिंक ही विल प्ले सम गुड चेस. ही इज प्लेइंग सम अमेजिंग चेस, जस्ट प्लेइंग इट स्लो. दैट्स द ओनली थिंग. कैंडिडेट्स दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. आई एब्सोल्युटली अग्री. कम ऑन कम ऑन कम ऑन वीडी. अब यहां पे सोचना है, इफ नॉट क्वीन c4 व्हाट एल्स. फॉर एग्जांपल नाइट c5 जो हम काफी टाइम से देख रहे थे. बिशप c5 is literally forced because fork है, so मारना ही पड़ेगा. And now you take with the queen, and now black can see. Can you double up already? Is it possible? Yeah, it's already possible. And kahin na kahin d3 is now hanging. So maybe knight c5 has lost his charm. Shayad, it looked very appealing in your 20s, but now in your 30s, you're wondering, maybe it's not what I want in life. Maybe I want something else. Divorce time. Let's see. Vidit or Nodirbek, who is better this year? So Tata Steel में Nodirbek का I think was good enough, but I think in this tournament, and especially in the freestyle one, Nodirbek has kind of proved he is kind of just crushing everyone. So I think kahin na kahin pe, it's so far been Nodirbek's year, I think. Will Vishal be commentating candidates? I think he is commentating for FIDE, जहाँ तक मुझे knowledge है. So he'll be commentating for FIDE there for half the tournament. Why does Pragg wear specs? Because चश्मा लग गया होगा यार. Yo Pascal भाई, what's up? Gukesh game, अरे यार Gukesh मैं भूल जाता हूँ यार. Gukesh game. By the way, knight f5 played. जो मैंने कहा d4 की तरफ बढ़ते हुए. यहाँ पे how do you handle? You can't play bishop e3 anymore because I will just take. And I would love to play b4 bishop g2, but bishop g7 already. And now we rook a2. ना ये नहीं होगा, ये नहीं हो सकता हमसे यार. तो क्या खेलें यहाँ पे फिर? He can't even castle. What do we do? And knight d4 is incoming. Yeah, that's yeah, it's not easy. He plays king f1. Yeah, he moves away from this. Decent idea actually. But now bishop g7, I think it should be the best move. And now we can try to basically just hold the d4 square and just not allow white to expand. Yeah, bishop hamesha bad rahega. And yeah, it's not going to be easy for Gukesh. But let's see, he can try, he can push. He's the pawn up, so he's the one pushing. Let's go back. आपका क्या हाल? बढ़िया है भाई, आप बताओ भाई कैसे हो भाई? इंडियन प्लेयर्स को कैंडिडेट्स के लिए वीजा नहीं मिल रहा. आई नो हरिओम भाई, हमने डिस्कस किया था वो. एंड
अगर नहीं मिलता है एक हफ्ते के अंदर, द टूर्नामेंट विल शिफ्ट टू स्पेन एंड आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट बिकॉज स्पेन में होगा तो शाम को स्ट्रीम कर पाएंगे तो बड़ा मजा आएगा. For those who don't know, Sahil Bhai has also commented Vishy sir in the past and showed him the Sigma. I did not show him the Sigma reels though, भाई. भाई वो तो क्या ही भाई सर पकड़ लेते हैं. क्या आदमी है यार ये, क्या आदमी है भाई. What about Arjun compared to everyone in the tournament? Arjun right now is ranked India number 2 after Vishy. He crushed Anish Giri with the black pieces today at Shenzhen Masters. So Arjun पूरी form में चल रहा है फिलहाल के लिए. He's not going to play the candidates of course, but in terms of India number 1 and ratings, he's doing really well. Nodirbek winning again. He just keeps winning. I know, man. I don't know how is he doing this. I just don't know. He just keeps winning. अरे चीकू जी भाई, चीकू जी कैसे? चीकू एज अ फ्रूट मुझे पसंद नहीं है यार, वैसे बंदे आपको पसंद हो भाई. कनाडा में क्यों कर रहे हैं? उनके पास प्लेयर तो नहीं भाई, बट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर कोई बन सकता है यार. इट डजंट हैव टू बी कि प्लेयर होना जरूरी है. बाय द वे चैट, इफ यू लुक एट द कैमरास, दोनों प्लेयर्स ना मतलब 1 इंच भी मूव नहीं हो रहे. दोनों टेंशन में लग रहे हैं हल्के फुल्के. विदित अब पहले से ज्यादा सीरियस हो गया है, इंप्रूवमेंट भी आया है. आई अग्री, आई एब्सोल्युटली अग्री, मगर टाइम सिचुएशन थोड़ी खराब लग रही है मुझे यार. कम ऑन कम ऑन कम ऑन भाई. ये वाईटी प्रीमियम ना कोई एक थोड़े से हल्के से टॉक्सिक इंसान है भाई, इनको इग्नोर करें. वीडी की रेटिंग बताओ भाई. 27 चैट. इंडिया का डेली टॉप 5 काउंटर हमें रखना चाहिए. सो इंडिया नंबर 1 इज विशी आनंद 2751. उससे 0.2 पीछे इट इज एरिगेसी अर्जुन 2750.8, जिन्होंने अनीश को आज हराया. उसके नेक्स्ट है 2750.2, उनके 0.6 पीछे गुकेश. उसके बाद है विदित एट 2744.6, फिर प्रग एट 2739.5, फिर हरि कृष्णा है आई थिंक एट 2701. सो 6 इंडिया 2700 प्लस पे और 3 है 2750 प्लस पे. Why all chess streamers rant about more Pragg Gukesh and not about Arjun? Because Arjun is not playing the candidate, so that means कि it's not, his results don't allow him to become the world champion. अभी trending players वही 3 है. And trend से याद आया, best move played by Pragg as we discussed, queen to c4. And यहाँ पे Vidit has an important choice. Either he plays something like let's say rook here, then you kind of ignore this for now, but ये tension कब तक रहेगी? By the way, chat, very important. B5 is not possible because of queen takes c6, pawn takes, and white can chop these pawns off one by one. So that is not a fork anymore. So queen c4 पे VD has to take a choice. Does he play rook d8 or does he take? दोनों important तरीके हैं, दोनों are close to equality, but I personally don't like taking because takes के बाद ये c5 is a big threat, man. White का structure थोड़ा 94 थोड़ा कमजोर है. But yeah, I can't take immediately because of c5. You can't move the bishop because the rook is hanging. So फिर क्या करें भाई? It's kind of difficult. It's a bit passive for black. Passive मुझे पसंद नहीं है लाइफ में. Passive सिर्फ इनकम आनी चाहिए भाई, पोजीशन नहीं. आप प्रग के साथ खेलो क्या? हाँ भाई मैं खेला हूं, मैंने हराया भी है प्रग को, लेकिन उस टाइम पे छोटा बच्चा था यार. तो डिफीट देम व्हेन दे आर यंग, एज लेवी सेज. कम ऑन गुकी. गुकी गेम भी देखते हैं भाई, तब तक के लिए वीडी सोच रहे हैं. गुकी गेम की ऐसे मारते हैं एक बार. बाय द वे नवारा जी अभी भी सोच रहे हैं. दैट्स अ गुड साइन कि नवारा जी को फुल इक्वालिटी नहीं मिल रहा है, मतलब ही इज नॉट फुली कन्विंस्ड कि वो ड्रॉ कर पाएंगे. दैट्स अ गुड साइन फॉर अस. गोइंग बैक टू विदित, क्वीन ई7 प्लेड. सो उन्होंने तीसरा ऑप्शन लिया. मैंने 2 ऑप्शन किए थे कि या वो मारेंगे या वो रहने देंगे और व्हाइट को ऑप्शन देंगे, मगर उन्होंने क्वीन ई7 खेल दिया है. He does not want the queen trade. Let's see what happens now. प्रग ने पीस साइड में रखा, थोड़े इंटरेस्टेड लग रहे हैं प्रग पोजीशन में. He likes the position for himself. Maybe now knight c3, knight d5 का प्लान हो सकता है. Knight h4, knight f5 का प्लान हो सकता है. Queen on e7 looks a bit misplaced to me. Who is stronger among Arjun, Vidit, Pragg? I think they're all equally strong right now. All equally strong. Rating भी decimals के difference पे है. According to Fabi, Arjun is most promising. भाई Fabi ना हर महीने चेंज करता है अपनी प्रिडिक्शन. जो ऊपर आता है उसका नाम ले लेता है. So Fabi की प्रिडिक्शन पे I will not push too much effort into. टाइम प्रेशर भी अच्छा हैंडल करता है वीडियो. अब he does do it, but why fall under it?
maybe you can handle the pressure, but why fall under pressure? Let's avoid the pressure. एक बार हरे कृष्णा कह दो, मैं सुना रहता हूं कोई स्ट्रीमर कहते हुए हरे कृष्णा भाई, बोल दिया भाई. अकॉर्डिंग टू फैबी, अर्जुन इज मोस्ट प्रॉमिसिंग यंगस्टर. गुकेश गेन अभी देखिए हमने भाई, सोच रहे हैं अभी वो. was knight c5. Knight c5 was also a logical move. Chad, ये पोजीशन में ना, there is no clear cut advantage for either side. So बहुत सारी moves give you equality. It's more about the kind of structure you want. White ने कहा मुझे queen trade चाहिए, मुझे ये structure चाहिए. Black ने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए queen trade. I want your weak pawn to stay on d3. आप कौन से फेमस खेल रहे हो? मैं हिकारू से ऑनलाइन खेला हूं भाई 3 बार. आई थिंक दैट्स द मोस्ट फेमस प्लेयर आई हैव प्लेड. Who is best rapid chess player in India? That's a tough one. I would say Vishy, but he doesn't play that much. So, probably Pragg. Probably Pragg, or yeah, Pragg. Probably. I might be wrong though. I think Blitz may it's probably Arjun. Rapid may probably Pragg, and VD would be second in both. Candidates start with a second. It's 4th April se yaar. Come on. निहाल खेलता कहाँ है आजकल यार? दैट इज द इशू. निहाल डजंट प्ले. थैंक यू मनीष भाई. अपडेट अकॉर्डिंग टू फैबी, प्रग इज द मोस्ट प्रॉमिसिंग नाउ. मैंने बोला ना, he keeps switching. He doesn't stick to one player. Pragg will surpass Anand's rating, winning 6 World Chess Championship. It is possible. I would love that, because as somebody who has defeated Pragg, मुझे कितने flaunting rights मिलेंगे chat. It's crazy. By the way, दोनों players fully focused, looking at the game. वेद का जूस भी खत्म हो चुका है, but he's still not distracted. Pragg भी बिल्कुल focused. दोनों प्लेयर स्ट्रेस लग रहे हैं. They don't look in the mood for a draw chat. कहीं भी कोई अंदेशा नहीं है कि they're going to offer a draw or take the draw. So we're going to see a result chat. मुझे फीलिंग आ रही है. VD is always number 2. He was India number 1 by the way. For one day he was. इस बार आईपीएल कौन जीतेगा यार? सीएसके जीतेगी यार, वो तो कभी हारती है नहीं. Where is Nihal Sri now? I don't know यार. I am not aware. थोड़ा तुम सच में हिकारू के साथ खेल चुके हो? हाँ भाई, ऑनलाइन 3 बार खेला हूँ, 3 बार हारा हूं मैं. How many moves left for time? So 20 moves remaining in 23 minutes. So for the last 4 moves, he has played a minute a move. So he's managing his clock well for the past 4 moves. आगे का मुझे नहीं पता भाई, आगे का देखना पड़ेगा. शोकेश गेम हम देख रहे हैं भाई, कुछ भी देख रहे हैं. We saw it till King F1 and Bishop G7 played. I guess Rook B1 looks logical, trying to get out of this. And the idea, I'm not sure what is the best concept, but I think at some point, you just play Bishop D1 even. I don't find that as a bad move. Just put the Bishop on D1 or G4, play G3, put the King on G2, and just develop the pieces, man. Like, I think there is no clear-cut formula for Black to equalize. So let's just develop the pieces. Chat's average age, come on chat, अपनी age लिखो भाई, देखते हैं क्या average age है. आप कौन से फिल्म से, अच्छा मैं बता दिया है. With his best rapid player now. That's true, man. He did have a very good rapid tournament this year. Vaishali game, यार refresh क्यों होती है? Oh, Vaishali plays Rook to F3. So is she threatening some tactics? Maybe G4, G5, who knows? Maybe an exchange sack, who knows? Some ideas for Vaishali here. She's used the knight on B4 to defend this pawn. ये वाला defended है इस tactic के साथ. She's kind of holding on and putting some pressure on the knight. Black का king side काफी अकेला पड़ गया है. Especially light squares पे थोड़ा defense कम है. Let's see क्या होता है. By the way, queen to b3 played. 16, 22, 17, 21. 2 साल के भी लोग चैट में घूम रहे हैं. बहुत बढ़िया, लेकिन लग 200 साल के रहे हैं. 16, 8, 20, 23, 16, 69, 9, 21, 17, 22, 9. Nice, bye, nice. Who will reach Thaiso first in India?
अमंग इंडियन यंग प्लेयर्स? वही तो सवाल है ना यार। इस सवाल का जवाब अगर मेरे पास कंफर्म्ड होता तो भाई क्या फील आती भाई। 2800 रेटिंग विल रिक्वायर स्टेबिलिटी, सो आई थिंक इट्स नॉट समबडी हु इज गोइंग टू लूज अ लॉट ऑफ गेम्स। तो ये चीज बहुत बड़ा फैक्टर है। इट्स वेरी हार्ड टू से कि कौन होगा वो प्लेयर, बट इतना क्लियर कि इन चार में से एक होगा। गुकेश, विदित, प्रग एंड अर्जुन में से ये तो मुझे क्लियरली दिख रहा है। All Gukesh pieces are on back rank. Bro plays only creative chess. Yeah, but he's a pawn up. He's a pawn up. So उस back rank के पीछे नहीं उसको benefit मिला है. He has an extra pawn. और yeah, he plays rook b1 क्या? Yup, he played my move rook b1, and I think he's going to do fine here in this game. He'll put the bishop on d1, controlling the e2 square, play g3, play king g2, and he's absolutely fine, slightly better. ब्लैक रॉक का सीईओ कहां से आ गया भाई? I have seen Arjun crushing Hikaru. Bhai, of course we have seen that happen. 69 का मतलब क्या होता है मुझे भी नहीं पता यार. I think it's the number of players who qualify into CCT, no? I think day one. That's the number 69, I think. That's why it's quite popular. स्क्रीन पर रेटिंग के नीचे क्या है? 1.5/4, 2/4. That's the score in the tournament so far for both players. So right now in the standings, we have Nodirbek and Parham with 3 out of 4, Gukesh with 2.5, Rapport 2.5, and Vidit 2, Pragg 1.5. Why Magnus is unbeatable? Because he is the greatest chess player of all time. I will cross second भाई. ये क्या मतलब भाई? इस टूर्नामेंट का स्कोर है भाई, हाँ एग्जैक्टली. कम ऑन भाई, 20 मिनट से कम अब. सो विदित वापस डीप थॉट में. क्या खेला? कुछ नहीं खेला उन्होंने. कम ऑन, 19 मिनट रह गए हैं और पूरे चैट. नाउ इट इज लिटरली 20 मूव्स इन 19 मिनट्स. सो इट इज लेस देन अ मिनट टू मूव नाउ. सो अब बहुत बहुत शार्प. एग्जैक्टली स्पंदन भाई. मीनिंग ऑफ एनएम मतलब नेशनल मास्टर. मॉड बना दे बंदी के सामने फ्लेक्स. भाई आप कितने साल के हो मनीष? मैंने पहले ही पूछा था आपसे. Come on, come on, come on. Arjun was Anish. Anish lost that game to Arjun. So Arjun is again crossed 2750. भाई 18 मिनट की तरफ बढ़ रहे हैं भाई. क्या हो रहा है वीडी? He looks confused. He looks looking at the rating in a very different expression. जिसे पता नहीं कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे थे वो. Rook d8. Rook d8 तो पॉसिबल है ही भाई. I think I don't think there's a problem with this move. But again, the bishop is trapped, so you can't really move the bishop anywhere. So rook यहाँ पे कर क्या रहे हैं? That's the question. So you smile on what? VD has to play now. 18 minutes, 20 moves. 18 minutes, 20 moves now, chat. It's getting more and more difficult. Yeah, black's position is cramped, man. Not position is not cramped. Like there are better squares for all pieces, but somehow he has made them cramped. Yeah, ऐसा मुझे feeling आ रहा है. VD भाई थोड़ा जल्दी भाई, please, please, please. My rating is 2200, Mr. Kennel. Vidit next move नहीं सोच रहा क्या? By playing his moves in his opponent time. सोच रहा होगा यार, I'm sure. But maybe he did not expect queen b3. He did not expect this move. Oh, he played rook e8. He played that move. The move, and Pragg ने immediately rook e1 खेल दिया. Pragg is putting pressure on the clock. Pragg बिल्कुल no half measures from Pragg, chat. And chat, look at this. Look at this. This is a brilliant move from Pragg. If you play h3, let's say you play king h7 here, d4 is winning for Pragg by force. It is winning for Pragg. There is no defense. If king g8, then there is rook takes c6, pawn takes, and a fork
it's over. So hence, if you take, you think I will take, it doesn't help. Rook takes c6, pawn takes e5. Rook e1 should be at least an exclamation mark, if not two. A crazy move by Pragg. d4 is a winning threat. And the only move for VD, is queen to e8. That's the only move. If queen e6, then queen e6, f e6, and d4, it's still uncomfortable because I can't take because of e5. So what a brilliant move, rook e1, played like this by Pragg. Chat, I am going to make a prediction now. I think Pragg is going to win this game. He's up on the clock, has 2.5 times the time VD has. VD has to play 19 moves in 17 minutes, less than a minute a move, and d4 is a huge threat. Queen e8 is the only move which gives him some level of equality. If VD finds it, it might work. Can we have full screen? Watching if VD finds the only move queen e8. Let's go full screen. Let's have the board on top, Niranjan bhai, ek bar. He's nervous. You can see VD is nervous. He's biting his lip. He's thinking 16 minutes now. Chat, 16 minutes. 19 moves, 16 minutes. It's getting borderline impossible. Not impossible, extremely difficult. What a move, rook e1. I did not even see this. Can we have in the middle ताकि वो थोड़ा सा Pragg भी आए तो वो भी दिखे हमें ताकि constant रहे वो बाद में रंजन भाई. You don't have to move it. Oh, looks at the clock. He looked at the clock. He's stressed about the clock as well. Thank you, Nesh. Perfect. थोड़ा ऊपर कर दो उसको बस ताकि वो जितना ऊपर उतना better. Perfect. Oh, come on, VD. At least give us a tough fight. We want a tough fight. Queen e8. Now 15 minutes, chat. 15. Can we have the time also there? 15 minutes for VD now. Queen e8 nikalna padega unko. He has to find this move to allow the bishop path to go back. And also allow rook e7 to come in. Both ideas very important. If Fisher was playing the Sira Bhai, he would be studying the engines 24/7. Maybe we would have had 2900 rating by now. Chat, 15.5 minutes. Thank you, Ninja Bhai. Perfect. 420 की watching है. Let's like the stream chat. Let's get to 400 likes. Rapport भाई पीछे chill करते हुए. Oh my God, it's getting to 14 minutes now slowly. VD, you have to move now. Chat, 19 moves in 15 minutes. Knight g4 कह रहे हैं गेमिंग रुद्र जी, बट नाइट g4 का आइडिया क्या है? आई कैन प्ले h3 क्यू बैक, वापस जाओगे फिर से d4 एंड यू लूज. Oh, he realizes the problem. He knows the problem now. He's not happy. He's focused, but he's not happy. Chat, 14 minutes now. 19 moves in 14 minutes. Is he going to move? No, not yet. Puts his hands on his head. Not a good sign for Vidit. Will Pragg take home the point here? A brilliant move, Rookie One. I love this move. Usually you would say that black is piling on the pressure. Let me double up rooks. Let me save this pawn. Play rook. Let me double up and save this rook. No, he removes the pressure from the pawn. And now d4 is a big threat. He finds queen e8. Vidit finds the only move, queen e8. Brilliant move from Vidit as well. Bhai, the game is on. The game is on. This is a good sign for Indian chess. All the players are finding the best moves. How will Pragg put pressure now? Interesting moment. Can we have the board back? Do we go back to this and keep the board in this one, in this frame, bhai? Acha lag raha hai aise. Let's go back to the board. After rook e1, Pragg deserves to win. I don't think so. As Carlson said,
If my opponent plays a great game, I don't think he deserves to win. And now Pragg is not at the board. VD using Pragg's time. Look at this, very important. VD using Pragg's time to think. Pragg keh raha hai, bilkul bhi nahi, not on my watch. He comes back and starts thinking. Oh, VD looks under intense pressure. Look at VD here. Looks under serious pressure. Pragg drinking water. Pragg drinks water from his big bottle. Oh my God, come on. VD gets up. What? No way he got up. He runs. Maybe washroom जाने का उनको पता है बाद में मौका नहीं मिलेगा. Chat. यहाँ पे दो ही तरीके हैं. Either VD is very relaxed and हम फालतू का टेंशन ले रहे हैं, और उसको पता है कि भाई सुसु लगी और जाना बहुत जरूरी है, बाद में मौका नहीं मिलेगा. It has happened to me before. तुम क्लॉक देखते हो भाई, दोबारा जाने का मौका मिलेगा नहीं, अभी होके आ जाता हूं. One of those things. या फिर जूस खत्म हो गया होगा. Pragg, what does he play? Chat. Now if d4, let's have a look what happens. Now you take, and there is if e5, knight takes e5, and the idea is there is always rook e7 unpinning it. If knight takes e5, bishop takes, and there are no pins, nothing. If f4, there is knight to g4, and if f takes e5, there is d3 apparently. By crazy variation hai, which makes no sense whatsoever. D3. What is the idea? First of all, threatening d2 now. And if you defend it, let's say you play this, then d2. If you play rook somewhere, where do you go? Let's say you go to h1 or g1 all the way. Then rook d3. So there are winning chances for Vidit also if Pragg goes wrong. As you can see, what a crazy variation. Let's have a look again. d4. It's not a bad move. He takes d4. And yahan pe you play e5. Now knight takes e5. And yahan pe the best move on the engines for Pragg is knight to c5. Not knight takes e5. But if he accidentally takes, bishop takes, f4, knight g4, sacrificing a piece, d3, forking the pieces, rook has to come and stop, d2, rook goes back, rook d3, the queen is trapped, let's say queen c2, knight e3 check, and if queen a2, then queen c6 check, and white is busted and VD wins. And Pragg has played something, yeah? Not yet, not yet. It's getting really sharp. It's getting really, really sharp. Pragg thinking what to do. Will he play d4? Will we see the crazy variation? Who knows? d4 will be the crazy idea. He should play it. Otherwise, what was the point of rook e1? VD comes back quickly. No time wasted. No time wasted. And again has water. I don't think Pragg is to play this variation. No, the thing is, he will not play this, but it's good to know this. कि मतलब ये crazy possibilities black के पास भी है. It's not a one-way game. That's why Queen E8 was a crazy move, man. Allows rook e7. Yo, Manoj bhai, chat, बहुत crazy game बनने वाली है ये. Two Indian players who are going to be fighting for the World Championship exactly a month from now. Exactly एक महीने बाद आप और मैं डिबेट कर रहे होंगे इसी चैनल पे एक स्ट्रीम पे कि क्या कोई इंडियन वर्ल्ड चैंपियन बनने वाला है कि नहीं. उससे एग्जैक्टली एक महीने पहले ये दोनों फाइट कर रहे हैं. इट्स गोइंग टू बी एपिक. लुक एट Pragg गेटिंग अप ऑन द बोर्ड. पूरा आधा बोर्ड कवर कर लिया उन्होंने अपनी बॉडी से. इतना फोकस, इतना फोकस. Vidit definitely looks a bit timid, but he has potential in his position. It's not a one-way street as we saw. VD आ गया. Thank God एंजाइटी हो रही थी भाई. बिल्कुल. Chat challenging the 600 yellow to judge at 2700. It's okay to judge as long as तुम play judge कर रहे हो, बंदे को नहीं. Update on Gukesh game. One look at Gukesh's game before we come back to this exciting game. One look. Gukesh was a pawn up. H5 played. Bishop d2 and black ने rook e7 पे एक slight error खेला है. And now Gukesh has more chances. Probably a move like h4 to stop this, and then even bishop b4 to attack the rook. And I think maybe there are some deep complicated variations which I don't want to go into right now क्योंकि ये बहुत subtle है. David Navara को भी घंटा idea है. फिलहाल के लिए Gukesh is a pawn up. He has to stabilize, put the king on g2 after h4 at some point, and bring the rook to the center. If he manages to do so, he would win this game. Going to the game of Pragg against VD again.
जहां पे प्रग का टाइम भी धीरे धीरे नीचे जाता हुआ। कमॉन कमॉन कमॉन, समय ना कॉल किया जाए। नहीं नहीं भाई, समय की कमी है हमारे पास, क्लॉक पे भी और लाइफ में भी। अभी chat, make your predictions. It's time for predictions, chat. Who do you think will win? Will Prag convert this game? Will we see a boring draw, that all the exchanges of pieces, or will with it counter attack? Come on chat, मुझे prediction spam देखनी है, हर बंदे की prediction. Who do you think wins this game, chat? Prag, VD draw, what do you think? अभी 3 प्लेयर है कैंडी में और एक नहीं जीतेगा तो मतलब नहीं रहे कुछ। 5 इंडियन है कैंडी में, बाय द वे, नॉट टू फॉरगेट द वुमेन सेक्शन, हम्पी एंड वैशाली एज वेल। मतलब लिटरली क्रेजी है भाई, 1/4 इंडियंस है। मतलब 16 प्लेयर में से 5 इंडियन है भाई, मोर देन दैट। एंड H3 played by Pragg, he doesn't go for D4. Vidit gets another chance here. Draw, Modi will win. अबे यार, draw Pragg, draw. Counter attack, Vidit wins. Draw, VD, Pragg, draw. Chat भी confused है, कुछ नहीं पता। H3 played VD पे time pressure again. 18 moves in 14 minutes. Chat, blunder कभी भी आ सकता है VD की तरफ से। If he finds all the good moves, it would be spectacular. But he doesn't look stressed for some reason. निरंजन भाई, I'm confused. VD बहुत ही calm लग रहा है मुझे। Is it a good sign कि he's not stressed out, or is it a bad sign कि वो seriously नहीं ले रहे? What do you think, निरंजन भाई? It's a good sign by that he's not stressed out, because we need a calm and composed mind to be able to play strong moves. देखते हैं तो वो स्ट्रॉन्ग मूव आती है कि नहीं। काफी VD को सपोर्ट आ रहा है अभी। फाइनली इंडियन विंस कह रहे हैं गौरव शर्मा जी, काफी डिप्लोमेटिक आंसर। VD को इतना सपोर्ट, वाओ, VD गोट। अच्छा, वो एक ही बंदा स्वयं कर रहा है क्या? नहीं, काफी लोग हैं। सो कम ऑन प्रग भाई, खेलो भाई। शाह, ओ अच्छा, VD की मूव है ना? हाँ, VD की मूव है। 13 minutes now. VD की moves are not easy, chat. They are not easy to play. Like कोई clear active plan नहीं है VD के पास. He is just waiting for Pragg to either play knight c5 or d4 or g4 or something, or rook d1. He doesn't have an active plan. Look at the last 4 games going strong. I agree. Last 4 games were very comfortable draws for Vidit. No issues at all. 4 साल से कर रहा है. It's good he's in taking stress on games. That might be true. We'll see. Come on. Vidit moves up in this chair. Pragg आराम से पानी पी रहा है, कोई स्ट्रेस नहीं Pragg को भी। Chat, 12 minutes now. थोड़ा मुझे स्ट्रेस हो रहा है ब्रो। आई रीच 16 17 15 in 3 days. I'm analyzing every game. So अदानी भाई, आपने मेरी एडवाइस सुनी और कहीं ना कहीं आपके नाम में भी कुछ जादू है मुझे लग रहा है। Draw most likely. I'm not so sure, man. Chat, think from Pragg's point of view. He has 35 minutes. 3 times the time VD has. Would he go for a draw? No. VD will have to play perfect chess to hold this. Is there transmission delay here in stream? पूरा tournament transmission में चल रहा है. Delay में चल रहा है मतलब. Played knight h7. He finds the best move yet again. Bhai, VD is not kidding around. VD finding all the best moves. And if, for example, here, let's say you play rook c d1, then knight comes to g5. And if takes, then pawn takes. And you removed a very good attacker for white, and black is exchanging pieces. He has less space right now. So exchanging pieces works in his favor here. So knight h7, good move by Vidit. And now the pressure is back on Pragg. Will he play quickly? Grand Slam's winner, bro, indeed. King h8 also possible, of course. You can play that move. Gukesh game देखते हैं भाई, बिल्कुल we quickly go to his game before. By the way, h4 played. Gukesh finds the best move, stopping this pawn. कल को he can play bishop f3 g3 king g2 now. Rook h e8 and now bishop d1, जो move मैं खुद बता रहा था बहुत टाइम पहले. And the problem for black is after knight to d4, what is this knight actually doing? Nothing. खाली पीली बैठा हुआ है d4 पे. वो पार्टी के दरवाजे तक आ चुका है, बट उनके पास एंट्री पास नहीं है. He cannot enter the party. So he will watch white develop g3, king g2, and he cannot do anything.
I think Gukesh is winning this game. He also has more time on the clock. Gukesh will convert this. What is your prediction, Ranjan bhai, here? प्रिडिक्शन मेरा प्रिडिक्शन ये है, ब्लैक के पास अभी जो पॉन नहीं है, इस विषय का थोड़ा दुख बढ़ेगा, ये है मेरा प्रिडिक्शन। Exactly वही, it's going to be difficult and difficult because कोई तरीके से pawn वापस नहीं मिल सकता black को. There is no way to get this pawn back. So going back, we have 9-7. Pragg is still thinking, chat, still in deep thought. Let's go back to the camera of Pragg against Vidit. कोरोबा भाई फिर से वॉक करते हैं, बच्चा भी वॉक करते हुए, सेम लोग रोज वॉक करते हैं. यो अनीश नायक जी, क्या हाल चाल है? आज क्रेजी मैच चल रहा है भाई. We all know Real is Gukesh. अरे भाई भाई ये क्या है? It is safe to say that VD का डिफेंस Hikaru के लेवल का हो रहा है. I think that would be a long long way from here. I think इतना आसान नहीं है. VD Hikaru are clearly 2-7 2800 players. So VD को थोड़ा और इंप्रूव करना पड़ेगा उसके लिए. कोई चाइनीज प्लेयर क्यों नहीं दिखते? बिकॉज they don't get many opportunities. How many chess GMs have you met? IRL many chess GMs इतने कोई बोलते ना, मतलब इतने रेयर नहीं है भाई. इंडिया में बहुत GMs है. Nodirbek becomes world number 5 today. That is crazy. हमें catch up करना है, हमें भी पहुंचना है भाई. Chat, by the way, keep in mind, if let's say Pragg और VD की रेटिंग तो कम है. If VD wins this, I think he goes back to 2750. If Gukesh wins, he crosses, I think he enters the world top 10. He crosses Vishy, he crosses Vei, he crosses Anish. He will enter the world top 10 at 9th place today. So that will be amazing to watch, man. Gukesh जितना बहुत जरूरी है भाई. Come on, put the radio on, Gukesh bhai. Okay. Pragg has the backward pawn. That's not good for him. Yes, I agree. This pawn is weak, but it can be defended very easily. A weakness is a weakness only if it can be attacked. I hope Pragg won't have to open an account. नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा. वो अनीश का काम है भाई. 31 minutes now, 12 minutes for Vidit again. Oh, 2.5 होगा क्या? अरे यार, पॉइंट डेसिमल से जाएगा क्या? कोई ना. Still देखते हैं. He will still be India number 1 though, at least. गुकेश के मैच एक बार नजर मारते हैं. क्या हुआ? कुछ हुआ क्या वहां पे? अभी बिशप डी कुछ भी नहीं हुआ है. ब्लैक इज स्टिल थिंकिंग, नो क्लियर एक्टिव मूव्स. आई थिंक ही विल हैव टू प्ले c6 नाउ, एक्सचेंज पॉन्स एंड होप दैट द d3 pawn falls. That is the only plan he has. I really don't see anything else. If I stabilize and I get this rooks connected, then you have no chance. I will bit by bit bring this bishop to g5, move this to a4 or whatever, f3, and I will be completely winning this. I'll put this bishop on e4 and I will be winning. So going back, Pragg is still thinking slowly, time going down for Pragg. Knight belongs to f5. अगर टेलर स्विफ्ट की सुनी जाए तो knight belongs to her. How to practice move order in a middle game? भाई move order middle game का practice move order का मतलब क्या है भाई? Hikaru is the best defensive player in the world. He's the trickiest defensive player in the world. Best is different. Okay, so Pragg still deep in thought. Can we have the camera of Pragg and VD? VD board पे नहीं है यार. That is insane actually. मतलब I thought he will be there at the board 24/7 trying to think of moves in Pragg's time, but he's super relaxed. Niranjan bhai, in this position, do you think VD should be using the time? I think yes, no? Why is he roaming around? वो एक कॉन्सेप्ट है भाई कि it is called the ease of movement, ease of moves. का मतलब ये है कि चाहे आपका पोजीशन पैसिव लगे, पर क्या आपका पोजीशन आसान है खेलना? अगर आपका पोजीशन है आसान तो हम आराम से खेल सकते. तो VD का पोजीशन आसान लग रहा है, तो इसी के वजह से थोड़ा रिलैक्स्ड है और थोड़ा वॉकिंग कर रहे हैं. ये मेरा भाई वॉकिंग, ये मेरा थॉट है. मैं गलत भी भाई हो सकता वॉकिंग तो ठीक है.
बट जो जो वॉकिंग करने वाला है वो है गुकेश किंग, बिकॉज उन्होंने C6 के बदले, जो मैं कह रहा था, उन्होंने खेला है C5, और C6 मतलब C6 वाज अ ब्लंडर। क्या है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हो? मेरी मूव ब्लंडर थी? ओ माय गॉड, दैट्स नॉट, हाउ इज द ब्लंडर दो? अच्छा, लुक एट दिस चैट. So now G4, H takes and bishop takes, and if rook D8, let's say this one, there is rook H3. Wow, I completely missed that move. I completely missed that move. That's beautiful. That's beautiful. That just takes care of everything, na? Because king को भी move नहीं करना पड़ा, rook भी game में आ गया, and now F5 is also hanging. Wow. So that should be easy. So he can just take now, or even play G4, but just takes, G4, takes, gets rid of the knight. It's not even opposite color bishops. If rook D7, rook H3, and rook D8 agar by chance aate hain, then there is bishop to G5. If F6 by chance, then bishop D2, rook takes, bishop takes, pawn takes, rook takes, king E2, and the problem is that the H pawn is a passed pawn. These are double pawns. If rook to H3, then rook to G1, entering the position. The bishop is trapped. It's literally trapped on G7. There is nowhere to go. H6 pe captures, F8 pe rook G8, and the bishop is lost. So lot of tactics there, deep variations, but I think he will figure it out. Gukesh will calculate this, and he should be able to win this. So he will cross 2-7. Yeah, he'll be India number 1. That's crazy. आपकी मूव मिस्टेक ही आती है यार, अब हम भी इंसान है भाई. देखो नवारा ने भी वही खेला, जो मैंने खेला. सो इट्स लाइक 26 के लेवल पे तो खेल रहा हूं मैं. Vaishali winning. Yeah, looking at Vaishali's game also for a second. What's happening there? Oh, she sacrificed the rook. Rook takes, pawn takes, knight G4, F5, check, king G7, and knight H5, king H8. And now we will have queen C1, followed by queen G5. And because the rook is on C7, there is no queen D8. And it should be winning for Vaishali as well. So Vaishali also crushing today Erwin Laimi, who's a very strong grandmaster. Even direct G4 works, yes, but उसमें क्या है कि knight pin हो जाएगा. अगर आप मारते हो तो knight will be pinned. So you can exchange the knight for sure. Chat, come on, like करो भाई. Let's get to 400 likes जल्दी से भाई. Hit the like button if you're here for the first time to subscribe. So looking at the position now, 25 मिनट है प्रग के पास. ट्रिपल से डबल टाइम हो चुका है. Why is निरंजन भाई backstage? Because भाई निरंजन भाई इतने स्मार्ट है कि अगर वो ऑन स्टेज आ जाएंगे तो हमारी फीमेल ऑडियंस फेंट ना हो जाए भाई. Come on भाई, आज नहीं किसी को बीट कर रहा अर्जुन. आज अर्जुन ने अनीश को हराया है, and अनीश has Arjun has already crossed 2750 again. Rapport also about to win. Wow. Oh, Rapport also, look at this by the way. D4, Rapport कितना tricky है भाई. So Maghsoodloo blunders, plays knight F4, question mark, D4, pawn takes, and now knight takes F3. Rapport is a tactical beast. If, for example, let's say pawn takes, bishop takes D4, and this is looking very, very dangerous. हमारे सारे पीस ऐसे ही हैं. Mating ideas आ रहे हैं. Queen G5 आ रहा है. Queen H4 भी आ रहा है. It looks almost like, pieces were stuck here. They're completely stuck with nothing to do. So Rapport also going to win against Maghsoodloo, and Nodirbek also winning against Bartel, and we have Gukesh winning against Navara. He is not captured yet though, and Pragg with it looks very complicated. Pragg का time भी कम होता हुआ फिर से. Yo bro, every time I watch your stream without a accounts, इसका क्या मतलब है? फीमेल ऑडियंस है भी होगी यार. कौन कौन लो है भाई, ये बताओ यार. जो फीमेल चैट सब बताओ भाई. प्लीज रेज योर हैंड्स, द फीमेल चैट. लेट्स गो. अरेगा सचिन इज नंबर 2 विद 2750.8. विशी से सिर्फ 0.2 पीछे है वो. कम ऑन प्लग, यू कैन डू इट. कह रहे हैं हैट्रिक. नहीं यार, हैट्रिक नहीं है. ही ड्रू द लास्ट गेम. By the way, knight to c3 played by Pragg. So very logical move. Black ने knight to h7 खेला है. उसका मतलब क्या है? He gives up control over the d5 square. That square is not controlled by black.
दैट्स व्हाई नाइट C3, ताकि हम नाइट D5 खेल पाए, उसके नाइट का वापस घूमने का इस फायदा उठा पाए. सो गुड मूव नाइट C3. आई आइडेंटिफाई एज, ये देखो, ये सारे लड़के क्यों लड़कियों की तरह बन रहे हैं भाई. रेनबो, अबे यार, एक भी फीमेल नहीं है भाई. कोई तो होगी यार, कोई तो होगी फॉर श्योर. सॉच किंग फीमेल है, ऐसे मत करो भाई. नोदिर्बेक विल बी चैंपियन कह रही है ईवी, देखो आ गई भाई, लेकिन वो नोदिर्बेक को सपोर्ट कर रही है. भाई तेरे स्ट्रीमिंग करना हार्ड वर्क, हैट्स ऑफ, थैंक यू सुजल भाई. मेरा गला इट्स वर्किंग एट 20% एफिशिएंसी मैक्स. आई विश कि 100% पे होता. बाय द वे चैट, परसों we will have Sahaj Grover joining us, I think on 4th. So we will have some GM expertise as well, and मेरे गले को भी रेस्ट मिलेगा. So मैं चिल्ला अच्छे से पाऊंगा अब. कल बाय द वे रेस्ट डे भी है चैट, कल रेस्ट डे भी है. सो टुमारो विल बी रेस्ट डे. हम परसों आएंगे आज के बाद. अटैक हेलीकॉप्टर है क्या यहाँ पर कोई? अटैक हेलीकॉप्टर क्या है? गलत क्वेश्चन पूछ लिया. प्रदीप सिंह इज सेइंग आई एम फीमेल. इंटरेस्टिंग प्रदीप भाई. Where is Anisha Roy these days? I have no clue, Shivam bhai yaar. मतलब she used to be there on Chess Assist, but अब मैं डीएम तो करूंगा नहीं कि बंदे को भाई स्ट्रीम पे आ जाओ प्लीज. सुमन गिल का भाई ये क्या है भाई? By the way, knight g5 played by VD very quickly. So 16 moves to play in 11 minutes. Identifies a helicopter. Come on, come on, come on. I think Pragg has to take, no? You cannot allow black to take and king upper on f3 pe. No, 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 no. That looks extremely dangerous. Let's just take on g5 from Pragg's perspective. He takes, of course he takes. Black will take back. I am female. Ye lo bhai. Deepa, there is one. There is one in the chat. Ye lo bhai. Bas, khatam. It's not 100% male audience. And कई लोग देखते भी है यार. Like there are people who watch but they don't comment. ऐसे बहुत लोग होते हैं. भाई कौन सा VPN यूज करते हो? I don't use VPN भाई. By the way, 10 minutes now. भाई इसमें क्या सोचना है वीडियो भाई? इसमें क्या सोचना भाई? अच्छा, is he thinking of knight d4? Oh, intermediate move knight d4. Is that the plan? Otherwise तो कोई सेंस ही नहीं सोचने का. I think he's threatening knight d4. I think that's the idea, to get a tempo on the queen. Yeah, he plays it. Plays it. Yeah. कोई क्वींस, यहाँ कोई क्वीन सैक होना चाहिए था यार, मस्त था, लेकिन है नहीं. ये दीपा नहीं, पटना से दीपक है. ये क्या है भाई? Nodirbek the champion saying EV, but Nodirbek is technically he is winning. It's hard to argue with that actually. Come on, come on, come on. I think Queen D1. Yeah, what else? There's no other move, right? I mean, you would not want to play Queen C4. यहाँ पे थोड़ा सा Queen अजीब सी लग रही है मुझे. Queen D1, obvious move. Okay, he's going to play. He moves his hand up, but doesn't play. By the way, 24 minutes for Pragg, so he has enough time. So he has time to think. LOL trap कर रहे हैं लौंडा लड़कियों के अकाउंट बना के. Every chess master was once a beginner. बिल्कुल भाई. And every female in the chat was once a guy apparently. जो chat कह रही है मुझे. अनुज नहीं, अनुजा हूं. अनुजा किसका नाम होता है? By the way, queen d1, pawn takes. Chat, but the problem is, I like the queen on d1. At some point, queen g4, rook h1, h4, and even knight d5. So, Nish bhai, do you think white is already slightly better here? Or am I just kind of overestimating his position? What do you think? Nodirbek is officially world number 5 and 1 point away from world number 4. Wow. So, by the way, Richard game once. Does it matter? That's the question. Pawn g5 पे आ गया है. तो you know that मैग्नस कार्लसन का एक आइडिया है, पता है ना आपको? मैं बोलता हूँ इसको
मैग्नस द साइलेंट किलर टेक्निक, का टेक्निक का नाम है मैग्नस द साइलेंट किलर। का आइडिया ये है G6 क्यों भाई G7। साइलेंट तो सिर्फ मैं the last time I heard the word silent was for farts, so I don't think that's what the context is. G6 King G7 Queen H8 Queen H6 Rook H8। ओ ये क्या हुआ भाई, मेरा लैपटॉप बंद हो गया भाई। भाई बंद लैपटॉप बंद। ओ हो शिट गया। भाई, स्क्रीन फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन फुल स्क्रीन करो, फुल स्क्रीन करो भाई, फुल स्क्रीन करो, बहुत कुछ दिख जाएगा वरना। फुल स्क्रीन करो ठीक भाई। है। ये क्या हो गया भाई, लैपटॉप बंद, अभी तो रिपेयर किया था भाई, आज ही रिपेयर किया यार, मैंने पैसे खर्च किए यार। ये क्या हो गया निरंजन भाई? कुछ भाई जो हुआ सो हुआ भाई, टेंशन लेने का भाई नहीं। अभी फुल स्क्रीन रखना थोड़ी देर प्लीज। एक्चुअली कुछ फुल स्क्रीन रखना, ठीक है? एक्चुअली कुछ कुछ चीजें खुली हुई हैं, मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है। ये क्यों खुली है मुझे मुझे पता नहीं है एक्चुअली। जल्दी से बंद कर देता हूँ। ओके हाँ हाँ ठीक है, आई एम बैक नाउ, वी कैन हैव इट बैक भाई, वी कैन हैव इट बैक, वी कैन हैव इट बैक भाई। हाँ भाई। क्या? चलो चलो भाई, लेट्स गो लेट्स गो। यार मैं चेसकॉम के लिए वीडियो बना रहा हूँ, वो लीक नहीं होनी चाहिए यार, पहले लीक हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा। चलो भाई लेट्स गो गो। बाय द वे knight e6 played by VD now, so he defends the pawn and also controls some important squares. You never know, कल को ये pawn g4 आया, knight f4 might be a crazy tactic. ओ वेट वेट भाई, वेट करते, मेरा अभी भी लैपटॉप थोड़ा हैंग ही हो रहा है भाई। इनका दिख गया, कुछ नहीं दिखा भाई तुम्हें, आई चेक्ड, यू डिड नॉट सी एनीथिंग चैट, कुछ नहीं दिखा तुम्हें चैट, तुम्हारी किस्मत खराब है भाई, यू कुड नॉट सी एनीथिंग। भाई मेरी वीडियो ओपन थी यार, आई हैड अ वीडियो ओपन एक्चुअली, दैट्स द थिंग, वो रिवील हो जाएगी तो मजा नहीं आएगा यार। 96 now, come on, 22 minutes for Prag, double the time of Vidit। भाई मेरा लैपटॉप अभी भी हैंग हो रहा है निरंजन भाई। यू कैन सी मी नो एंड हाँ हियर मी? भाई। यू कांट सी मी क्या? I can see you भाई, you can see the हाँ तो world, I can see you, the हाँ तो world लगा can दो see फिर, the कैमरा board, वाला the लगा दो, world can लगा see दो, you, लगा दो, बोर्ड the लगा दो। world can see Vidit and also Praggnanandhaa, David Navara in the background, clock हाँ timings, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। logo, सो tournament सो माय name। लैपटॉप, क्या बोल रहे भाई? भाई माय लैपटॉप इज स्टक बट स्टिल आई कैन मूव इट अराउंड अ लिटिल बिट, तो ठीक है चलेगा। रेयर्स का मिरेकल भाई। वीडियो लीक्ड भाई? कौन सी वीडियो बताओ फिर, लीक थी तो बताओ भाई, कौन सी लीक है भाई, बताओ भाई क्या लीक हुई, बताओ ना, बताओ ना भाई, तुम क्या लीक हुआ फिर है, क्या लीक हुआ भाई? साइलेंट टेक्निक क्या है, लैपटॉप ही साइलेंट हो गया भाई, एग्जैक्टली exactly. कुछ ज्यादा ही साइलेंट था भाई, साइलेंट के बदले वायलेंट हो गया। एनीवे चैट, बाय द वे गेम शार्प होती जा रही है, कहां है हम भाई, गेम पे देखते हैं। हाँ, सो बोथ प्लेयर्स फोकस्ड एंड वी हैव 21 मिनट्स फॉर प्रग, 13 मोर मूव्स टू गो, सो थोड़ा सा आसान हो गया है प्रग के लिए। हमारा एडवांटेज ये होता है कि गर्ल सेक्शन में ज्यादा प्लेयर्स नहीं होते। आई लिटरली वन 2 चैंपियनशिप ऑफ दैट, बट आई हैड टू प्ले विद बॉयज, आई वन 6/7। So, crazy world, that means you are a female person in the chat, that is awesome, that means it's not 100% male। चेसर हमसे निवारिश है कि चीजों की सैलरी एडवांस में दे ताकि वो लैपटॉप खरीद सके। भाई आज ही 12,000 रुपए फूके है भाई लैपटॉप रिपेयर करने में, सो होपफुली आज तो नहीं क्रैश होगा यार, आज ही 12,000 रुपए पानी में गए लिटरली। बाय द वे गुकेश की गेम में कुछ तो हुआ है। बाय द वे प्रग प्लेस क्वीन जी4, Nodirbek has already won the game, he's already won one, look at Gukesh, by the way he has played g4 directly, it's not the best move but it's the second best move, also works. Bishop h6, now bishop c3, awesome move, not trading the bishops, knight d4 and now h5 might be amazing. So that means Gukesh is close, he's doing really well, really well. He did not find the best move but found the second best move, so still okay. Going to the game of Vidit against Pragg, जहां पे after knight to e6 queen g4, the move I was suggesting, and my idea was to play rook h1 h4 queen takes and queen h8 mate. That was a simple plan. Black I think will play c6 to kick the knight away, but this knight can be rerouted to f5 as well, so it's not a done deal. I do think Pragg is clearly better practically. Whether he can convert this will be time will tell us by.
How can I improve my endgame? I would say look at your two ways. Study some endgame book. Second, look at your own games, the final few moves, and see where you go wrong. उससे बेटा तरीका हो नहीं सकता भाई. 12,000 पानी में गए. अरे नहीं ऐसे मत बोलो यार. मछली में गए 12,000 चिपक, जो नीरज भाई बोल रहे थे मुझे. Nodirbek has peak world number 5. He has already cemented as next gen top 10 rival, prime rival of Indian youngsters. I agree. He's already world number 5 and he can go even further. By the way, chat, 9 minutes for VD now. 13 moves in 9 minutes. What is the counter to this plan, Niranjan bhai? I can't see it yet. The queen can't move up. CCC khelna padega. That's the only try, I think. VD opponent. निरंजन भाई तो आज थोड़े से मुझे ज्यादा ही HIGH लग रहे हैं. देखते क्या होता है. ये DSB क्या है? व्हाट इज DSB? मिल्टन ने स्पॉन्सर. क्वीन H8. भाई ये F6 तो बड़ा खतरनाक मूव है रे, बिकॉज बिशप इतना बैड हो गया है. मिल्टन ने स्पॉन्सर किया. डेली न्यू कलर की बोतल दिखाते हो. नहीं भाई, ऐसा मिल्टन ने स्पॉन्सर किया होता तो भाई तुम्हें पता होता भाई, स्पॉन्सर डिक्लेयर करना पड़ता है. बाय द गोइंग टू द गेम और गुकेश कुछ हुआ है वहां पे. अपेरेंटली चार एक्साइटेड हो रही है, बट कुछ नहीं हुआ है भाई. सिर्फ नाइट D4 हुआ है. यहाँ पे H5 शुड बी प्लेड, क्योंकि ये पास पॉन है. अगर ब्लैक मारता है then we can take, the rook gets active, the bishop is attacked, and if he plays G5 then we have a passed pawn. We can even take now and put this passed pawn on H5 forever, and this should be winning for Pragg as well. Sorry, Gukesh as well. So going back, current position ये है. Going back to Pragg against Vidit. Let's see क्या होता है. क्या मैं गौतम से इस वीडियो देख के 2000 प्लस कर सकता हूं? कर सकते हो भाई, बिल्कुल पॉसिबल है. By the way, Bishop F8 question mark. Vidit का क्वेश्चन मार्क है ऑन द बोर्ड. एज आई सेड, दिस इज नॉट इजी. है ये मुश्किल. हमारे सामने पीसेस के पास स्क्वायर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल अब तो G6 पॉसिबल ही नहीं है. नाइट F6 वुड बी फोक, विन द गेम ऑन द स्पॉट. सो क्या करेंगे अब? चैट, मेरा H4 प्लान बहुत उम्दा लग रहा है मुझे अभी. बहुत अच्छा प्लान लग रहा है मुझे. H4 rook H1. आई रियली लव दैट. E5 pawn is also hanging, by the way. Black का I think idea had to play C6 to grab this D3 pawn. That is the plan. VD under pressure. Pragg क्या खेलेंगे यहाँ पे? Let's see. Pragg बोर्ड पे आगे बेंड होके बैठे हैं. He knows he's better, I think. He understands कि प्रेशर है पोजीशन पे. VD के लिए डिफिकल्ट है ये गेम, बहुत डिफिकल्ट है, स्पेशली विद टाइम. 12 मूव खेलने 8 मिनट में. That's literally just 45 seconds per move or something. दिस डार्क कलर, ये अमे भाई को देखो. DSB मींस डार्क कलर बिशप. देख रहे हो तुम देख रहे हो अंग्रेजी का उपयोग. DSB मींस डार्क कलर बिशप. स्टैंडिंग ओवेशन देता भाई तुम्हें अगर मैं मतलब कुर्सी पे नहीं बैठा होता अभी तो. भाई 19 मिनट है प्रग के पास. He has enough time to calculate this stuff. First of all, if bishop E5, I think C6 will happen and black is kind of back in the game. So यहाँ पे एक मूव है D4. इसका आइडिया मुझे क्लियर नहीं है. समझते हैं हमारे इंजन दोस्त से. He takes D4 and now H4. So why not H4 directly? If H4 directly, then इंजन भाई, मेरा एक कंप्लेन है आपसे भाई. कस्टमर केयर लगाओ स्टॉकफिट भाई. जब मैंने कहा H4 खेलो डायरेक्ट, तो आपने दिखाया कि भाई D4 ज्यादा बढ़िया है. पहले D4 पॉन देने का. जब मैंने खुद H4 खेला अपना चाल, तो आपने कहा H4 बढ़िया है. भाई ये काहे का कंफ्यूजन स्टॉकफिश भाई? क्या हो गया है भाई? क्या मजबूरी क्या है भाई? एक मूव बताएं, उस पर टिके रहें. लाइफ में ऐसे पलटी ना मारे भाई इतना जल्दी. कमिट करें भाई एक मूव को. हु इज टिक्कू भाई? टिक्कू भाई आपको क्या निरंजन भाई? स्टॉकफिश का उत्तर आया भाई. क्या कह रहा है वो? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं. अगर ऐसा कभी लगे तो समझ लेना आपको कहना है ऑल इज वेल. निरंजन भाई आपको सच में 3 इयर्स में होना चाहिए था भाई. मुझे लग रहा है चैट सही कह रही थी. आपको 3 इयर्स में होना चाहिए था. रणछोड़ दास छाछट एज निरंजन नवलगुण. सॉरी, नवलगुण. क्या बोल रहा हूं मैं? नवलगुण निरंजन एज रणछोड़ दास छाछट. क्या मस्त होता है यार. वैशाली ब्रूदर. ब्रूदर मतलब जर्मनी ब्रदर होता है भाई.
क्या किया वैशाली ने? ओ वैशाली apparently blundered. Bishop f5 was a blunder here. यहाँ knight f6 मारना था. She played bishop f5 with the idea of getting the rook in, but black ने मारा ही नहीं. Queen c7. Vaishali is again struggling. Interesting. Stockfish inspired by Niranjan भाई. भाई आप गेम लाइव कब खेलोगे? भाई मैं लाइव गेम खेलूंगा तो तुम लोग रोक पड़ोगे यार. तुम कहोगे इस बंदे को टाइटल किसने दिया? कौन है ये बंदा, टाइटल दिया इसने? बाय द वे h4 प्रग मेरी मूव खेला भाई, समझ रहे हो? मैं और प्रग बराबर है भाई, इक्वल मतलब एटलीस्ट फॉर 2 मूव्स इन द गेम. h4 प्लेड एंड जो मैंने कहा था शायद h4 रुक h1 का प्लान आ रहा है विदित के लिए बहुत डिफिकल्ट बिकॉज ही कांट इवन प्ले g6 नाइट f6 रॉयल फोर्क, मतलब लिटरली रॉयल फ्लश सुना होगा तुमने, रॉयल फोर्क्स देखो भाई आज तुम. Vaishali is somehow kind of equal now. She blundered a game and now the queen is back somehow defending everything. So Vaishali is no longer winning this. Kafi complicated. And h4 के बाद Vidit plays the best move and the only move, that is c6. And chat यहाँ पे Pragg can already sacrifice a piece. He can play h takes g5, c takes d5, rook h1. We are moving towards an attack. And यहाँ पे विदित के पास only move is knight takes g5, queen takes g5, d takes e4, d takes e4, and now f6 to escape with the king. But even here queen f5 and white is still dominating. Vidit is under huge fire here. Pragg is about to sack a knight. Pragg is about to sack a knight. Can we have full screen and watch him sacrifice the piece? Niranjan bhai, let's see. Full screen board ke saath. Let's go. Will he play h takes g5 and sack the knight? Let's have a look. Oh, he's thinking. I can see his eyes wander over the pawn on g5. 8 minutes for VD to play 11 moves. And has he taken it? No! He plays knight b6, the second best move in the position. He doesn't sack a piece. He wants a safe advantage. Now rook takes d3. Only move for Vidit. But an obvious one, of course. One look at Gukesh's game. By the way, b4 play Gukesh. Good move, trying to destabilize the knight. Going back to the game of Pragg against Vidit. मुझे chat पे हंसी आ रही है. Chat थोड़ी सी crazy है. Rook takes g3 now. I think h takes g5. Normal move. He has to play it. He takes on g5. Now Vidit, what will he play? Will he play bishop e7 to attack this pawn? Yup, we have the full screen chat. Let's see क्या होता है. This move might be really important for VD. Yes, he hype करता है. Chat hype तो कर रहा है. Attack लग रहा है भाई. Attack लगने लगे तो भाई मेरे सारी बॉडी ऐसे वो गूज़बम्स आने लगते हैं भाई. Come on. We need an attack. We need a defense. We need a tough fight. दोनों players बस आग लगा दे बोर्ड के ऊपर. 7 minutes for VD now to play 10 moves. Oh, it's not easy. मतलब it's usually should be okay in an endgame, but this is not an endgame. This is a position जहां पे sometimes you might need 20 minutes to think कि भाई अटैक बचाऊं तो कैसे बचाऊं. VD has been in great form, but क्या वो continue कर पाए वो great form? That is the question. Chat stream like करो. Let's get to 500 likes. समोसा की अभी नहीं हुआ है. 369 likes अभी नहीं हुआ है. VD thinking. Pragg का focus देखो. He knows this is the moment. अगर उन्होंने ये moment miss कर दिया, he will not get one more. यहाँ पे Pragg can play bishop e7. The idea is to grab this. So white can take on e5. Black can take on g5 with the bishop. And then we'll see a game. Or he can play a pawn move like g6 to try and block this. And if you take, then there is queen takes e6. But that's not possible. So what else? If knight g5 maybe. But now bishop e5. It's very complicated. For example, now we are entering Indian territory here. Knight f3, 4 king pieces. Bishop c7. क्या ही move है? Knight e1 check, rook e1. And now rook at d4. And now bishop. Dude, this is itni. I'm showing this because how complicated the game is. And Vidit has no time on the clock. 6 minutes for 10 moves now. He needed time here. This is what I was saying. कि टाइम की जरूरत है बहुत ऐसे पोजीशंस में. नवारा ब्लंडर्स कह रहे हैं. One look at the Gukesh game.
Has he blundered? He's played f5, bishop drop d1, and now 92. That is a big mistake because that was the advantage you had. I can simply chop it off, chop it off, chop it off, chop it off, play h5 or even rook g1. And I think ye f2 pe jo unka attack here, I can always stop with bishop e1, and this should be winning for Gukesh. It's not easy to convert this. Black has counterplay, but this should be winning by force now for Gukesh. Going back to Vidit against Pragg. Pragg against Vidit. Vaishali has 2 minutes and needs to play 10 moves. That's even worse than Vidit. And rook e8, Black finds the best move. So Vaishali is struggling right now. We'll come back to this. Are we going to see blunders carry a kingmaker? Absolutely. Because 5 minutes से भी कम है VD के पास और 10 move चलने. Looking at, look, he looked at the clock. Again looked at the clock. He's panicking now. Finally, we can see that panic. Can you see that panic? Or is it just me? I think we can see the panic now. Oh, hands folded. हाँ भाई, we can see the panic. 4.5 minutes. हाथ उठ रहा है, but confirm नहीं है VD को move. He needs to find bishop e7 or knight d4, also another possibility. He needs to find one of these moves. What did he play? He plays the best move, bishop e7. VD finding all the best moves, even in time pressure. This is what we need right now. Best moves from both sides. And then whatever happens, happens. Because candidates ke liye, we need both players in form. Perfect. Let's have the full screen now with the board and everything. 90 plus 40 नहीं है भाई, 90 plus 30 seconds increment, and जो 40 minutes है वो 40th move पे मिलेंगे. 30 minutes जो है फिलहाल के लिए 9 move और खेलने हैं 5 minute में. It's not easy because the position is complicated. Pragg is attacking. And just to add context, Pragg के लिए भी इतना आसान नहीं है. It's not like Pragg has all the time in the world. And ideally, Pragg would love to sit down, think here for like 15-20 minutes, and then find the best variation. So even he doesn't have that much time, at least how much he would like. So दोनों के लिए कहीं ना कहीं it's difficult. And जो Pragg का time है, VD is also using right now. Now he's not roaming around. Roaming खत्म हो चुकी है, plan prepared ही है सब. Come on, VD at the finest. बिल्कुल बहुत tough game. 1800 वोट है chat. Can we get at least 500 likes? जल्दी से. Blunders incoming. बिल्कुल. Chat, we are going, and chat, don't forget, Pragg has blundered twice in this tournament under time pressure. So he would be nervous here. He would be thinking, I don't want to blunder the third time in 4 games. So he will not be confident enough to find the critical move maybe. So VD might get a chance to come back. We never know. Gukesh game ka update deta hun chat quickly. So he played the best move. Bishop e2, rook e2, bc5 played. And we might just see rook b2 actually. Brilliant move here. Getting rid of the double rook advantage. If check, then we take... Oh, mari raha actually. King b2 khelne wala tha. It's not impossible. So marna padega. Rook takes, bishop takes. And white is just winning this. Good bishop pawns against bad pawns. And rook g1 incoming. h5 incoming. This should be winning for Gukesh. Going to game again. Checking to Shali's game funds. 8-9 moves in 2 minutes. Not easy. We'll come back to this in the last couple of moves. Still Pragg thinking. Some other time, chat. We will do a challenge once the game finishes. Okay? Once this game finishes, we will do a samosa challenge. Abhi distract nahi karna tha main game se logo ko. So mujhe yaad rana, once this game finishes, we'll do a samosa challenge. VD showing top defense indeed. But can he continue? By the way, Pragg has played something. He plays the best move, g6. This is exactly what I want. Bhai, dono log best move pe best move khelte rahe. Now he has to find... Chad, yahan pe you can't take because knight is hanging. So what do you do? Rook is coming to h1. Bishop e5 is incoming. कोई गाना सुनाओ भाई. अभी गाना वाना नहीं भाई. Come on.
Oh, bishop g5 played. That's one of the best moves in the position. Not the best one, but a good one. Blocks the queen's access, attacks the rook. We will have g takes f7 check because now the knight is defended. So f takes g6 is a threat here. So VD को एक दो move लगातार खेलने को मिलेंगी. Pawn takes, queen takes will help the clock situation here. Nodirbek has already won. They will reach time control. If they reach time control, then also we can do that. Also works. If they reach time control, we might have a winner if it's for the 40th move by, because 8 moves to go. 8 moves is too long. You can't go rook d1 here because black will capture. So where do you put the rook? Do we play rook c3 here? After takes, of course. Oh, Pragg went to the washroom, I think. Oh, VD now stressed. Oh, VD. Pragg went to the washroom. Acha. Oh, Pragg is not at the board. बाप रे, Pragg board पे नहीं है. VD ने बिल्कुल जल्दी से move खेल दी, saving some time on the clock. I'm pretty sure Pragg's bathroom break would have been on his mind as well. Can we have full screen? The Pragg aata hai chat. Can we have full screen? With the VD and वो वाला Ranger bhai. The VD cam only. Vaishali game फिलहाल के लिए she's fighting. I think yeah, you can see Pragg is no longer there. VD pressing the clock, using Pragg's time, and Pragg hurries back. He knows there is no time to waste. 2-3 मिनट निकल गए भाई Pragg के ऐसे ही. Not the best time to go susu here, I think. क्या बोल रहा हूं मैं भाई, पागल हो चुका हूं मैं. Pragg और पानी पी रहा है. VD thinking, VD focused. Let's go back to the board, Ninja bhai. Let's go back to the board now. VD staring at Pragg there. Pragg staring at VD there for a while. Hoof man, tense moments chat. 8 moves still. And chat, question for you. Do you think 8 moves tak we will have a clear winner? Or do you think the game will be roughly equal 8 moves baad? What do you think? Equal, or we will have a winner by then? Like when 8 player clearly winning hoga at least. What do you think, chat? Will we see a blunder in the next 8 moves? I think probability is very, very high for that. I would love to know your opinion, chat. Look at VD, look at Pragg. VD made quick move smartly. I agree, man. That was a smart decision. Like it's fair game, I think. It's fair game. Equal कह रहे हैं मेवाड़ा जी. राहुल भी equal कह रहे हैं. निखिल भी equal कह रहे हैं. जानवी equal. Wow, Vedant सब equal. Shubhan equal. सिर्फ Deepa is the one so far saying winner. Ashutosh by saying Pragg. Oh, Pragg about to move. We can see Pragg about to move, standing up straight. Like ऐसे पूरा, काश मेरा posture भी इतना बढ़िया होता. Chat stream like करो. Almost 700 की watching है. Can we get to 769 watching आज? Do you like the stream? Like से watching बढ़ेगी भाई. Let's go. Hit the like button, chat. 46% people saying Pragg will win. 28% VD. Come on, chat. Let's go. Pragg. Winner, Pragg. भाई Pragg को पूरा support मिल रहा है chat में. Chill. Okay, now come on. Vaishali वहां से कुछ खेलते हुए. Yeah, Vaishali game still sharp game there. Pragg is not moving. Even Pragg under time pressure now, slowly moving towards time pressure. And we know what has happened in 2 games. Okay, still not moving. Holding his hands together. Man, it is tough. Yeah, chess is hard, man. Chess is really hard. You cannot lose concentration even for a second. 1 second के लिए आप lose नहीं कर सकते. The game would be over, chat. Come on, Pragg. 11 minutes now. You have to take, I think. Otherwise, I don't want, like from White's perspective, you don't want him to take this. Takes, queen takes, and rook c3 seems logical. Exchanging one active rook, which is very dangerous in Black's camp. Nejvek, can we have full screen for a second? No, he's about to move. Wait. Let be. He's about to move. Okay, Rendo. Full screen Rendo. Let's see what he moves. Oh, Vidit also nervous now. Staring at Pragg for a second.
अब बिल्कुल उबासी नहीं आएगी चैट. दिस इज टेंस मोमेंट. यहां बॉडी पूरी क्लीन शार्प हो जाती है. एंड ही टेक्स ऑन f7. क्वीन टेक्स f7. Vidit quickly plays it. Doesn't waste a second also. Good practical play there. What now? What now? Tribal dance incoming. ये क्या है भाई? Tribal dance कहां से आ गया? Come on, come on. Chat like बढ़ा भाई. 700 watching touch करनी है. 696 है. Come on, let's go. Vishali game, by the way. It's still looking black, looking better now with no time on the clock for white. हमारी वॉचिंग और गेम की टेंशन दोनों पीक पे है भाई. 697. बस 3 वॉचिंग दूर है भाई. 7 तो टच नहीं कर रही. कम ऑन चैट लाइक करो भाई. ओ प्रग अबाउट टू मूव देयर. टेंस मोमेंट्स. यही लोग एक ही टीम में खेलेंगे ओलंपियाड बाद में. जस्ट इमेजिन. गुकेश गेम एक नजर मारते हैं. गुकेश गेम में बाय द वे वी हैव अ few moves. Yeah, bc5. We saw rook b5, bishop f8, rook b2 back, takes, and now king c7. So white is winning. Gukesh will convert this game, chat. So he will go to 3.5 points. Gukesh will win this game. But what will happen in this one? 4 minutes, 9 moves to make. He should be okay because काफी simple game है उसके लिए. Come on. 700 ज्यादा वॉचिंग. क्रेजी भाई. 700 टच करते हुए. बढ़िया. कैन वी गो टू 800 चैट? जल्दी स्ट्रीम लाइक करो. लेट्स गो 800 वॉचिंग. जल्दी से 800 करने की कोशिश करते हैं. एंड बाय द वे rook c d1 played. Pragg is trying to exchange the rook. Oh, that might not be the most ambitious choice there. Let's see what happens now. Let's go back to the board, bhai. Let's go back to the board, yaar. Or shall we keep this? What do you think? Let's go to the board now. Let's go to the board. Let's go to the board. VD now has to find what? How many? 7 moves. 7 moves. Okay, Gukesh game की बहुत demand चल रही है. One look at Gukesh. Can you have full screen, bhai? Like with the board and everything. By the way, this is the current position. Board Gukesh की position ये है chat. He's a clear pawn up. This pawn is weak. This pawn is weak. This pawn is weak. Rook g1 incoming. He should win this comfortably. There is no stress whatsoever. Black cannot activate the rook. The king controls. Gukesh should win this. There's no stress whatsoever. Going back to the VD Gukesh game. Pragg, sorry. Pragg पानी पीते हुए पीछे देखते हुए. We're still thinking 4 minutes now for 7 moves. Roughly 2 minutes per move for Vidit. VD should trade both rooks. Chill, please chill. Rook exchange would help VD. I don't know, man. It would. But Pragg को decide करना है. For example, if rook takes d1 here, rook takes d1, rook takes d1, queen takes d1, who does it help? I'm not sure because e5 pawn is still hanging. So it's still hanging. Bishop f6, then queen g4 back. It's still very complicated. The game is not over yet. Black structure is kind of broken. Abdu world number 5 now. We saw that. Anybody who's joining in now, we have a lot of updates for you. First of all, update about the game. Gukesh is completely winning against, I think, Navara. And VD and Pragg are playing a crazy game right now. Pragg is slightly better here. And both players into time pressure. And even more importantly, chat, for the candidates, Fide had an update yesterday via Twitter that people are facing issues with the visa process. So, agar ek hafte mein sabko visa nahi milta hai, the candidates itself might shift from Canada to Spain, और हमारे लिए वो बहुत बढ़िया होगा because the time will shift from 1 a.m. to 6 p.m. रूक एक्शन में ड्रॉ के चांसेस बढ़ तो जाएंगे भाई, ये बात तो है, because there are less pieces on the board, so more scope, and also it will give Vidit some time. Yeah, they will reach the 40th move and he will have more time to think. By the way, bishop d2 by VD. Apparently that's a mistake. After rook to f1, Pragg is better again. Chat. Bishop d2 क्या move है भाई? What is the idea of this move? Looks extremely dangerous, chat. What a move, bishop d2. But what happens on rook h1? This is the plan. It's a trap. Rook h1, bishop e3. That is the trap.
Vidit has set up a trap for Pragg. I don't think Pragg will fall into it. I think because Pragg was blundering, Vidit has set up a trap for Pragg. This is how your previous game influences the game now. If Pragg plays rook h1, the most logical move, bishop e3, and Vidit is better. VD is better than I think. So the important move, what will he play? Rook f1, Pragg is better. Rook h1, VD is better. We'll look at how. Let's just stick to the live game right now. Baapre, chess is tricky, man. Super tricky game. 6 घंटे, 5 घंटे, 4 घंटे के बाद एक मूव में Pragg taking his time now. Luckily, he has more time here. That's why he might save himself. Rook h1, what a natural move. But bishop e3 threatening queen f2. And if you take the bishop, then rook d2 check. If rook d2, rook d2, king h3, and now g5 with queen h7 mating coming, Pragg loses the game. So that's why, what a trap by Vidit. What? Gukesh blunder. Oh my God, kya baat kar rahe ho? Oh, Gukesh has also blundered apparently. Oh no! He allowed the rook trade. Gukesh has blundered the game away. It's a draw now. No way he blundered. Wow. He completely blundered the game away. It's crazy. What's happening? This is the power of time pressure, chat. No. Let's stick to this game फिलहाल के लिए. Oh my God. Time pressure is crazy. Chat, if these players have to win the candidates, they cannot make these mistakes. They cannot do so. Yahan pe rook f1 has to be played by Pragg. He has to find that move. Rook h1, amazing for VD then. We can support both players, so it doesn't matter which one Pragg plays technically, but yeah, based on which is the favorite player, Pragg or VD? Who do you want to win this game? Come on, jaldi spam karo. What is your choice? Do you want Pragg to win? Do you want VD to win? हर किसी का फेवरेट तो होता है. बताओ चैट, बताओ शर्मा मत चैट. 800 watching की तरह बच्चे में 769 watching. Let's like the stream, chat. Let's go to 800 watching जल्दी से. Baapre, 6. Oh, rook e2, also a decent move. Not the best move, but it's now roughly balanced again. Roughly equal again. Now, only move is bishop c3. The bishop is now under huge pressure. VD बहुत spam हो रहा है. कुछ लोग Pragg भी spam कर रहे हैं. साहिल टिक को एक बंदा बोल रहा है. एक बंदा मुझे गालियां दे रहा है for some reason. विशी आनंद के भी नाम आ रहे हैं. Going at the game of Gukesh. Oh, he plays bishop e1. He doesn't allow the rook trade. But there is bishop g7 and bishop c3. But bishop g7 is the only move. If Navara misses this, Gukesh is again winning. So it's good trap there by Gukesh there. Maybe he can confuse matters. Arey baapre, rook e2 now. What does Vidit play? Only 2 minutes. 2 minutes to play 6 moves. हिमाचल का कल्चर अच्छा नहीं है भाई. मेरी एक्स भी 2-3 हिमाचल से थी भाई. बहुत गाली देती है मुझे वो भी. आप ही तो नहीं है वो. Which Indians are in candidates? तीनों, all 3. Gukesh, Pragg, Vidit. भाई फुल जीपी कौन है भाई? ये जीपी कौन है भाई? Come on, VD, faster. You have to play this. Bishop c3 is the only move, chat. Is the only move. Rook takes d3, rook takes d3, bishop takes, rook takes, and the game is roughly balanced with black having the d4 square. So he has to find this move. And he finds it. Dude, what a game, man. What defense by VD. Okay, this was not so difficult, this one, but still finding all the best moves in time pressure. Nodirbek absolutely Nodirbek in crushing form right now. Also watching तरफ बढ़ते हुए chat. Like करो stream भाई. हाथ देखो विदित के कहाँ है यार. So focused. Can we have full screen for like a minute? Would love to see. Yeah, thank you Nanj भाई. Perfect. पीछे से ये बंदा चलता है. कौन है बंदा? कितना चलता है यार? On rook takes d3 on the board. Yeah, Pragg takes on d3. Vidit captures back immediately, not wasting even a single second. Now, will we see bishop c3 on the board? I think it will happen on the board as well. Few exchanges gives Vidit time on the clock.
4 moves to the time control chat. 4 move pending hai. He plays knight to c4, attacking the e5 pawn. Pressure on Vidit again. Queen f6 maybe, trying to save the pawn. First, he could take on b2 as well, also possible. Chat, there are still 3 more moves to go for Pragg and 4 for Vidit to the 40th move, जहां पे उनको और टाइम मिलेगा. विश टू ऑल 3. ऐसा नहीं चाहिए कैंडिडेट्स में. गुकेश की टीम में थोड़ा फोकस कर लो भाई. गुकेश क्यों फोकस करते हैं भाई? गुकेश अगर हम जाएं एक बार, सो वहां पे बिशप g7 निकाल दिया नवारा जी ने. सो आई थिंक चैट this might as well be a draw now, because rook b3 के बाद both pawns are hanging. Brilliant move by Navara here. You can't take on g6 because bishop c3 pin would lose the bishop. So Navara is just, man, Gukesh blundered the game away in 2 moves, man. We have to hope that he comes back somehow, confuses Navara here. Now Vidit thinking, taking on b2 is like offering a draw. Not so sure yet. Not so sure. This e5 pawn is still a weakness. Black's king is weak. Look at the difference, chat. White has 3 pawns in front of the king. Black has only 1. This diagonal is open. The back rank is open. The h file is open. White's king is much safer here. Not exactly perfectly safe, but safer than the black king. Oh, Vidit thinking, panicking there. Less than 2 minutes now. What will he play? He plays the best move, queen f6. And chat, yahan pe white ke paas ek move hai, bishop c1 to bring the bishop here. Or he can also take on c3, both possible. 3 more moves for time control, chat. 3 move ke baad, they will gain time on the clock. Vaishali game update. What's happening? Vaishali is losing now. She gave the game away in time pressure. She was completely winning. Time pressure aaya. Now she's losing. So that's the power of time pressure. That's why players have to be careful. It's not about the play. Time pressure mein har koi galti karta hai bhai. It's so important to maintain that time. Going back. Is Magnus playing candidates? No, he's not. Kitna focus hai yaar. They cannot face a single second right now. You know, imagine having 5 minutes, 2 minutes on the clock, calculating 10, 15 moves deep. यहाँ पे 2 move deep में ही पता नहीं कितना time लगता है भाई. Oh, with it hydrating himself again. Crazy moment. ये बंदा कौन है भाई? बहुत वर्क करता है अरे बंदा. पता नहीं कौन है यार ये. 800 वॉचिंग की तरफ बढ़ते हुए हम लोग. 793 वॉचिंग चैट. क्रेजी. Pragg आगे बेंड होते हैं. Still not moving. 5 minutes for Pragg still. He has enough time on the clock. Let's go to the board, bhai. Let's go to the screen with me and the board and the cameras. Let's go back. Ranjan bhai. Yup. Gukesh game update. What's happening there? He plays king g2, gets out of the pin, but now rook b3 and black will one of the pawns. So I think Gukesh unfortunately has spoiled his advantage completely here. I don't see any clear edge now for Gukesh, unfortunately. The d3 pawn falls and the a3 might fall, and yeah, it's not looking good. It should be a draw now for Gukesh. Pragg trying to come up with the best variations. Will he play bishop c1, maintaining the pieces on the board, avoiding the exchange? That might be in white's favor. Nodirbek has already won, Dhananjay bhai. He's already won. He's already world number 5 right now. Come on. Boiling down to the wire now. Going down to the wire. Come on. What's the fit rating of all players in comments? Chat अपनी rating लिखो सब. Let's see. कितनी rating है भाई? Vidit looks unhappy there for some reason. Okay, Pragg under time pressure as well now. 3 moves in 4 minutes. Not super comfortable if you ask me in such a position. No, bhai, this game has been highly instructive. If you look at the accuracy, Pragg's accuracy is 96.7 and Vidit's is 96. It's not low accuracy at all for classical. 1600, 1500, 1100, 900, Pratham 1600, minus 2000, 1485 FIDE, 1700, 300 वाला
300 वाले कौन है भाई? कर दिया भाई, इग्नोर कह रहे हैं कुंवर जी। 2350, बाप रे। 628, दैट्स ऑसम भाई, रेटिंग डजंट मैटर। 2657 कौन है भाई? सर आप ही आ जाओ कमेंट्री में, मैं क्यों कर रहा हूं? 6000 वाले भी है सर, आप सर पे बैठ जाओ मेरे। 1777, दैट्स अ कूल नंबर। 80 रेटिंग किसकी होती है यार? एनीवेज, सो बाय द वे 3 मिनट्स नाउ, 3 मिनट्स। Oh, Pragg still not moving, still not moving. 2 minutes. Time has equalized. That is crazy. Pragg is biting his lip still. He's not convinced with a particular move. 2898. Wow. इसमें सपने की कितनी है और खुद की कितनी है भाई? Oh, what does he do? Only two options possible, I think. Logical ones at least. Still not playing. Are we going to see a blunder from Pragg here? Because we know what happened in 2 games in this tournament. ऐसे ही time pressure में he gave the game away in 1 move. फिर ने 4 फिर सबको बढ़ा दिया. I know. Pragg is also in time pressure. Exactly. मेरी रेटिंग कितनी है? -2200 फिटे भाई. ब्लू शॉट कितने में आता है? हाँ, ब्लू शॉट वाला बहुत वॉक करता है. ही लव्स वॉकिंग अपेरेंटली. कुछ स्टेप्स का कुछ काउंटर होगा उनका, बहुत चलते हैं वो गेम के बीच में. And he takes, and Rook takes immediately. Pressure back on Pragg. Vidit के moves काफी simple लग रहे हैं because he's just capturing pieces, yeah. Pragg is the one who's being forced to calculate. 93. So Vidit can win a pawn on a3, chat. What is the pawn situation? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. So VD can now win the pawn on a3. Does Pragg have sufficient compensation here? It's getting really sharp. 2 moves to go to the time control. I'm secret 2700 GM. बढ़िया है भाई. Oh, Pragg has both players 2 minutes. पानी पी लो भाई, पानी है नहीं, खत्म हो चुका है पानी अब. Will VD grab the pawn, chat? I think he can. He can also play Rook D3, controlling the open file. Because Pragg's next move will be Rook D2, chat. That will be his next move with Rook D7 ideas. And he grabs the pawn. Pragg, Vidit is a pawn up now. So the game is becoming really sharp. It's कौन लोग थे ड्रॉ वाले भाई? मुझे ड्रॉ होता दिख नहीं रहा अब ये. Very unlikely a draw now, chat. Very unlikely. Are you trying for IM? नहीं भाई. I'm going to support the Indian players becoming super GMs, not becoming an IM myself now. If Pragg wins, टिकू भाई सबको 1000 रुपए प्रीटिंग करेंगे भाई. मेरी नेटवर्थ इतनी नहीं है भाई. 800 इंटू 1000 कितना हुआ भाई? 800 इंटू 1000 80,000. 800 इंटू 1000 कितना होता है भाई? 800 8000 80,000 8 लाख. ठीक है, नेटवर्क तो है बट स्टिल भाई. सड़क पे नहीं आना. आई एम सीक्रेटली द पर्सन हु क्रिएटेड चेस, कह रहे हैं मैड मैक्स जी. भाई 1 minute for Pragg now. It's getting, Pragg has half the time VD had. So now it's getting उल्टा हो रहा है भाई. If Pragg blunders by chance यहाँ पे, so I mean, I don't know how he comes back from that. I really don't know. 3 games out of 5 games is going to be extremely difficult. And he finds the best move. Rook D2, coming up to D7. Will play knight D4, blocking this. Pragg has completed 40 moves, and we have touched 800 watching, chat. Pragg has completed 40 moves, so he will get more time on the clock. Last move for Vidit. Will he blunder on the 40th move? We have seen it happen multiple times. 40th move पे blunder होता है.
गुकेश गेम अपडेट लेते तब तक के लिए. Oh, it looks like a draw, chat. Bishop d2 takes, bishop d2 b2, a4, bishop f6 back, bishop e3, king b6, king g2, and the game will be a draw for Gukesh. He is not winning this. Going back to the game now. Last move for VD. फिर हमें ओ सॉरी वीडी भाई, खेलो 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 ओ अरे खेल ही नहीं रहे हो यार. खेलो भाई, खेलो खेलो. अब नहीं बोलूंगा. Knight d4, excellent move. And with this, chat, we have reached the 40th move. So time now. Vidit gaya washroom ya pani peene, I don't know. And now it's time for Pragg to think. Chat, the game is roughly balanced. White has one less pawn, but Black's king is weaker. But I still don't think this might be a draw, because clearly Black के पास एक pawn extra है, and he can queen that pawn later in the end game. So फिलहाल के लिए White is forced to attack. Maybe he plays knight c4, maybe he plays knight f5. We don't know what he will play here. 40 हो गया तो समोसा दे दे. समोसा चेंज समोसा करेंगे भाई, अभी करते हैं. Where is OG Anish? Anish is playing in Shenzhen Masters. ठीक है भाई, चैलेंज करते हैं. समोसा चैलेंज, सिंपल क्वेश्चन, जल्दी से. जो पहला बंदा सही आंसर देगा, that guy wins samosas from me. You can DM me on Instagram. The challenge is, जब तक के लिए मूव चलते हैं, what is the date of the Ambani wedding this year? Actual date क्या है अंबानी के बेटे की शादी की, वो बताओ भाई डेट. And the first person to guess it wins samosas from me. Never samosas subs भाई, subs को दे रहा हूं, तुम लोग सभी तो हो ना सब भाई. Black Lotus OP indeed. And by the way, Pragg is still thinking the game is not even close to over, chat. Yes, right now it's still going on. 22 जुलाई लिखा है मनिक ने. That's incorrect. Very close. 22 जुलाई गलत है. 17 जुलाई गलत है. 12 जुलाई Shresht. You are absolutely correct. So Shresht is the correct one, the first one to answer. So you are the one who wins samosas. Please DM me your UPI ID on Instagram भाई, और ट्विटर पे कर दो. अरे अब तो बहुत लेट हो गए, जब चिड़िया चुग गई खेत. चैट बहुत लेट हो गई. 11 जुलाई इज माय बर्थडे, तभी उन्होंने 11 जुलाई रखा सॉचकिंग भाई, ताकि आपका बर्थडे मना पाए वो. रिहाना को फोन करके पूछ लेता हूँ. रिहाना ने उनकी बहू का नाम की प्रोनाउंसिएशन ही गलत बोली भाई. 75 करोड़ लेने के बाद भी स्पेलिंग भी ढंग से याद नहीं करी है. बताओ क्या करें यार. By the way, Pragg now thinking the game is nowhere close to be over. Does Queen C8 win the pawn? So it's a terrible move, I feel, Queen C8. Let me show you how. If Queen C8 check, okay, I can play Queen F8. And now either you trade queens, in which case I'm simply a pawn up and winning, or you take the pawn, which is losing by force. Check. If king here, then it's mate. So you have to play king h2, and now queen h5 check, king g2, and rook a1 with the threat of queen h1 mate, and there is no defense. Rook d1, knight d1, queen d1, and that is the game. So unfortunately, you can't do that. आपके कोचिंग के प्राइसेस क्या है भाई? $500,000 an hour. $50 an hour. लो भाई, रैपोर्ट दिखाओ यार. इक्वल हो गई है भाई. रैपोर्ट को छोड़ो ना, हमें क्या करना है भाई. बाय द वे चैट, रैपोर्ट का क्या है भाई? रैपोर्ट. सो ये है करंट पोजीशन. रूक एंड गेम आ चुकी है. ब्लैक इज स्टिल स्लाइटली बेटर. एक पॉन अप है. आई थिंक रैपोर्ट विल पुश हियर. सो गोइंग बैक टू द गेम ऑफ प्रगनंदा आर. गुकेश गेम देखते हैं एक बार क्या चल रहा है. d4 played, but chat, the king is running to a5. Honestly speaking, I am not even sure if a draw is confirmed. कुछ भी हो सकता है यहाँ पे. Win, loss, draw, कुछ भी. So we don't know. So because king will run to a4, grab this, and the black pawn will run now. So going to the game of Pragg again. Let's see, chat, what happens. Pragg is now thinking. They have some time for some while, but let's see.
What's the source of income of these players? Sponsorships, prize money, and everything else. That's the source of income. विदित लगाओ यार. अबे यार कोई टेली वो है क्या, मतलब कोई मूवी चल रही है क्या? विदित लगाओ. आपकी सैलरी क्या है भाई? मेरी सैलरी है भाई 10 समोसे पर मंथ, जो मैं तुम्हें बांट देता हूँ यार. देखो मैं कितना कितना अच्छा बंदा हूँ, और तब भी तुम मुझे मुझे गाली देते हो यार जब प्लेयर हारते हो तो. व्हाट इज दैट साउंड? व्हाट साउंड? मेरे को तो कोई साउंड नहीं आया भाई. व्हाट साउंड? भाई सस्पेंस हो रहा है मुझे. कौन सी साउंड भाई? इंडियन रुपीज में भाई. भाई मैं कोचिंग, आई डोंट गिव कोचिंग भाई. दैट्स व्हाई आई सेड $500,000. आई थिंक Pragg looking back, YouTube coaching चाहिए तो बताना भाई. That I can do. Chess coaching is boring. Vidit is clearly better in time than youngsters. Yeah, I've seen this clearly that he's playing really well. He's playing really, 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 really well under time pressure. This was his biggest problem till last year, and now we can see the difference. वेलकम गौरव भाई, पहली बार आया तो भाई चैनल पे टिके रहो भाई. रोज स्ट्रीम करेंगे, बड़ा मजा आएगा यार. एक अजीब साउंड आ रही है, टुक टुक सी. क्या बात कर रही है भाई? कोई आवाज आ रही है क्या? लेट मी चेक ऑन द कैमरा. क्या आवाज आ रही है भाई? अभी नहीं आ रहे भाई. पहले क्या आ रही थी निंजन भाई? वो क्लॉक का साउंड आ रहा था. अच्छा क्लॉक का साउंड. अच्छा ठीक है, चलो हट गया भाई. चैट तुम खुश रहो भाई. Has Pragg played? Yes, he just played. Knight to f5. By the way, excellent move again. And chat, if knight takes f5, e takes f5, I think it's all about the king here. It's all about the king. White is a pawn down, but he thinks there's enough compensation with rook d7 incoming. So let's see what VD plays. VD काफी calmly सोचे, कुछ खाके भी आए हैं. Gukesh blundered. Yeah, he blundered. Epic tech, bro. We're spending his time with Anish has changed completely. Dude, I don't know how he solved this, but hats off to him and his team. Great. Like, he found some amazing moves on time pressure, man. Great. Nanjay bhai chatting कर रहे थे. Lols. नहीं, I don't think so. Maybe he was swiping on Tinder. नहीं भाई, नहीं ऐसा भी नहीं कर सकते एक्चुअली. वो शादी हो चुकी होंगी. वो ब्लू शर्ट वाले वेट लॉस. अबे ये क्या है भाई? गुकेश ब्लंडर्स. अब वो क्या ब्लंडर करेगा भाई? यार मैंने कहा था ना कि ड्रॉ भी गारंटीड नहीं है. आई टोल्ड यू नो चैट. एंड यहां पे मुझे पूरे अंदेशे लग रहे हैं कि हार ना जाए भाई. गुकेश भाई ऐसा मत करना यार, ये तो लोल हो जाएगा यार. हम जीते पड़े थे और हम हारने की कगार पे आ चुके हैं. ऐसा मत करना यार प्लीज. हम भी नॉर्मल इंसान है भाई. हम ऐसे सह नहीं पाएंगे यार ऐसे आसानी से. आज खाना क्या खाया? आज मैंने पोहा खाया यार 6 बजे. चैट बाय द वे, तुम लोगों में से कुछ लोग कंटेंट बनाओ यार भाई. मेक कंटेंट मैन. इस साल में इतने सारे इंडियन टूर्नामेंट्स है. बनो भाई, यूट्यूबर बनो भाई. क्यों नहीं बन रहे हो यार? तुम लोग बन सकते हो, तुम में है बात भाई. बनो यूट्यूबर भाई. माय बॉब वीडियो अगेन बैक ऑन गेम. हाउ ही कॉपिंग. ये अथर भाई काफी अच्छी आपने एक्सेंट निकाली है, फेक एक्सेंट. दाद देना पड़ेगा आपको उसके लिए. 2x4 स्कोर है इस टूर्नामेंट का भाई. 2x4 इज द स्कोर ऑफ दिस टूर्नामेंट. Okay, he's still thinking. Now they're taking a lot of time. They know कि थोड़ा सा relaxed है अब. It's not so urgent. Gukesh game. Yeah, this is the current position. I honestly don't like Gukesh's position now. I think it's at best a draw, at worst a loss. There's no way he wins this. There's absolutely zero situations where he wins this. Yeah. So yeah, hard luck to Gukesh, man. He should have converted this one. It should have been an easy win, honestly. If I do this game, I'll be really unhappy with me. So Gukesh ka to, of course. I need a bit of advice. Like, I'm back to after 8 years. Can you give any suggestions how to improve now? Where to get coaching, any source? I would say start with the YouTube videos. Just Google what you want. Chess for beginners, whatever it is. Learn from videos. Once you grasp and understand a certain creator, you can get their course also. Aage jaake. That is one way to learn. The best way to learn would be to, learn from a personal coach and one who lives nearby you. That will be the best way to learn, of course.
एनालाइज योर गेम्स, बाय द वे, डोंट फॉरगेट, एनालाइज योर गेम्स। डिप्रेशन तो क्या करे भाई, डांस करो। मैंने कहीं सर्वे देखा कि डांसिंग इज द बेस्ट वे टू फाइट डिप्रेशन। साहिल भाई को चैट पढ़ने वाले के सामने की एक्सेंट नहीं बताती। अरे भाई बस वही तो हम जानते हैं तुम लोगों को यार। मुझे व्लॉगर बनना है, कैसे बनो भाई? तो व्लॉग करो, रिकॉर्ड करो, कैमरा लो, अपनी शक्ल रिकॉर्ड करो भाई। ये हूं मैं ऋषभ, मैं अपने नाम में आर भी स्मॉल में लिखता हूं। करो भाई रिकॉर्ड। All the Indian players struggling in converting wins at time pressure. I think this game was pretty decent. I don't think Pragg was struggling at any point. He played good chess. Of course, he's not a computer. He will not find 100% accuracy moves every time. I think Gukesh is the only one who could not find good moves here. Pragg and Vidit have played spectacular chess. Exactly what I wanted. Yep, time equal hai. I think what VD wants, okay, is to exchange one more piece. Like the knights, the rooks. He wants only one piece on the board. Taki mating ideas no. Ideally, he wants to exchange rooks. Taki there are no mating ideas. Then he can think, okay, can I win this? Can I bring my king all the way slowly, and just win the game? जब तक rook board पे है, it's extremely difficult because his king is weak. Oh, that's nice, Epic Tech bhai. That's awesome. If you had done that, that's awesome. Mention the name of favorite car. I am not a car guy. I don't like cars. Zero interest in cars, by the way. I am at 1,000. What to do? Go below 1,000. वापस आ जाएगी आपको आपके पास एनर्जी। मेरे पास यूपीआई नहीं है, समोसा री गिव अवे कर दो, मैं कर दूंगा। ठीक है श्रेष्ठ भाई, I'll do it. श्रेष्ठ भाई भी काफी जनरस है यहाँ पे। और यूपीआई कैसे नहीं है भाई? ये तो होना चाहिए यार। मतलब इतनी बढ़िया टेक्नोलॉजी है भाई, होनी चाहिए यार आपके पास। बास रेटिंग आपको कैसे हराऊं भाई? सपने देखो भाई, सपने। आंखें बंद करो, सो जाओ, हरा सकते हो भाई, पॉसिबिलिटी है। By the way, looking at the Gukesh game, कुछ हुआ क्या? By the way, he took the pawn, but now yeah, king a5, and it's going to be a problem. Vishali game update. I think अब तक तो हार चुकी होगी वो, based on how the position was. Not yet, but I assume कि rook a4 and that should be over, yeah. Rook a4 should be extremely strong. There is some counterplay here, so maybe it's not over yet. But yeah, black should be winning this. Black should be winning this. She would probably end up losing this game. आपका फेवरेट यूट्यूबर कौन है? टॉप 3 यूट्यूबर होंगे भाई। आई थिंक टॉप 3 में आएंगे। एक टाइम पे लडविग हुआ करता था, आई हैव मूव्ड ऑन, सो आई थिंक प्रोबेबली nowadays I don't watch too many. I watch Mr. Beast videos of course, काफी नॉर्मल जो है, बट मैं आजकल करने में और देखने में कम हो गया आजकल थोड़ा सा। पहले मैं बहुत देखता था, आई यूज्ड टू वॉच लॉट ऑफ लेवी। समय समय तो भी है ही नहीं, तो क्या देखेंगे भाई। हाउस टूर भाई, कैमरा वायर से कनेक्टेड है भाई, ये कैमरा कहीं नहीं जाने वाला। एनएम कब बने? 2016 में। लास्ट टाइम आपको समय की सब बैटल में देखा था। अरे यार, ये समय की सब बैटल में इतना बदनाम हो चुका हूं मैं भाई, हार हार के भाई। भाई जीतते हुए देखा था, हारते हुए देखा था। इंस्टेड स्टडिंग फॉर 10th बोर्ड्स आई एम वाचिंग दिस मैच। भाई 10th बोर्ड्स में क्या करना है भाई? फेल जाओगे तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा भाई? इसके पास यूपीआई नहीं है, वो गिव अवे के लिए क्वालिफाई भी कैसे होगा? यूट्यूब भी बंद कर दे भाई। भाई यूपीआई तो होना चाहिए यार आज के जमाने में। सो गोइंग टू द गेम ऑफ या लेट्स सी। कैमरा फ्रोजन? क्या बात कर रहे हो यार? अरे मेरा कैमरा की फ्रोजन है भाई रंजन भाई। अच्छा स्टक हो गया क्या? रुको रुको। रंजन भाई एनएम साइल 2 के साथ आ गए। देखो भाई, इज माय कैमरा बैक? हाँ, इट्स बैक, इट्स बैक। बढ़िया। रुको रुको, मजे लूं क्या? एनएम साइल टिकुन रंजन भाई की शक्ल के साथ। सॉरी भाई। मस्त लग रहा था एनएम साइल टिकु, स्मार्ट लग रहे थे रंजन भाई फोटो में। वेरी इंटरेस्टिंग। आई एग्री, आई एग्री। लैपटॉप नहीं गया यार, ठीक है, आज चल रहा है। आज रिलेटिवली चल रहा है भाई, आज ही रिपेयर करा के लाया हूँ। होपफुली थोड़े टाइम तो चलेगा यार। या फिट ने 400 पॉइंट दे दिए। सो नाउ द रेटिंग स्टार्ट फ्रॉम 1400। आजकल
करने में और देखो ये क्या है भाई. यू लुक लाइक माई इंग्लिश टीचर सर श्याम. तुम क्या बात कर रहे हो यार. मेरा नाम श्याम भी है. छी. इससे बेटर तो यार तुम हैंडसम भाई निरंजन भाई. वेरी इंटरेस्टिंग भाई. इंडियन टैलेंट. मेरे भी 10th बोर्ड है. आई एम जस्ट चिलिंग. कब है भाई तुम्हारा बोर्ड. कब है भाई 10th का बोर्ड नेक्स्ट. बाय द वे व्हाई इज Vidit not moving now. I think what you don't want to do is fall under time pressure again 5 moves from now. Yeah. Easier title to get is probably NM, the one I have. कौन सा लैपटॉप है. डेल G3 है मेरे पास यार. मैं 3 साल पहले लिया था तो अब इसका थोड़ा सा ना कमजोर हो गया लैपटॉप 3 साल में. 3 साल की स्ट्रीमिंग के बाद. वाई फिट एट 400 रेटिंग. बिकॉज रेटिंग डिफ्लेशन की वजह से यार. श्याम करण. भाई ये कैसे नाम है. दो दो फर्स्ट नेम. ओ chat, the game is on. The game is on. And यहाँ पे जो मैंने कहा था, Vidit is trying to win the game. He might even think he's better. But there is a problem here. The problem is knight takes d4, e takes d4, and now e5. Sacrificing yet another pawn temporarily. Queen takes e4, rook takes d4, and now the rook and the queen are attacking. So it might still be equal, but now the pieces are close to the king. The rook would ideally love to be on f8 now, but there is no way to go back. You can take on b4, and rook e4 wins on the spot. Queen d5, king h2, and what do you do if you go rook 8, for example, rook e7, and it is mate. So, क्या विदित ने a5 मूव के बाद गेम दे दी है? It is possible VD is going to lose this game now, chat. What is Samay up to these days? I think he had a lot of shows going on no, recently. So I saw some stories. US भी होके आया वो and so on. बीच में एक बार बात हुई थी मेरी तो थोड़ा बहुत उसने बताया था बस. So let's see chat. Chat, it's not about the evaluation. It might be plus 0.2, plus 0.5, plus 0.8. It's more about the practicality now. As we saw, one bad move can lead to a losing position. For example, यहाँ पे अगर if you play 8x b4, it's not plus 1 now. It's losing. So basically, अब क्या हो गया? Because the rook and queen will be coming into the game, then one bad move is not going to be plus 1, it's going to be lost. So now it's going to be difficult for Vidit to handle this. But Pragg has to find this move though. He has to find this and then find e5. So he has to find all of this, which is, well, debatable. Let's see. But time है भाई, निकाल पाना चाहिए. समय के पास समय नहीं. शो गोकू. गोकू भी देखते हैं भाई. गोकू भाई का तो कुछ हो नहीं रहा भाई. नवारा जी बहुत पावर अप करके बैठे हैं एंड उनका नेक्स्ट फॉर्म आने वाला है एंड अनलेस गोकू भाई जल्दी से कुछ फ्यूजन कर ले, आई थिंक ये गेम कहीं हार ना जाए भाई. ड्रॉ होगा ऑफ कोर्स मोस्ट लाइकली, बट yeah, our king is kind of stuck on the wrong side of the board. Not it need to be somewhere here, maybe here or here, I don't know. कुछ कर नहीं रहा यहाँ पे. So going to the game of Vaishali for a second. Yeah, not much has changed. Still seems like black is close to winning this. So going back, कुछ है तो नहीं ना? Nice, doesn't seem like it. So going to the game of Pragg again. बाबू भैया ये किस लाइन में आ गए आप? Now only साहिल भाई can say VD with his jinx powers. अरे टिक्कू भाई अपनी इंस्टा आईडी बताओ यहाँ. भाई इंस्टा आईडी मेरी भाई है, आई थिंक इट इज चेस असिस्ट, आई थिंक नाम है. Samay earns much more money and popularity than streaming chess. भाई वो तो है ही भाई, बंदा हीरो है यार. And I think he deserves it 100%. If का आइडिया ये है कि यार we want to get rid of this pawn. Let's say वो मारता है, ठीक है. Rook takes a5. Now I have two connected pass pawns.
And now the rook can also go back to save any back rank issue. So there is no mating ideas anymore. So this would be exactly what VD wants, with some chances to even win this game. So देखते हैं प्राग क्या करते हैं. Will he find this knight d4? मेरी लेफ्ट आंख में दर्द हो रहा है यार, क्या चक्कर है. लगता है भाई स्ट्रीम करके आंखें बैठ जाएंगी मेरी एक दिन. चलो कल रेस्ट डे है भाई, कल रेस्ट डे है, कल नो स्ट्रीम. निरंजन भाई टुमारो नो स्ट्रीम. ये हाँ भाई, लेकिन दुख हो रहा है भाई, इतना इंटेंस गेम मिलेगा नहीं कल. वो तो है भाई, वो तो है भाई. आओ कोई टिक्का बुलाया क्या? बुलाया होगा, कभी ना कभी तो बुलाया होगा भाई. टाइम इज मनी एंड आई वेस्ट अ लॉट ऑफ मनी, कह रहे हैं लाल सिंह राजपूत. भाई राजपूत तो खतरनाक सरने हैं भाई. 22 मिनट बोथ प्लेयर्स नाउ. बुढ़े हो गए, आंखें वीक भाई यार. लैपटॉप 24/7 बैठता हूं मैं, मेरे काम ही ऐसे हैं भाई सारे. वी मिस यू इन एडवांस. क्योंकि बुरी नजर से देख रहे हैं. अबे ये क्या है? व्हेन पीपल कम यू फॉर मनी, भाई मेरे पास पैसे तो है ही नहीं, मैं क्या ही दूंगा भाई. समोसे देता हूँ मैं. बिफोर चेस तुम आप क्या करते थे? उससे पहले मैं चेस खेलता था भाई. एंड उससे पहले उससे पहले क्या करता था मैं इंजीनियर था भाई उससे पहले. डिड प्राग ब्रेक हिज स्ट्रीक? ऑफ कोर्स. निरंजन भाई की आवाज में ही ट्रिप ट्रिप झलक रही है. ट्रिप मतलब come on chat. Do you think Pragg will take this and find this? I don't know. It's not like super easy, but not that difficult either. Yeah, because your mind gets diverted towards this. You're like, oh, kya karu iska main? Sometimes you can miss this, but should be possible to find. कितने साल हुए सर आपको चेस खेलते हुए? भाई बहुत साल हो गए यार, बहुत साल हो गए भाई. रुको मुकेश गेम देखते हैं भाई, रुको मुकेश गेम देखते हैं भाई. किंग ए5 आ चुका है. C5 ऑन द बोर्ड, बिशप E7. सो आई थिंक चैट ये तो ड्रॉ होगा इसमें तो. I don't see anything happening. Now C6, pawn takes, bishop D6, bishop E7, king A4. Oh, sorry. Bishop C7 first. And then king H3, king A4, king H4 पे check, king G3, check, and maybe you will have this repetition and it will be a draw. So draw होगा बहुत जल्दी गुकेश का मैच. और अब हम देखेंगे Pragg against VD. Is it your full-time job? It is my full-time job. बिल्कुल full-time job since COVID started. He didn't make any mistake when he didn't have time, and now he made. Yeah, because he is a bit relaxed now. He's a bit relaxed. So this sometimes if you're relaxed mentally, you feel ki I'm over the worst. That's when you sometimes make a mistake. How many times has Vishy been #1 in live rating? Actually, that will not be too many times. You know why? Because there was no competition usually. So he was like continuously #1 for a long while. So number of times might not be that high. It will just be too long. If you can predict future moves, why don't you play contest? I did buy. It's not fun. You need huge sponsorships. Donate 5% of income every month to feed poor people. भाई मैं समोसा देता हूँ ना स्ट्रीम पे, तो दैट काइंड ऑफ कॉम्पनसेट्स. Oh, we have knight d4, e4, e5 incoming. Pragg is going for it, and this is going to be really sharp. Garrick or Kramnik competition. I think Kasparov is better, but Kramnik, of course, is just as strong.
बार ऊपर जा रहा है यार, बार इज कॉन्स्टेंटली गोइंग अप। स्टॉक मार्केट से कितना कमा लिया भाई, स्टॉक मार्केट में क्या स्टॉक में इन्वेस्ट करूंगा मैं यार, पैसा भी होना चाहिए इन्वेस्ट करने के लिए यार। उफ, आई थिंक ही विल फाइंड इट, लेट्स हैव अ लुक एट देयर फेस। आई थिंक जितना मुझे शक्ल दिख रही है प्रग की, ही प्रोबब्ली अंडरस्टैंड्स द मूव नाउ, ही सीन इट, एंड व्हाई वुड ही टेक अदरवाइज, इट डजंट मेक एनी सेंस। Kasparov, according to Mr. Watt, I do think Kasparov was overall a tiny bit better than Vishy Anand though, for sure. But इंडिया में वन की बात करेंगे तो विशी इज बेटर यार। मेरे जगह फेस रिवील हो चुका है भाई, बहुत पहले चैनल पे हो चुका है। तो इफ यू आर दैट इंटरेस्टेड तो आपको पीछे जाके देखना पड़ेगा। हायर डेप्थ नहीं, आई नेवर सेड दिस इज विनिंग फॉर प्रग। What I said was, because the rook has access to the last rank, the seventh rank, it becomes extremely difficult for VD to basically find every single move. Practically, one mistake will lead to an immediate loss. That is the problem now. It's not about the objective evaluation, but the practical evaluation. And he plays e5. If I was black here, I would be really stressed. I would be really, really stressed कि I have given up the game. Your face, if you tell your father 100 crore plus. ये देखो भाई, भाई तुम्हें लगता है कि मेरे पास 100 छोड़ो, मेरे पास 2 करोड़ भी होते तो तो मैं यहाँ बैठ के भाई स्ट्रीम कर रहा होता भाई, मैं बैठा होता मालदीव्स में भाई, दिशा पटानी के बगल वाले अपार्टमेंट में, साथ में पार्टी कर रहे थे सब लोग। इग्नोर माय मैसेज, कह रहे हैं गौरव जी भाई दोबारा लिखो, समोसा छोड़ो मेरे हाथ का, ये क्या है भाई? व्हाट डज बार रिप्रेजेंट? बार रिप्रेजेंट हाउ द इवैल्यूएशन ऑफ द पोजीशन, कि भाई जितना बार वाइट दिखा रहा है उतना वाइट बेटर है भाई। वीडी का पूरा प्रेशर, और बाय द वे चैट, दिस इज द ओनली मूव, अगर नहीं मारोगे तो वैसे भी हम ये मारने ही वाले हैं, so you have to take this, no other move here. Oh, VD now realizes, yeah, I think he realizes कि this is too risky. मालदीव नहीं जाना ब्रो, तो मालदीव नहीं तो लक्षद्वीप चलेंगे यार, हमें क्या है भाई, लक्षद्वीप चलेंगे। लक्षद्वीप चलते हैं यार। यार कितने की फ्लाइट होती है, आई एम काइंड ऑफ क्यूरियस नाउ, क्योंकि बीच में तो मैंने चेक किया था बहुत प्राइस बढ़ गए थे। कितने की प्राइस प्राइस होते हैं यार लक्षद्वीप की, किसी को पता है क्या चैट? एंड आई थिंक if I had to make a bet right now, Chad, I think Prague is winning this. It's extremely difficult now. Extremely difficult. राउंड ट्रिप कितने का है भाई, जरा देखें। दिल्ली से लक्षद्वीप भाई, नो फ्लाइट्स, व्हाट? लक्षद्वीप में क्या है भाई? भाई फ्लाइट्स नहीं दिखा रहा यार, आर देयर नो फ्लाइट्स लक्षद्वीप? After queen takes pawn, rook takes pawn, and chat basically rook d7 and rook d8 check are both incoming, and it's impossible to cover. Like it's possible, but it's difficult for black to handle this weak king now. If there was one more pawn, it would be awesome. Then you could play g6, king g7. Like if this pawn was here, for example, but it's not there. अरे लक्षद्वीप भी सर्च करो, लक्षद्वीप के एयरपोर्ट का नाम क्या है भाई? व्हाट्स द एयरपोर्ट? सेंटिनल आइलैंड्स, नहीं नहीं भाई, नो डायरेक्ट फ्लाइट्स। तो हाउ डू यू गो टू लक्षद्वीप? रेहान लक्षद्वीप बुक कर लिया है, सो हाउ डू दे गो टू लक्षद्वीप देन? अच्छा केरला से जाना पड़ता है क्या? अरे बाप रे, नो डायरेक्ट फ्लाइट। ये तो गल बात है यार, ये तो गल बात है, होनी चाहिए यार, फ्लाइट तो होनी चाहिए यार डायरेक्ट। नहीं, होनी तो चाहिए यार, देन इट्स डिफिकल्ट यार, इतना लंबा जर्नी नहीं कर सकते हम। स्कूबा डाइविंग जाओ भाई, मैं जाऊंगा तो ऋतिक रोशन और कटरीना कैफ के साथ यार, मोदी जी के साथ यार, आई डोंट नो, ट्रेन से जा देखो भाई। एनीवे चैट, गोइंग टू द लाइव पोजीशन, यू नो व्हाट, रात के 12 बजने लगते हैं ना, तो हम लोग ऐसे फिर ऐसी बातें स्टार्ट हो जाती है हमारी। फेरी है भाई, फेरी ही जाना होता तो मैं वहां जाता ना, कॉर्सिका, जहां पे दीपिका पादुकोण और रणबीर कपूर फेल इन लव, आई विल गो टू कॉर्सिका देन। वहां पे टूर्नामेंट भी होता है हर साल। निशा भाई, हैव यू गॉन टू कॉर्सिका टू प्ले? हाँ, पर एक टूर्नामेंट होता है हर साल वहां पे।
इंजीनियरिंग कहां से करी भाई? थापर यूनिवर्सिटी से। मछली की तरह तैर के जाओ, ये देखो भाई, ये हो गए हमारे हीरो। इनको लगता है कि भाई तैर के जाऊंगा तो यार नहीं यार, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। मछली की स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करनी यार। वी डोंट जेल टुगेदर। जॉइन एयरफोर्स। इमेजिन, बंदा पूरा का आर्क बंदे का भाई, करियर पूरा एयरफोर्स भाई, सिर्फ फ्री की फ्लाइट पकड़ने के लिए। भाई यू आर माय सीनियर इन थापर, क्या बात कर रहे हो? कौन से बैच के पास आउट हो भाई तुम? अब तक क्यों नहीं तुमने वो फैक्ट बोला भाई? अब क्यों बोल रहे हो? लपेट रहे हो तुम? बाय द वे चैट, वीडी लुक्स like he's slowly coming to terms with how strong this move is. ये पास पॉन शास पॉन का क्या करेंगे अगर किंग ही नहीं बचा तो? ब्रांच क्या था? ब्रांच सिविल था भाई। मैं ग्राफिक्स से काम अच्छा, वो ग्रीन स्क्रीन लगा के फर्स्ट टाइम चैनल पे एंजॉय कर रहा हूँ। अरे गौरव भाई, अभी तक को पता ही नहीं हम क्या क्या चीजें करते हैं चैनल पे, ये तो कुछ भी नहीं है। वैशाली इज पार्टिसिपेटिंग यार। शी इज लूजिंग अनफॉर्चुनेटली दो टू एविल नामी. She has a pass pawn, but black also has a pass pawn, so that is losing. She was winning at one point though. She spoiled it. 2016. Wait. Then you might know many people whom I know. अच्छा नहीं नहीं रुको. हाँ you wait. No way तुम 2016 से हो. No way. क्या बात कर रहे हो तुम? तो तुम मेरी एक्स गर्लफ्रेंड को भी जानते होगे भाई. चलो भाई, तुमसे कम बात करते हैं फिर हम लोग. भाई Gukesh messed up winning position. How do you not know me then, ललित भाई? क्या बात कर रहे हो तुम? यू मस्ट नो मी. नो भाई, मैं नॉक्स का पार्ट था भाई, डांस किया था भाई हमने स्टेज पे. भाई गजब बेइज्जती है भाई, कॉलेज वाले जानते नहीं है. 2016 पास आउट है बंदा. वेद को बोलो ये क्या है भाई, मंत्र क्या है भाई? By the way, 15 minutes now. 15 minutes now. So it's getting really, 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 down to the wire. अब फेस रिवील कब करोगे? ये क्या है भाई? Come on. Do you know Pragg will win? What's your opinion? I think he's winning this game. I am roughly 75% sure he's winning this game now. Practically बहुत difficult है defend करना है. Maybe there's some variation to defend, but I don't think he'll do it. Pragg is winning this game, I think. भाई भूख लग गई देखते देखते, समोसे खाने का मन कर रहा है भाई. तो यही तो जादू है ना यार. समोसे का बिजनेस मेरा, मैंने पूरे दुनिया का समोसा बिजनेस का टेक ओवर कर लिया है. एंड यहाँ पे मैं लोगों के मुंह में पानी डाल रहा हूँ ताकि तुम ऑर्डर करोगे तो मेरा बिजनेस चलेगा भाई. दैट्स द सीक्रेट बिजनेस. आई वाज पार्ट ऑफ क्रिकेट टीम भाई. क्रिकेट टीम कौन देखता है यार? डांस टीम देखते हैं भाई, डांस टीम. वीडी इज प्लेइंग भाई, यही खेल रहा है वीडी. बाय द वे ही प्लेड क्वीन टेक्स e5. वील हैव रूक टेक्स d4 ऑन द बोर्ड सून. वीडी इज इन प्रेशर रहते भाई, रियली अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर है. a5 मूव बहुत काटने को आएगी इनको. शिवम भाई कुछ सोचो भाई, क्या बोल रहे हो भाई? कॉस्मो क्या है भाई? व्हाट्स कॉस्मो? come on. Ganjay bhai, your prediction of this result now. What do you think? Does VD hold or win, or does Pragg win now? अभी इवैल्यूएशन बदल रहा है. Look into d4 के बाद Pragg has chances if he doesn't drop below 5 minutes. यार पॉपकॉर्न खाने का तो मन तो कर रहा है, तो है. वो ब्लूशा वाले भैया का 10K स्टेप्स खत्म नहीं हुआ क्या? I think नहीं, he definitely walks a lot. A5 mistake इसलिए है because basically the rook is offside. It's kind of on the corner, and now I basically am entering with the rook and you have no defense. That's the problem. Your king is too open for this. You should have had the rook somewhere here to defend your king. By the Gukesh game में क्या हुआ यार? Just to have a look. Have they drawn d6, bishop d8, and now c6 is the only move apparently, or he loses. Why did he not play c6 directly? I don't know. Chad, if he doesn't play c6, he's lost.
भाई मुझे छींक आ गई. That's not a good sign for Gukesh. C6 is the only move for Gukesh, by the way. I don't know what D6 was. Why not C6 directly? Gukesh कर क्या रहा है भाई? We'll come back. Oh wait, he finds C6. Thank God for this. He takes, bishop takes, king takes, and now bishop B8 is the only move. Only move. He will find it. Yeah, he finds it. ठीक है. So draw हो जाएगा game. Going to the game of Pragg. Now rook d4 played by Pragg, and the pressure is back on Vidit now. 13 minutes with no more time to be gained. So it's all up to Vidit. Can he somehow, defend this insane position? I think this is gone. I think this is just gone. I think it's almost impossible to defend this position. That's my understanding. Oh, as I said, this is almost impossible to defend. Vidit blunders immediately. Rook e4, and it's lost for Vidit Gujrathi. Can we have full screen? I think Pragg knows it. It's over. Vidit doesn't know it for sure though. Rook e4 seems like it's lost. It's +5 chat. Rook e4. The idea is to simply enter on the back rank and finish the game off. Queen d5 only move to pin the rook. King h2 getting aside, and this is where the f pawn saves the day because there is no more check. Black doesn't have the f pawn, and then there is simply rook e8 and some sort of mate, maybe queen c8, rook h4, whatever. Multiple checks possible based on how he plays it. Pragg holding the head with his hand. He knows it. He knows he's winning now, I think. He has seen it. Vidit will realize, chat, in my experience, when you make a blunder, you usually realize it immediately afterwards. You realize it within seconds after playing the move, sometimes even while the piece is in your hands. So I think it is gone and dusted. Rook e4, and I think Vidit is going to lose to Pragg here. I told you, man. I told you practically this is impossible to defend. I told you it's impossible. My judgment is correct regarding this position, bhai. Who are you rooting for in candidates, man? It's hard to say, man. I just want an Indian player to win. As simple as that. 47% people saying Pragg wins. 28% with it. 26% draw. Chat stream like karo. Let's go to 500 likes if you're here for the first time. Do subscribe to the channel. Kal stress day. परसों फिर आएंगे and it's going to be crazy. अभी तो बहुत मैचेस बाकी हैं. विदित पानी पी रहा है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने देख ली है वो मूव. कहीं ना कहीं उन्होंने देख लिया है. वो अपना डर छुपाने के लिए पानी पी रहे हैं, फिर उनको दिख गया है रुक e4. अब मुझे लग रहा है he's seen it. Pragg is fully focused. I think he understands the move now. Defense है ही नहीं chat. There's no defense now. So rook e4. Let's have a look. ठीक है, rook e4. So you have to move the queen first. First of all, let's say you move it to random square c5. Okay. Now it is check, king h7, rook h4 mate. So that's not possible. Going back. Now let's say you move it to f6 now. Okay. Now queen c8 check, king f7, rook f4 wins. So king h7, but rook h4 anyway. Queen se mara to jeet gaye. King g6 pe aayega, queen e8 check, queen f7, rook g4. Again losing the queen. That doesn't work. So और कहाँ चले queen भाई? So the only move remaining is queen d5 to pin the rook, but I unpin my rook. And now I'm threatening the same ideas, queen c8 check, followed by rook f4 or rook h4. And there is no defense. What do you do? Let's say you play queen d8 to save the check, but queen e6 check now. King h8, there is rook h4, and you have to sack the queen. And king f8, there's rook f4 mate. So it's over, chat. It's just completely over. There is no defense after rook to e4, and with it loses. Queen g3 कैसे जाओगे भाई? Do you mean queen c3? No, it's mate in 2. Rook queen check, king f8, rook f8, and it's over. In fact, queen e8 directly mating. Yeah, it's over. Pragg is trying to act. No, he's not acting. He knows. And Vidit gets up from the board. I think he saw the move. And he didn't want Pragg to know. Like, if Pragg doesn't know, he doesn't want to give Pragg a hint. So immediately उठ गया Vidit. He's not staying at the board, and my guess is he will not come back at the board until Pragg has moved.
He would not like to give Pragg a hint. I know. I think he's understood he's losing. Yep, 4 draws, and finally Vidit is going to lose this one. Gukesh slightly worse. Why did Gukesh do all of this? I really don't know. If he really thinks he can win this, there's absolutely zero chance. I mean, bishop c7, I can just play king a5. There's nothing to do. Black is winning this. So Gukesh ने फालतू में ऐसे वो यहाँ पे complicate कर दिया है. King g3 पे क्या होगा chat? g5. How is Gukesh drawing this, by the way? I don't even know how is he drawing this. यार ये गुकेश ने किया क्या? I really don't know what did he do. Maybe there is some variation. I don't see it. What is the draw here? d7. I mean c5. Can I play c5 already? Bishop d6. Bishop d6, c4, bishop e7, I guess. c3. And just in time. So maybe going back, not c5 then. Maybe just king b5. Maybe just king b5 then. Bishop d6. Bishop d8. वाह, ये तो मुझे लग रहा है लॉस्ट ही ना हो चैट. बाप रे. I can't take. How do I win this? King d4, king d7, king 4. Is this a draw, chat? We don't know. I think this might just be lost. It's actually lost. Wow. g4. Or is it not? So maybe it's not. It's not clear because g4 takes king d5, bishop d6, and you stop the pawn. Bishop d6, g2, bishop. यार ये इतना कॉम्प्लिकेट क्यों किया भाई मैटर? मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है. वाइल्ड ही मेरे से जो कॉम्प्लिकेट डिसीजन. c6 सिंपल ड्रॉ था आई थिंक. Anyways, we'll have to see क्या होता है. Yeah, so that will be. And chat, look at this. Pragg plays the move. Rook to e4. Exclamation mark. He is winning. Vidit is still not at the board. I think Pragg is going to win this game within the next 10 minutes. There is no way he blunders now. Vidit is busted, unfortunately. Yeah, difficult position. a5 was a big mistake. Bapre. Both sides with queen is the drawing line. Yeah, we'll see that. I think वो draw होना चाहिए most likely. Oof, man, this is crazy. Gukesh lost. What? Is this losing? g5. Not sure if it's losing yet, but complicated है बहुत chat. This is very complicated. इसमें कोई crazy variation होगी. इसमें देखा वो last में bishop आ रहा है. But yeah, मतलब if he plays king f3, then maybe there is some chance to go wrong. ये बाद में आएंगे भाई. This is very very complicated. Let's go to this game. Because this is based mostly on calculation, man. पूरा deep एक variation होगी कोई which they have to find. This is more based on strategy, so it's simple to comprehend. By the way, chat, मेरा camera गया. Changing the battery. Vidit by now realizing he's not going to survive this, unfortunately. Lot of threats, and there's no counter to most of them. Yeah, he's realizing, and Pragg gets the glass. He knows he's winning. Man, it's hard to handle a loss, man. It's really hard. Especially when you defend so well and 41st move for blunder, yeah? That is even harder to handle. Wow. Camera switching on by soon. And it should be on right about now. I think it should be on now. Phew. This is not looking good for VD, man. Vidit bhai ro raha hai. I don't think he's crying, but yeah. Morning to ho gayi. Coffee le lo bhai. Leta bhai morning coffee.
Drink a sip and say cheers, I won. Is the king to even have not fun? Yeah, I think the king is too exposed. It's not about ये pawn push करने का time ही नहीं मिलेगा. Regardless of where you move, couple of checks and it's just gone. You will lose the queen for the rook basically, I think, in most variation. So there is no defense, chat. साक्षी, ये अब रैंडम लड़कियों के नाम मत लो यार प्लीज. रुक 8 कुछ हो नहीं सकता. नहीं भाई, पहले तो रानी टैग देना. पहले तो सब कुछ करो. What will you do about this? That's the first question. Why are you so biased towards Vidit? मतलब उसकी तारीफ में कि उसकी बेइज्जती में? किस में biased भाई? I think he just lies by now. It's over. Niranjan bhai, I think he knows, right? I think he knows now. There's no scope. Full screen रखते हैं थोड़ी देर. हाँ भाई, fully. Do you think like what do you think he'll play here? Will he play Queen D5, the movie saw? No idea. Chess is hard, man. You can fight for hours and hours and hours and hours and hours and hours. That's not the name, bhai. And even if there was any, there's no way you'll figure it out. Draw agree कर लो, दोनों का फायदा. भाई ऐसे नहीं होता भाई. Pragg wants to win this. He wants to take home the full point. Why would he draw this game? He's completely winning. What if he takes the rook? But then you lose the queen. No, you lose the queen. I mean, this should be an elementary win. I mean, I will give a check, pick up both these pawns. Then this pawn will be weak. You'll have to run back with the rook. Yeah, it's just over, I think. Gukesh losing. Oh, Vidit's about to play. We'll go to his game. Let's see what he plays first. If rook g3, then pawn g3, my friends. I think he'll play queen d5. That's the only move. Yep, queen d5 played. And now I think king h2 is the only move. It's the only move for Pragg, but I'm pretty sure he has seen it. It's not a difficult move at all, actually. मुझे rook move करना है, pinned है, तो king हट दो. Like, it's not a difficult move, actually. Pretty simple. I think probably king h2 immediately. He will not even think for long. Within like 1 minute, he will play this. By the way, update on the other two games. Vaishali game, by the way. Oh, wow. Vaishali, apparently Erwin Lavi made a blunder and Vaishali is back in the game. She might just hold this to a draw. That's good news for Vaishali there. And in terms of Gukesh, what's happening? So king f3, g5, d7, and king b5. So is he losing this? So what happens on bishop b5 here? Threatening bishop 6 d8. Oh, bishop d8. Niranjan bhai, has Gukesh lost this game? Wow. Man, why did he not play c6 here? I don't get. Why not c6 here? I don't get it. Why not c6? What was the problem here? I don't get it. You have to stop this pawn, right? There is no way you can't stop this pawn because if you, I mean, I will queen otherwise. So you have to play bishop d6. I take on a7, you take here. How this is not take here. Bishop c7 first and then take here. This is a draw. And this is the problem we saw. मैंने आंखें बंद है भाई. मैं आंखों को रेस्ट दे रहा था. निंजा भाई आपने मेरी शक्ल लगा दी क्या होना पे भाई? भाई ये क्या है भाई? Anyways, so भाई basically मुझे जो लग रहा है ना कि Gukesh does suffer from this when he's completely winning. He will at some point start blunder and then he will try to find a winning variation when it doesn't exist. This is what we saw in the Olympiad as well. That is sad, man, because yeah, he was completely winning and now he's probably even lost. So that's hard luck for Gukesh. And Arjun, of course, will take. Oh, king h2 played by Pragg. I think let's go to Pragg's game now. Gukesh is probably not going to hold this.
Let's go to Prague's game and see what happens. So king h2 played, and VD now coming to terms with the position. I think it should be done. But Pragg के लिए it's good news, yeah. मतलब Pragg wins. So he had a tough tournament, 2 rounds. He wins. So good news for Pragg at least. Rapport तो यही हुआ था. Rapport तो खतरनाक खिलाड़ी है. And chat now thread, by the way, is queen c8 check. If king h7, then rook h4. And if king f7, then rook f4. And there is no defense. The queen will get checkmated. The best is to give the queen for the rook, and the queen will chop off all these pawns one by one, and it will be lost. I think he will now resign soon. He will resign soon. I think he will resign maybe even on this move. I don't know if he resigns immediately, but at some point. Rook 8. It feels logical, but then there is rook e7, threatening mate in 1. There is no way to save the g7 pawn. So g5 has to be played. But now comes queen h5. Oh, ruko, sorry. Suddenly black is winning. Sorry, queen h3. And this is mate threatened, and there is no defense again. So, yeah, it's just done. Queen f7 doesn't solve the issue. Queen c8 check again. If king h7 check, if queen f8, then there is rook e8, and that traps the queen. Every day a heartbreak. Bhai, Pragg to nahi hai kam se kam. But yeah, I mean, VD, he will realize it now, yeah? He will now realize what he has done. A5 was the move, man. Pura 40 move defend kiya aur ek move mein game de diya. Chess is hard. Chess is hard. लोविश कौन है? लविश वही तो नहीं है जो मैं सोच रहा हूँ. आई न्यू सम लविश, बट उसको तो मैंने ही सिखाया था भाई. गुकेश का बैड परफॉर्मेंस था. चालू है उसकी बुकी नेम. ये क्या है भाई? Rook a5. How does that change anything? Check. Anyways, rook a5 check. King h7 check. King g6 check. King f6 check. आगे queen f5 पे रुक कूद के नहीं आ सकता ना यार. दैट्स तो वैसे जंप करके नहीं आ सकता. दैट्स द प्रॉब्लम. How is VD losing with 2 extra pawns? The king is weak. The king is weak, and अब 4 minute है VD के पास. And this time there is no more time to be gained. So he will lose on the clock and he will lose on the position, unfortunately. Chat, एक काम करो यार. I have एक जल्दी से यार, जल्दी से प्लीज 500 लाइक कर दो यार. जल्दी से लाइक करो. 550 लाइक्स कर दो जल्दी से भाई. ग्रीडी वीडी. लेट्स हैव अ लुक एट गुकेश गेम बाय द वे. कुछ हुआ क्या? कुछ ट्रैप लगाया गुकेश ने? या इज इट डन? या कुछ किया नहीं है गुकेश ने. उसके पास 5 ही मिनट है भाई. गुकेश के पास 5 ही मिनट है. सो दे डोंट हैव मच टाइम आल्सो टू थिंक. By the child, Vincent Keymer and Thai Dai Van have drawn. Nodirbek has won against Bartel, and now VD against Pragg. Pragg is going to win. होम टूर कब दे रहे हो भाई? होम टूर में कुछ है ही नहीं यार. क्या होम है भाई? मार्स में बैठा हूं मैं. एक कमरा है बाहर मार्स की, वो इलॉन मस्क बैठा हुआ है कमरे में भाई. बस यही हम दोनों है. बस चिल करते हैं भाई. रोज चेस खेलते हैं. क्वीन f5. भाई ये फ्री की क्वीन क्यों दे रहे हो मुझे यार? Yeah, VD is biting his hand now, but it's just done. Can we have full screen for a second, Ranjan bhai? Let's just have a look at a VD. Let's have a look at VD here. Looking at the clock there, 2 minutes now, chat. 2 minutes, 45 seconds. It should be over. It should be over. It's difficult, man. Chess is harsh, right? Chess is really hard. What is NM in front of him? It's National Master. It's a title here. Queen d8. Again, Queen d8 पे same. Queen e6 check. King h8, Rook h4 wins. King f8, Rook f4 wins. So there's no way to save this. Commentators curse. नहीं यार, ऐसा कोई curse नहीं है भाई.
Were you able to mate Elon? हाँ भाई 4 में mate कर दिया मैं, scholars mate. King h7 कह रहे हैं, but King h7 से problem solve नहीं हो रही यार. Rook e7 now maybe, and I'm again threatening this mate, and there is no way to save this. That's the issue, my friend. Look at David Navara. We saw that game, yaar. Really sad. Bishop e5 and only move bishop d8, and Navara is now winning. And honestly, Gukesh only has himself to blame. I don't even know why would you play d6 here. I mean, you want to win. You saw one variation where you're winning, but it makes no sense. I mean, you've already spoiled the game. Play c6 and take the draw. It's very hard to even justify this. It's very hard to justify this. One minute for VD now, chat. 1 minute for VD. It's all falling apart, unfortunately. Yeah, he's trying to find a defense. He can't find one because there is none. Vidit Gujrathi is going to go down against Pragg, and Pragg will go to, I think, 2.5 points now, if I'm not mistaken. Yep. He'll go to 2.5, and VD will stay on 2. And this will help Pragg going into the match at the candidates, jahan pe they will again face each other with the same colors and opposite colors as well. Rook a1 doesn't change anything because rook a1, again queen c8 check. Wait. नहीं, वही मैं डर गया, मैंने कहा ये क्या है भाई? Here and check. King e6 check. King f6 check. Again, the queen has to come in. And what else? What else? King f7 here. Again, queen e8. Yeah, this should be done. Yeah, it should be done. So there's no defense, chat. 16 seconds for VD now. 13, 12, 11, 10, 9. Will he lose on time? Will he lose on time? He plays rook k2 with just 5 seconds on the clock, but it's not enough. Queen c8 check is winning on the spot for Pragg. And if I can find it, Pragg will 100% find it. Unfortunately, there is no defense. There is absolutely no defense. So chat, queen c8 check. Black has two options, king f7, king h7. If there is king f7, then there is queen e8 check, king f6, queen e6 check, king f5, and rook f4 check, king e6, king g6, rook g4 check, and queen takes g7. That should be mate. एक complicated लग रहा है, but बहुत simple है. अगर यहाँ check, king h7, rook h4 check, king g6, queen e8 check, king f5, rook f4 check, king g5, queen e7. ये the thing is, it just requires check, 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 and it's over. Khatam. King g6, rook g4, king here, rook g7, king h5. Mate. So that is the variation. Pragg will now sit down for a couple of minutes, calculate till the end of the game, till the mate on the board, and only then will he play. There is no way he's moving any pieces until he calculates mate here. Yep. Yeah, it's coming. I told you. Can it happen at Toronto or at Spain? I really hope it's Spain. Poll karna hi nahi hai. I'm really hoping it's Spain. I'm really hoping it's Spain. And yeah, queen c8 on the board. Only move, but very easy to find for somebody like Pragg. And VD knows it's over. I think he might even play for a couple of moves. He has no time on the clock actually. 20 seconds he has, so he has nothing to do here. Queen c8 check, and it's over, chat. Hard luck to VD, man. Really hard luck to VD. He defended really well, but 41st move पे गलती हो गई. 5 second, 4, 5 second, king h7. Oof, oof, oof. पता नहीं stocks. Okay, so 2600 ने पेल. अरे यार, that is hard luck, man. Yeah, he's also going to lose. King c5, king d3, king d5. Wow. Gukesh तो खुद पैर पे कुल्हाड़ी मारा यार. That was like unimaginable. Okay, king h7, rook h4 check, king g6. I think now queen e8 check should be winning. Yep, queen e8 check. Pragg ने पूरा एंटर देखा चैट. Just look at जो लोग पूछते हैं ना कि how deep do grandmasters calculate? Pragg has seen till the end of the game. ठीक है? From that move all the way back to when he played that move e5, he had seen till the end of the game. चाहे वो 15-20 move हो या 10 move हो, whatever it is. So that's how deep they go.
Queen f7 wouldn't work. Queen f7, there is rook g4 check. If the king moves, I'll take the queen. So king f6 and then rook f4 check, and I pick up the queen. So queen f7 check, king here check, and I pick up the queen. Vidi, is he crying? Can we have full screen? His face is turning red, I think, unfortunately. I think his face is turning red, if I'm not mistaken. So, lag raha hai na, Ranjan bhai, is his face red? Yeah, it's sad, man. Oh, man. It's actually hard to, hai na? His face is turning red a little bit. King g5, man. When your king is on g5, yeah, things are not going well, unfortunately. Queen e7 check now, and it's going to be it's mate in 5, chat. It's mate in 5 here. Yeah, he's almost crying there. Really hard to watch. He defended really well, man. Like, it was so good. He blundered when he actually had time on the clock. Jab time nahi tha, then he played perfect chess. Yeah, Pragg is not going to miss this, man. There's no way he misses this. Queen g5 check, and I think we'll have a shake of hands now. Yeah, we're going to shake. There'll be handshake. Now I think there's no way Vidit thinks he can hold this. It's over. King g6, rook g4. And it's mate. And king f5, I mean, rook f4 should work out. So it's over. Yeah, rook f4, king g6, and rook g4 check. And it's over. He's not crying. He's sad. Yeah, he's sad. He's really sad. His face is a bit red, I think. Yep, check played, king g6. And now he will resign 100%. He's not going to watch mate. Rook g4 check, and he'll resign, Chad. He'll resign now. Yep, he'll resign now. Time to shake hands. Yep, unfortunate for VD there. He played really well till the 40th move. One move costed him the game. A5. Yeah, wahi Pragg bol raha hai. A5. Yep. They're having a discussion there. A serious discussion, actually, yeah? Intense discussion, I must say. He can't believe it. Yeah, he's shaking his head. He can't believe it. Arbiter पर से कह रहा है भाई पीस लगाओ यार. That is even. I wish we had audio for the cameras also, right, Ranjan bhai? It would have been awesome if we had the audio also. But unfortunately, no. Sometimes we do have it, like sometimes exception cases में. हाँ भाई इसका ऑडियो नहीं है. So Pragg has won, chat. Pragg has won the game, and Vidit unfortunately loses. And they're having a debate here. Very long debate, yeah, extremely long debate. Post-game analysis. Frustrated more than sad, probably both. He played fantastic chess, but yeah. And anybody asking, why not every commentator or everybody doesn't play serious chess? This is why. Losses are hard, man. There's nobody else to blame. That is the problem. It's your fault. Like in cricket, in football, you can blame many things. Cricket में pitch को तक blame कर सकते हो आप. But in chess, it's always you. 100% you. And that's why it's difficult to handle. Hard luck to Vidi there. Yeah, man, this is hard. Still discussing. Maybe what we can do is we can have the board with the camera, and then I can go to Gukesh's game and we can keep the VD's camera on, and we can kind of do it that way. Niranjan bhai, let's go to Gukesh's game and see what's happening there. Is there any hope? I don't think so, but it's worth checking out. Bishop c3, king e6. The pawn is also gone. f3, king d7. 2 pawns down should be an easy victory for black, actually. King c4, just bishop e7, and there's no approach. And let's have the board with the
कैमरा भाई, like मतलब पूरा with me as well. Yeah, VD can't believe it. Yeah, still analyzing. And this is the Gukesh game chat. Gukesh is also going to lose this. And yeah, matlab, I see VD Pragg, somebody is going to win, so it's always going to be a heartbreak either way. But Gukesh ka yaar, it's even more heartbreaking because he was completely winning, man. This was the moment here when it is +3, clear pawn up, some weaknesses to attack, no issues whatsoever. One mistake, two mistake, and the game was equal. And then finally another mistake here, this one, d6, and now it was lost. So Gukesh, I think, will have only himself to blame here. He will definitely work back from here, and of course VD as well. सेकंड के साथ ट्रैवल करना, you can't afford to lose, बहुत expensive है chess. Why? It's expensive for everybody actually. Everybody has a second. Everybody there must be traveling with a second for sure. VD can't believe it unfortunately, but yeah, it's just hard luck, man, hard luck. Oh भाई, बहुत serious कुछ discussion चल रहा है निरंजन भाई. VD looks a bit angry, doesn't he? है ना? It's like मतलब Yes. when you lose and you can't believe it, like it's more like okay, ये खेलता तो क्या करते, तुम नहीं कर पाते कुछ, like ऐसी मुझे फीलिंग आ रही है. वैसे ही चल रहा है क्या? है ना वैसे ही चल रहा है ना? Yeah, that's usually difficult for either side actually. Even if you win, then you feel कि यार हार्ड लक. यहाँ से ऊपर से गुकेश अलग हार रहा है. सेकंड मतलब players who help these players to play, like I really wish we had the cameras, audio man. इसमें बहुत वो दिल टूटा है आशिक कह रहे वंश जी. Still not getting up, man. Still not getting up, both players. Yeah, G4 now from David Navara, and the bishop has too many jobs to do, unfortunately. Yeah, just G4, and if you take, the pawn will run away. So Pragg gains some rating, VD loses some. I think Pragg with this goes to 2744 and VD goes to 2739. So they basically exchanged ratings. Gukesh will also lose, so he will go to 2745. And Arjun is the only one now at 2750. So, Vishy Anand again, India number 1. Unless Arjun wins tomorrow, then he crosses Vishy. So, yeah. Yeah, now King F5 should be winning. King D5 should be winning. D5 winning, है ना? हाँ भाई winning ही है. Vidit कह क्या रहा है ऐसे कैसे? नहीं, I think it's like, I don't know, they're not even talking too much actually. They're sitting there. इतना लंबा डिस्कशन नहीं. Sometimes you are curious as a player. You want to know like how could have gone better. And this helps both players to improve actually. You learn something from what was the other player's perspective actually. That's very important. Yeah, King D5 played. Now Bishop D6, C4 check. Tomorrow's game, Skull rest day at chat. Tomorrow is a rest day. And David Navara has also won. Gukesh resigns. Can we have Gukesh's camera for a second just to see? And then we come back to VD for a second before we end the stream. So Gukesh also loses. Round 6 में chat pairings होंगी. Vidit against Keymer, Gukesh against Bartel, and Nodirbek against Pragg. So काफी interesting pairings तो है. And Gukesh also can't believe it, man. Yep, even he can't believe it. He was completely winning. Yep, nothing to do. Navara taking home the full point. Gukesh not showing any expressions though, adjusting the pieces as professional as possible. Yeah. Let's put the VD camera for a second, Ranjan bhai. And then we can end the stream after 2 minutes. लड़ाई चल रहा है, लड़ाई नहीं है, लड़ाई नहीं. Yeah, they're gone. Yeah, they're gone.
चलेगा क्या रंजन भाई? चलेगा. ठीक हाँ है, we भाई, can खाना have खाना है ना, इसीलिए हाँ, चले। let's have the board now. So chat with this a very weird ending to the day, honestly. मतलब Gukesh was winning. I was expecting him to win. He lost. And of course, VD Pragg में एक को तो हारना ही था. So that was kind of going to happen. Vidit was, yeah, he felt like he was a bit angry. It's mostly anger at yourself, man. It kind of looks that way कि वो opponent पे निकल रहा है, but usually you're angry at yourself. I mean, what can the opponent do? He has to play chess. So, yeah, hard luck to VD. I'm sure he'll come back. He played spectacular chess in the time pressure, phase. गलती तब हुई जब actually वो रिलीज हुआ. So he kind of lost his, sense of fear. And जहां पे Prague just kind of played perfect chess उसके बाद. So yeah, man, there's nothing we can do. Hard luck to VD there. Prague wins. He goes to 2.5. Joins Gukesh at 2.5. And Nodirbek, by the way, at 4 points out of 5. So he is just cruising through. Yeah, क्या ही आदमी है भाई Nodirbek. So with this chat, standings में number 1 पे Nodirbek है. I think अभी कोई गेम चल रही है शायद. Yeah, Maghsoodloo and Rapport are still playing. Joe, I think it's going to be a draw. So number 1 पे Nodirbek at 4. Let's assume they draw. Maghsoodloo at 3.5. Rapport at 3. Navara, Gukesh, Pragg at 2.5. Keymer, Nguyen, Vidit at 2 and Bartel at 1. So Indians का आज का दिन काफी अच्छा नहीं था. सिर्फ Pragg के लिए अच्छा गया. बाकी सब के लिए it was not the best. And day after tomorrow we'll be back chat. रंजन भाई और मैं दोनों आएंगे. We'll also have GM Sahaj Grover with us on that day. So मिलते हैं परसों chat. Thank you for joining and do like the stream before you leave. And we'll see you, well, परसों. Bye chat. Have a good weekend. Have a good Sunday. Take care. Good night.